हेलो, वेलकम बैक टू अनदर न्यू स्ट्रीम। व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? यो भवानी भाई, गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम टू द स्ट्रीम। भवानी भाई, दिन में नहीं आए थे यार आप? क्या सीन भवानी भाई? आज दिन में आप कहीं नहीं थे भवानी भाई? रेड डे खेल रहे थे क्या? फर्स्ट लाइक मेरा है। ये कौन सा गेम है? ये पोकेमॉन गो ही है यार। बस अपन मस्त खेल करेंगे, बैटल्स देखेंगे, हीरो प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे। हेलो अल्ट्रा भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। व्हाट्सअप? देखने दो, स्टार्ट हुआ है क्या? 7 मिनट्स है गाइस अभी। 7 मिनट्स में स्टार्ट होने वाला है चैंपियनशिप। यार मेरे को साउंड एक बार कंफर्म करना ना गाइस। अभी जैसे ये साउंड कम है या क्या ज़्यादा है, थोड़ा कंफर्म करोगे अल्ट्रा भाई? चलो, मैंने डेस्कटॉप ऑडियो दिया है, बताना ज़रा कि बैकग्राउंड आ रही है क्या? तो मेरा वॉइस कुछ ज़्यादा है क्या? नहीं, अभी ठीक है, राइट? ठीक है। ऑडियो एक बार कंफर्म करना यार गाइस, किसकी ऑडियो ज़्यादा तो नहीं आ रही? कम है क्या? सीन है? प्लीज़ कंफर्म द ऑडियो चैट। यार लास्ट सीजन कौन जीता था? हु वन वैंकूवर रीजनल चैंपियनशिप लास्ट सीजन? पोकेमॉन गो डालने दो भाई। पोकेमॉन कौन जीता था? एडी गुआन फ्रॉम कनाडा। विच टीम ही यूज लास्ट ईयर, जो हुआ था लास्ट ईयर? वीसी चलोगे क्या? वीसी आ जाओ, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर रहे हो तो आ जाओ वीसी, उसमें क्या है? वीसी आ रहे हो तो आ जाओ। डिस्कॉर्ड ओपन कर। एडी व्हाट? अलोला नाइनटेल्स भाई, ये तो अब सीन ही में नहीं है भाई। एक साल में तो मेटा क्या से क्या हो गया है भाई। A9 स्वॉम्पर्ट कहीं नहीं भाई, आउल कहीं नहीं, ट्रेव कहीं नहीं, जीफिस भी कहीं नहीं, लैंटर्न ही ये जो टिका हुआ है भाई एक साल से। एक साल से लैंटर्न ही टिका हुआ है भाई। ओ भाई, रेजी तो अभी भी है। आउल, मेडी, A9 स्टेबल आई। ओ भाई, रैंक 3 पे एसू, अम्ब्री, मेडी। यार कुछ न्यू मेटा आने वाला है क्या गाइस? क्या लगता है? वीसी आ रहे हो तो बताना अल्ट्रा भाई, ठीक है? रूम 1 ज्वाइन कर लेना, ठीक है? मैं हूँ। रूम 1 आओ तो बताना अल्ट्रा भाई, ठीक है? आने वाले तो बताना, मैं आपको ड्रैग कर दूंगा, ठीक है? यार इधर ऑडियो कैसे ऑफ करते हैं बे?
ऑडियो ऑन है इधर, यहाँ है, टेलीफोन हो जाता हूँ। चलो, हेलो टीन, वेलकम टू द स्ट्रीम। वीसी अल्ट्रा भी आ रहे हो क्या? वीसी आपकी मर्जी, आ रहे हो तो बताओ, मैं आपको ड्रैग कर लूंगा, ऐड कर दूंगा, और क्या। बस ये ध्यान देना पीछे म्यूजिक व्यूजिक ना चल रहा हो यार। यार इसकी साउंड आ रही है क्या गाइस? 3 मिनट 50 सेकंड से अभी, आज मस्त बैटल देखेंगे यार, ठीक है, चिल करेंगे, चिल माड़ी। यो संस्कार भाई, हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम। बड़े लोग क्या, कहाँ बड़े लोग यार, छोटे लोग हैं यार। संस्कार भाई, गाइस आर यू गाइस लाइक प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन इंडिया रीजनल्स? इंडिया रीजनल्स का अनाउंसमेंट हो जाएगा गाइस आज या कल में, हुआ है क्या टीन भाई? डिड दे अपडेट अगेन? लिंक वगैरह काम कर रही है क्या टीन ब्रो? क्योंकि ट्विटर पे आई डोंट थिंक कोई अपडेट आया है। फोर्थ में आइडन मर्फी फ्रॉम कनाडा, कनाडा से ज़्यादा है वे। ओ भाई, टॉप 4 में 3 प्लेयर्स तो कनाडा से ही हैं पे, एक यूएस से है भाई। इनका तो नाम भी नहीं सुना भाई मैं, लोकल प्लेयर से वहाँ। हाँ, जो एवरीवन इज स्लीपिंग इन माय, ज्वाइन कैसे करते हैं? ज्वाइन कैसे करते हैं? आपको ड्रैग कर लेंगे और क्या। क्या नाम है अल्ट्रा भाई? क्या नाम है आपका यहाँ पे? व्हाट इज योर नेम? यहाँ पे आपका नाम क्या है? अल्ट्रा ही विवेक है ना? अल्ट्रा विवेक भाई, आओगे तो आपको चैनल दिख जाएगा, आप आ जाओगे। आपको दिख जाएगा, आना चाहते हो तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार। इसका साउंड बताना यार, लाइक बैकग्राउंड ये साउंड आ रहा है क्या? आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कंफर्म करोगे चैट? कैन यू प्लीज कंफर्म whether you guys are able to listen to the music also or not? क्या सीन है? कौन से वीसी पे? रूम 1 और रूम वन आपको दिख जाएगा अल्ट्रा भाई। रूम 1 देखो, रूम 1 में बैठा हुआ हूँ। क्या कर रहे? चैंपियनशिप मैचेस देखेंगे यार। आज डे 1 है, कल डे 2 है, 2 दिन में फाइनल होगा। आई थिंक इसके बाद ही इंडिया रीजनल्स होंगे, ये खत्म होगा ना उसके बाद इंडिया रीजनल स्टार्ट होगा आई गेस आफ्टर दिस, या तो फिर इसके बाद एक और कोई रीजनल होगा, उसके बाद इंडिया रीजनल्स होंगे इन माय ओपिनियन। देखें क्या टीम लेके आते हैं यार। कोई न्यू पोकेमॉन आएगा क्या? स्पाइसी पोकेमॉन? इज देयर एनी चांस कि क्या नाम है उसका, जो टाइगर अभी कौन सा था, लिटन कॉम्डे था, वो आने वाला है क्या? विल पीपल बी यूजिंग इन द मेटा? मेरे को लग नहीं था वैसे। 46 सेकंड। अरे ऑडियो आ रही कि नहीं ये तो बताओ यार, कोई बता ही नहीं रहा इसकी ऑडियो आ भी रही है कि नहीं आ रही है। वेदर यू गाइस आर एबल टू लिसन और नॉट। मैंने डेस्कटॉप ऑडियो तो ऑन ही रखा है ना। हेलो अल्ट्रा भाई, हेलो, आवाज आ रही क्या? कैसे हो आप? अरे अरे आवाज रुको यार, आपकी साउंड कैसे कम करे यार? अबे साउंड कैसे कम करते हैं? हाँ ठीक है, हाँ फिर से बोलो यार अल्ट्रा भाई। अरे आवाज बदल के क्यों बोल रहे हो यार? ओरिजिनल वॉइस में बात करो यार। मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? खाली मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके ओके, क्या अभी बताना टीन भाई। अबे इज इट बैलेंस्ड और व्हाट? क्या सीन? म्यूजिक में कॉपीराइट तो नहीं आएगा बे?
कम है, अभी कम रहने दो टीम भाई, मैचेस शुरू होंगे तो बढ़ा देंगे यार, पता चला म्यूजिक में कॉपीराइट आ जाएगी, इसीलिए रुक जाओ। आपकी ज्यादा है, ओके ओके, अपनी थोड़ी कम कर देंगे और इधर थोड़ी बढ़ा देंगे। और बताओ अल्ट्रा भाई क्या सीन? क्या बोले दादी के घर पे हो? क्या चल रहा है? आपकी आवाज़ थोड़ी मैंने ज़्यादा कम कर दी लगता है, रुक। आज कितने रेड्स किए आपने? हाउ मेनी रेड्स यू डिड? 5 ही किए। 5 ही रेड्स किए क्या? ओ हाँ। और डिनर वगैरह हो गया? क्या सीन? डिनर तो हम लोग 9 बजे ही कर लेते हैं। 9 बजे? क्या बात है भाई, इतना पहले? We are here in Vancouver, British Columbia, home of historic Pokémon दादी का घर है। 2022. Cindy सही है। winning with Shadow Kanto Ninetales 2023. तीन भाई अभी बताना आप, ठीक है ना? मैं अपना वॉइस थोड़ा कम कर देता हूँ। I am Alpha Phoebe, joined here I by think Stephanie अभी Christine. ठीक होगा। How are you feeling this morning? I am doing great, Nick, and I am looking forward to finding out who is going to join these storied legends here in Vancouver कौन सा VC? 2024 season. Let's आपको take a एक्सेस look. देना We पड़ेगा, are मैंने in दिया the नहीं है अभी, middle दे of देता our हूँ। journey to Worlds रूम right 1 आना, now, and we VC में can रूम 1 आना, ठीक है? see Honolulu just on the crest of the hill. But first stop we have to make up next तीन भाई is आपकी in आईडी क्या है? London for EUIC, the कार पे European राइट। International. Then we have Orlando, Indianapolis, and Los Angeles. चलो here दिख जाएगी in आपको, North रूम 1 में आ जाओ। America. We will end up with New Orleans for the North American International. नहीं, इसके बाद होनोलुलु होना है, होनोलुलु के बाद इंडिया। अच्छा, होनोलुलु में तो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, सॉरी। Let's take a look at न्यू what ऑरलैंड्स trainers होगा, need उसके to बाद do होगा in गाइस, order to qualify for Worlds. मैं भी Of इंडिया। course, in addition to winning a championship, earning an invite, you can also earn invites from championship points. First place earning 200, cascading पॉइंट down सिस्टम from रख दिया है there, भाई इन्होंने कुछ। depending on tournament attendance. Even 64th place can earn you a good amount of championship points. And in order to qualify, US and Canada, you need 500 points, Europe 400 points, and फर्स्ट Latin पे America, पोजीशन को just 200 got मिलता है, a bunch of ओके। points added. 33 से 64 को 50 See, पॉइंट। 300 championship points, Oceania 200. भाई अपन कौन से में आएंगे? मिडिल ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका में आएंगे क्या? नहीं, मिडिल ईस्ट और साउथ अफ्रीका में अपन थोड़ी आएंगे। Lots of championship points on the line. And there are अपन so काय में आएंगे बे? many trainers looking to और टीन भाई, अरे join अनम्यूट that तो list करो। to earn those टीन भाई championship म्यूट कर points रहे हैं, or to म्यूट है earn भाई। all of the glory with a win here today. But we are going to have to take a look back and see some of the more recent victors that from this season. Yeah, Knoxville recap. Here we go. Hello, Pokemon trainers. This is Will Dunphy, and I'll be recapping the 2024 Pokemon Go Regional Championships in हाँ भाई, Knoxville. बोलो 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 यार, इंडिया में क्या सीन है? आप ले रहे हो क्या At the पार्ट? gateway जैसे to the आप एक Smoky टूर्नामेंट में Mountains पार्ट लिए for हो an ना exciting ब्रदर? weekend of battles, proving that win conditions can be found anywhere, VGC even वाले in में? the deepest of valleys. The top performing team from the past 2 NA regionals fell short as Shadow Gligar and Shadow Hello. Whiscash made outsized impacts. On Championship Sunday, अल्ट्रा मुझे बा- बोल रहे हो क्या? 703 हाँ, was sent आपको to ही the बोल रहा। losers bracket by Doonbug टीन and भाई ने his माइक double-boosted अनम्यूट Annihilator. किया क्या? हेलो टीन भाई, क्या हाल चाल? Victories against Awesomev and rise to the occasion before succumbing to Doonbug as मेरी well. आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। आपकी भी आ रही है, आपकी भी आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। Rockhaven 703's focus never eroded as he persevered through the losers bracket क्या? where he would eventually meet Magic आपका Mason. यूट्यूब लैग कर रहा In है। a decisive Game 5, Magic Mason थोड़ा सा ended the वो season होगा, one-two in the डिले losers होगा, finals ऑटो मतलब and थोड़ा सा powered himself डीसिंग through होगा the थोड़ा। Charjabug. Think it's gonna be enough, almost enough to pick up the knockout. Two मैंने कोई matchups go through, tournament and the सब- X-Scissor knocks out the Whiscash. This set the क्या stage बोले, for कौन सा rematch टूर्नामेंट? between Doonbug 97 and मैंने Magic Mason टूर्नामेंट in किया the grand finals. जीत Doonbug proved unstoppable ओह, as he swept the अभी finals आप इसमें पार्ट लोगे क्या? इंडिया रीजनल्स जो होगा? and making history as the first North नहीं, American मैं trainer तो to win 2 regional championships in the same season. नहीं नहीं, इन पर्सन नहीं होगा वो, ऑनलाइन ही होगा मेरे हिसाब से। Champion here at North America.
The road to Worlds is paved Finals to with in thrilling first. victories and narrow Project. defeats. फाइनल्स चैंपियनशिप ना, पर रीजनल में तो जा ही सकते हो यार ऑनलाइन, है कि नहीं? And what a run from Dunebug it was. Discord That was a connect करने great बोल रहे point हैं from मेरे our को। co-caster Speedy. Discord का password बोल रहे हैं। Downfall of हाँ, डिस्कॉर्ड वगैरह का तो सीन है, पूरा चैनल वगैरह ज्वाइन करना पड़ता है, फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह रहती है, बैटल्स वगैरह। But what I do see is something that Vigoroth is मेरे looking में to counter, बैकग्राउंड and साउंड that आ रहा is है क्या? Lickitung across नहीं, the अभी तो board. कुछ I नहीं see आ रहा, Blizz मस्त है, Cash across the board, बैकग्राउंड सब and सही। that Shadow ठीक। Gligar across the board. Those are certainly some of the most popular of the Pokemon that were chosen फैन ऑन कर in रखा है Knoxville. You can इतनी see that सर्दी में। Shadow Gligar right there in the number मेरे को तो नहीं आ रही one out फैन of में। the top 12. सर्दी, But गर्मी yeah, आ गई भाई, सर्दी किधर है अब? हेलो, Yeah, very strong showing. and Lickitung, as you'd हमारे mentioned, इधर number 2 in day 2, both being अच्छा, Knoxville नॉर्थ ईस्ट में तो and थोड़ी रहती है becoming ठंडी यार, बात। quite high. So that was our Knoxville. We also have a lot of NA regional अबे यार champions. So यही we सब added बकवास। Dunebug, and he is of course going to be क्या हो गया the first person यार? मेरे को ये नहीं बिलीव हो रहा है कि 50 रेट्स में एक साइनी कैसे मिला है भाई। हाउ कम वन साइन इन 50 रेट्स भाई? There are going to be some trainers क्या चल रहा है looking भाई? to match that गायों में achievement. मिला था J-Jan is here this weekend सात, as well 50 में as 7 Ryan गायों में Jeffs the शायद। third, looking to 7 also तो make बैलेंस आउट हो their गया फिर, अभी first समझ रहे हो appearance क्या? on our championship list, or will there be someone new? जैसे ही वो शंडो मिला था मेरे को उधर, you can see just how impactful क्या winning 2 इसीलिए भी बैलेंस होगा आउट इस कर बार। दिया be. कि Dunebug इस बार ही सब कुछ दस नहीं देने का। over 100 points from the next competitor, Nighttime Clash. मुझे कब मिलेगा Himself शंडो? was just coming off of a very संडो के लिए ऐसा है अल्ट्रा भाई, थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ेगा यार, the top 16 थोड़ा सा fight for potential 40-50 रेट्स करो तो होपफुली मिल जाएगा यार। 4-5 रेट में संडो खोज रहे हो, कैसे मिलेगा यार? बहुत डिफिकल्ट है भाई, 4-5 रेट में। भाई अमित भाई को तो मिल जाता है। अरे अमित भाई का लक हमारा नहीं है ना यार, हमारा लक अमित भाई का लक अलग है यार। वो भाई एक रेड करने आते हैं, हंडो वंडो लेके चले जाते हैं भाई। उनका कोई कंपटीशन नहीं है भाई। इनएडिक्वेंस को तो जानते हो यार आप लोग, राइट? अगर पीपी फॉलो करते हो तो इनएडिक्वेंस कुछ जानते हो क्या? जानते इन द सेंस देखे हो क्या? पॉपुलर पीवीपी पीरो प्लेयर है भाई, पीरो प्लेयर। इस बार चैंपियन भी बन गया, वो अपने रीजन का चैंपियन बन गया। कौन? इनएडिक्वेंस यूट्यूबर ही है वो भी, यूट्यूब ट्विच। मतलब ये लोग वो बहुत खेलते हैं जो सिल्फ होता है ना, सिल्फ एक्शंस वगैरह। सिल्फ तो बंद हो गया है, पर वैसा मतलब पीपी वगैरह ये लोग बहुत खेलते हैं। यार टीम में इंडिया वाला जो पोस्ट आया था वो अभी नहीं ना हुआ है? नहीं हो गया है। वो पोस्ट सर्वर ज्वाइन करने वो पोस्ट काम कर रहा है क्या? लिंक वगैरह इज वर्किंग? हाँ कर रहा है। एक मिनट आपको लिंक भेज। ओके सही है फिर तो। ट्विटर पे नहीं देखा यार, ट्विटर पे पोस्ट नहीं डाला क्या इन्होंने? सिर्फ इंस्टा पे ही डाला है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सभी जगह डालना चाहिए। सर्वर का लिंक ही नहीं डालना दे रहा मेरे को। ये मेरे को ऐड में आया था, ऐड वहाँ से साइन किया। नहीं पुराना तो नहीं है, 2024 का ही है ना? ओके स्क्वाड के लिंक पासवर्ड भूले मैं। नहीं तो नया बना लो, क्या दिक्कत है? आपने कभी वीजीसी में पार्ट लिया है क्या? नहीं, वीजीसी मैंने कभी नहीं भाई। मैं वीजीसी में थोड़ी खेलता हूँ पीवीपीआर अल्ट्रा भाई, जानते ही हो यार। लेट्स गो से पता नहीं चला क्या? पर वीजीसी में कौन सा गेम लाइक मोस्ट फेमस है एज फॉर पीवीपी चैंपियनशिप जो होती है? कौन से गेम की ज्यादा होती है? अभी तो स्कारलेट और वायलेट अभी चल रहा है। स्कारलेट वायलेट, ओह सही है। सिर्फ उसी मतलब एक ही गेम का होता है क्या, या मल्टीपल गेम्स के होते हैं? मल्टीपल के होते हैं, जो न्यू आता है उसी का ही होता है। ओह सही है। यो मीत भाई, थैंक्स फॉर सब, वेलकम इन, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल?
वैंकूवर रीजनल पॉलीराथ। यार कोई इंसिनेरोर यूज करेगा क्या? मैं वो देखना चाहता हूँ कि कोई स्पाइस पिक करेगा क्या। क्या पता शैडो फ्लैरिगेटर क्या लग रहा है, फ्लैरिगेटर वगैरह यूज होगा क्या? मेरे को तो नहीं लग रहा है, मेरे को लग रहा है लैंटर्न ही रहेगा भाई। तो लैंटर्न विल बी एवरीवेयर, फ्लैरिगेटर तो नहीं आने वाला बेटा। आ गया स्क्रीन पे। नहीं आएगा नहीं आएगा, ओ अभी क्वेश्चन मार्क लग रहा है भाई इस पे। आ गया है। कौन से रीजनल, मतलब वो तो मतलब जीबीएल के लिए ना, पर इधर रीजनल्स वगैरह में वेदर इट विल बी और नॉट वो देखने लायक है। वैसे तो मेटा में आया है वो गलेड भी आ गया राइट, गलेड और शैडो फ्लैरिगेटर। द क्वेश्चन इज इधर रीजनल्स में यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। ये इंडिया से कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इंडिया रीजनल्स अभी स्टार्ट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। हर रीजन का सेपरेट होता है, हर एक रीजन का सेपरेट होता है। इंडिया रीजनल्स तो शायद स्ट्रीम भी नहीं होगा, आई डोंट थिंक वो स्ट्रीम होगा। लास्ट ईयर तो नहीं हुआ था, उससे लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये इन पर्सन इवेंट जो है ना बस वही स्ट्रीम होता है। इंडिया में इन पर्सन होता ही नहीं है ये इवेंट। अगर इस साल इन पर्सन ऑर्गेनाइज करें तो अलग सीन है, अभी कुछ कह नहीं सकते। क्या भाई आपकी आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही है टीन भाई, थोड़ा जोर से बोलो। स्टील दिखा रहा है यहाँ। ये तो इवेंट अप्रैल वगैरह का इवेंट वगैरह दिखा रहे हैं, अभी तो उन्होंने चालू ही नहीं किया है मेन, बट अभी तो इवेंट वगैरह के ऊपर जा रहे हैं। कटाना ग्राइंड करना पड़ेगा फिर। बहुत अच्छा। हाँ न्यू साइन रिलीज और व्हाट, ये ठीक है यार। क्या और ये भी सही है कि सिर्फ 4 दिन के लिए दिया यार उन्होंने, लाइक नॉट कि लाइक 2 वीक्स के लिए एक ही रेड बॉस है भाई, वो सिस्टम नहीं है। 4 से 5 डे के लिए कम टाइम है, हैवी ग्राइंड करना पड़ेगा फॉर साइनिंग। सौरभ भाई फ्यूचर में कभी खेलोगे क्या बीजीसी? बीजीसी फ्यूचर में नहीं यार, गो ही खेलूँ वही बहुत बड़ी बात है। हेलो शिवांश भाई, वेलकम इन, व्हाट्स अप। वीजीसी तो बहुत दूर की बात है यार। अल्ट्रा भाई आप खेलो ना, आपका इंटरेस्ट है वीजीसी में, मेरा वीजीसी में इंटरेस्ट नहीं है वैसा। अगर इंटरेस्ट बनेगा भी तो मेरा गो में ही बनेगा, पीवीपी सीन का अगर होगा तो। इस साल वैसे मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा जाते हैं पार्टिसिपेट करके देखते हैं क्या होता है यार, कितना पिटते हैं क्या होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। We will see. क्या मेरा 151 रैंक आया था बीजीसी में एशिया कप। तो उसमें भी तो रीजनल, तो जैसे ये अभी इंडिया रीजनल्स गो का होगा तो वैसे वीजीसी का भी होता है कि नहीं होता है? हाँ होगा ना, तो जाओ ना पार्ट लो ना, फिर आप पार्ट क्यों नहीं लेते हो? वीसी वेयर ब्रो शिवांश भाई, रुको आपको मैं परमिशन देता हूँ, आ जाना आप भी। अरे मतलब वो मतलब वो था, वो इन पर्सन ही होता होगा ना वीजीसी तो, है ना? उसके लिए तो गेम भी तो चाहिए ना। तो आप तो खेलते हो यार, स्कारलेट वालेट तो खेलते ही हो राइट, चाहे जैसे भी खेलते हो पर खेलते तो राइट। शिवांश भाई वॉइस 1 चैनल आ जाओ, वॉइस रूम 1 आ जाओ, रूम 1 में है अपन तीनों, आपको रूम 1 दिख जाएगा। भैया पता है यूजू बैन हो गया। हाँ क्या? हेलो हाँ बैन हो गया। सही है, वैसे भी मैंने लेट्स गो बंद कर दिया था खेलना। हेलो शिवांश भाई, हेलो व्हाट्सअप। बढ़िया भाई, सब मजे में? भाई सब बढ़िया। और क्या चल रहा है? मैं खाना खा के बैठा था। आईपीएल आज किसका है यार? आज केकेआर का आईपीएल है भाई, क्या मेरे को पता ही नहीं था। शिवांश भाई आप ले रहे हो क्या पार्ट इंडिया रीजनल? क्या सीन? नहीं भाई नहीं। अरे आपने तो बोला था कि आप लेने वाले हो यार, क्या हो गया? मैंने कब बोला था भाई? अरे आपने तो बोला था यार। शायद से बोला। तो पार्ट लेना कैसे? क्वालिफायर्स के लिए अभी वो लिंक्स वगैरह वो पोस्ट करते हैं, वो करेंगे, वो पूरा पोस्ट आएगा पूरा। चलो ट्राई
ट्राई उसमें करेंगे। पूरा रजिस्टर करना पड़ता है भाई, सारे पोकेमॉन से लेके आप पोकेमॉन्स कौन सा यूज़ करने वाले हो, अटैक से लेके एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन देयर। जाओ क्या मैं? तो जाओ ना, किसने मना किया है? पर ये नहीं पता ठीक है वीजीसी मैं पूरा किधर देख। होता है, कहाँ पे होता है, अब नो आइडिया। लाइक इन पर्सन अगर वीजीसी होता होगा तो कौन से सिटी में होता है पता नहीं। गो का तो ऑनलाइन होता है। कल तो कोई इवेंट नहीं है ना, कल तो मस्त चिल दे राइट। आज ही था जो था मेन इवेंट इन गेम राइट। आज तो मेरे 2 रिमोट पासेस वेस्ट ही हो गए वेस्ट क्यों हो गए? ग्लिच की वजह से। अरे तो इन गेम सपोर्ट में वो करो ना, टिकट रेस कर दो ना। हाँ किया किया ना। तो सही है, वो रिप्लाई कर देंगे, वो मतलब थोड़ा दे टेक टाइम। 12 घंटे मान के चलो, 10-12 घंटे लेते हैं वो कम से कम। पर मैं ये नहीं श्योर हूँ कि वो 2 रिटर्न करेंगे कि नहीं, मेरे को सिर्फ एक ही रिटर्न किया था उन्होंने। तो मैं केस कर दूंगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं होने वाला केस में भाई। उसका लिंक पोस्ट कर दिया चैट। क्या? इसका लिंक पोस्ट कर दिया टूर्नामेंट। क्या लिंक लाइव हो गया है क्या? हाँ। किधर डाला है, फ्लेक्स में डाला है क्या? अच्छा जनरल चैट में क्या? अच्छा यही है क्या? ओके। अच्छा हाँ 2024 का, हाँ उन्होंने तो सब कर दिया है भाई। एशिया क्वालिफायर ओके। 2 क्वालिफायर्स होंगे क्या? क्वालिफायर 1 क्वालिफायर 2। 6 अप्रैल को? अरे क्या भाई, ये तो अगले ही हफ्ते है, मतलब अगले महीने ही है। 4 अप्रैल 6 अप्रैल को पहला है, 14 को दूसरा है, 27 अप्रैल को प्ले ऑफ्स है। ओ भाई नेक्स्ट मंथ ही है यार ये तो। इस बार भी ऑनलाइन ही हो रहा है, ऑफलाइन नहीं हो रहा है। करेंगे करेंगे, प्लान करते हैं। क्या? कौन सा चाहिए पोकेमॉन निकलते ही। देखते हैं ना क्या रहता है, क्या सीखना भाई। देखो अपने पास क्रिसेलिया और लिकिटंग तो है नहीं भाई, वो दोनों तो रहेगा ही रहेगा भाई हर एक के पास। तो उन दोनों का आंसर लेके जाना पड़ेगा कम से कम तो, क्योंकि वो बहुत कॉमन रहने वाला है। बहुत चल रहा है अभी। कौन सा? मैंडीबस। मैंडीबस? अच्छा हाँ मैंडीबस का राइज हुआ है ग्रेट लीग में राइट। मैंडीबस मेरे पे नहीं है यार, पीवीपीआई भी नहीं है मेरे पे। आई डोंट हैव। चला दो। कुछ भी सही चला दे क्या? बल्कि तो है ही पहले से। हाँ बल्कि तो है, ये बात तो है। अभी नेक्स्ट मंथ का रेड बॉसेस कंप्लीट ही ना उन्होंने बताया है, सिर्फ अभी 1 वीक का उन्होंने बताया ना। भी बताया अभी वो दो अल्ट्रा बीस्ट है ना। तो वो सिर्फ 1 वीक के लिए है ना, अप्रैल फर्स्ट वीक के अराउंड राइट। लास्ट वीक में वो रजिस्ट्री लिखा है, रजिस्ट्री लिखा है लास्ट। अच्छा बताया क्या अप्रैल के एंड का? अपन ने ध्यान नहीं दिया। अभी अभी तो दिखा रहा था, उसमें अप्रैल भी था क्या? अप्रैल का ही तो दिखा रहा था, बताया था मैं इस समय रजिस्ट्री दिखा रहा था। ओह मैं तो मार्च लगा। अच्छा ये मार्च कंटेंट अपडेट अप्रैल। अच्छा गाइस हाँ देखो अप्रैल 12 से 25 ब्लू है और 25 से मे 2 रजिस्ट्री। अरे भाई रजिस्ट्री ग्राइंड करना। रजिस्ट्री इज अ गुड रजिस्ट्री वन। लगा क्या? मेगा हैराक्रॉस का डेब्यू हो रहा है गाइस, ये देखो अप्रैल 13 से मेगा हैराक्रॉस आने वाला है। मेगा हैराक्रॉस डेब्यू। बढ़िया है भाई। शैडो एंटा ही आने वाला है रेड में। मेरा
ओ भाई, मेगा हेराक्रोस अच्छा है, हाँ बस बग टाइप इट इज कॉम्पिटिटिव नाइस। है। बग टाइप उसके काम का। उसके बाद मेगा एग्रोन आने वाला है लास्ट के अप्रैल वीक में। अप्रैल में शैडो एंटाई आ रहा है भाई, ये सही है बे। मार्च में शैडो राइकू रिलीज कर दिया, अप्रैल में शैडो एंटाई। ओ भाई, पर अपने को क्या ही करना है भाई, शैडो रेड समसे ना होता है। टापू ब्लू भी साइनी आ रहा है, सही है। आपको नेचर फिनी नहीं दिया ना मतलब। नहीं, इन्होंने टापू फिनी नहीं दिया, लास्ट में इन्होंने बहुत रजिस्टिल होप है कर भाई। दिया। मैं आप कह ही रहे टापू थे टापू फिनी फिनी टापू बोलू देंगे, मैं कहा था रेजिस शील्ड दे लो। हाँ, एक चेंज कर दिया प्रेडिक्शन। उन्होंने, पता नहीं क्यों। आइडियली वो यही करते हैं कि जैसे एक टापू रिलीज किया तो लाइन से सारे टापू रिलीज कर देते हैं वो। हाँ, अब क्या पता, मेरा तो रेजी लाए यही हैं तो रहता। क्या रेजी जल्दी आने में वाला है टापू क्या? फिनी आ जाएगा हर जगह। क्या? नेचर्स मैडनेस के बाद, नेचर्स मैडनेस के बाद हर जगह टापू फिनी आ जाएगा अल्ट्रा। हाँ, यप यप आ यप, जाए टापू वो तो फिनी। टॉप मेटा होने वाला है इन द अल्ट्रा लीग भाई। डीबफ मिल जाता है, वो तो गारंटीड ऐसे ही अभी डीबफ। भी टापू फिनी इज वेरी गुड इन अल्ट्रा लीग, के बाद तो और भी हो जाएगा। ये सही है वैसे, चलो एटलीस्ट हमें न्यू साइन ही दिया है, 2 न्यू साइन ही मिल रहे हैं प्लस एक न्यू मेगा मिल रहा है। बाकी शैडो रेट्स तो जाने ही दो यार, क्या ही बोलें। Shocking. I mean, but if I have to say, what are the two top most consistent Pokemon throughout this अच्छा, entire हेराक्रॉस तो season? नया होगा ना मेगा। मेगा हेराक्रॉस इज न्यू, यप, Earn their path, right? Whether it's through local cups and challenges न्यू मेगा। मेगा मेटाक्रॉस कब आएगा? पता नहीं यार, देखो धीरे धीरे दे आर लीडिंग इट ग्रेजुअली। मेगा लुकारियो कब आएगा ब्रो, मैं तो लुकारियो का वेट कर रहा मेरे हूँ। को नहीं लग रहा वो एंड में आएगा वो, अभी तो नहीं लाएंगे वो जो अच्छे अच्छे मेगा है, मेगा म्यूटो भाई एक्स, मेगा म्यूटो वाई, ये सारे वो हाइप बना के लाएंगे यार, ऐसे नहीं लाएंगे। भाई बोलो। मेगा लुकारियो टट्टी है, क्यों? मेगा लुकारियो टट्टी है, क्यों? उससे रेल अच्छा अटैकर मेगा अच्छा हेराक्रोस है। उससे अच्छा क्या है? मैं पोकेमोन गो की बात नहीं कर रहा, अच्छा, है। अच्छा, गो की गो बात में नहीं कर अच्छा रहा, होगा, गो में अच्छा होगा यार, अपन गो का ही बात कर रहे हैं यहाँ। गो की बात नहीं कर रहा। हाँ भाई, अपन गो ही खेल रहे हैं अभी, तो गो की ही बातें करेंगे यार। भाई मेगा लुकारियो से पहला अच्छा पहला तो वो मैच हाउलूचा स्टार्ट है। होने वाला है गाइस, फर्स्ट मैच स्टार्ट होने वाला है। हाउलूचा है क्या? नहीं, हालूचा नहीं है। हाउलूचा का भाई हाउलूचा का पाचिरिसु फ्लाइंग है स्पेल ब्रो, ही इज बहुत यूजिंग ओपी है। पाचिरिसु कैनन बॉल। पाचिरिसु, व्हाट द हेल? मेरे को एक घंटों बाद भाई गलेड भी और है इन पे, ही इज यूजिंग गलेड आल्सो। अबे ये क्या टीम लेके आए हैं? बोला था गलेड, गले तो सही है, चलो कोई नहीं। गुलाइसोपॉड भी है। हम्म पाचिरिसु नहीं, पाचिरिसु के पास वाला अटैक है ना, उसका नाम क्या था? पाचिरिसु कौन से अटैक? देख के ही पता चल जाएगा। जीरो कवरेज है, बस एक सेकंड। बस इलेक्ट्रिक टाइप मूव यूज करते हैं। एक कोई जीरो कवरेज कवरेज वो है आई थिंक उस पे, ग्रास टाइप का शायद है उस पे। नहीं नहीं, पाचिरिसु पे नहीं है। नहीं है क्या? मेरे को नहीं आइडिया, ये तो मेन मेटा है, ये तो अभी रजिस्ट्रेल। दिखाएगा, रुक जाओ दिखा देगा। हाँ, वो तो दिखा देगा कि क्या मूव रन कर रहे हो। हेलो अमित भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, कॉन्गो फॉर संडो। थैंक यू अमित भाई, क्या हाल चाल? यार इस पे तो सारे इलेक्ट्रिक मूव्स है भाई, पाची पे बैस्टी, गलेड, लेकिटन, शैडो, ग्लाइगर और गोली सपोर्ट। एक्सेसर क्यों चला रहा है? एरियल एशन 8 के लिए चला रहा होगा ना। यार बैस्टी आई हेट यार। हेलो 1 आवर गेमिंग, वेलकम टू द स्ट्रीम। ब्रो एक पोकेमॉन दे दोगे क्या? नहीं दे सकता यार, ट्रेड नहीं करते यार अपन। नो ट्रेड ब्रो। कहाँ पर हो? शेडो दे दो। वीसी पे अमित भाई, वीसी वॉच रूम पार्टी 1, में। रूम 1 आ जाओ, अगर आना है वॉइस चैनल पे तो रूम 1 आ जाओ। सबको रोल देना, फिर जब किसी ओपन कर दो। अरे वो जान के मैं प्राइवेट रखा हूँ ताकि कोई भी ना आ जाए, वैसे समझे क्या, इसलिए। चलो फर्स्ट बैटल स्टार्ट हो गई है। शैडो ग्लाइगर इनटू लिकिटन। पोकेमोन कोज़ाकोटल किसी ने खेला है क्या यहाँ पे? हाँ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। मैंने खेलना स्टार्ट किया है अभी, जीबीए रोम है। ओह नहीं, मैंने नहीं खेला।
go for 5 licks and then the body slam onto the फोर्ट्रेस Shadow पोकेमॉन Glider. गो में कैसा है? Jim, it seems like you're suggesting that trainers like to Trash watch है भाई, Lickitung mirror trash. match. You know what? You're Well, right. I don't know how much they enjoy watching it, but they certainly Fortress. like bringing it in here, and that's exactly what we're seeing. Fort. Lyle getting a Pineko great का ही catch बोलूं। on this body slam, gonna अच्छा अच्छा absorb बकवास। all of that neutral damage, and at this point, मैं भी Jim, इंडिया भाई उज्जैन गेम में में हूँ, तो सही है। still on that तो Gligar that तो you're gonna ट्रेड want वैसे भी नहीं हो later in पाएगा this game. ब्रदर। Could be great versus that Gliscor लॉन्ग later डिस्टेंस on. ट्रेडिंग Well, अलाउड not नहीं just है। the Gliscor, but also the Gallade and also the Pachirisu, right? Gligar has incredible flex play here for Lyle Jeffs, so he's very clever to फोर्ट्रेस switch के it out, ट्रेडिंग keep लगता it है in the क्या? back with about 30% नहीं HP नहीं नहीं, in वो case he चैट wants to में use बोल it रहा मैं। later. But देयर इज like नो you pointed रूम। out, Jim, we're in एक a सेकंड Lickitung आपको mirror ऐड match, कर रहा हूँ lots मैं of body भाई। slams getting thrown, but actually the power whip, this is very aggressive by Lyle भाई Jeffs. I don't स्कूबर think है this is क्या enough to knock I out don't though. think it's enough to रैंक knock हुआ out है? either, but I think that one body slam, you'd have to throw क्या two पता, body slams. This देखना now maybe पड़ेगा। puts Lyle in a position where he can actually lick all the way down, come out into this next matchup with a lot of residual energy, maybe even two body slams. Here comes the body slam from Cannonball. आईडी बताओ, Does आईडी not बताओ do आपकी that क्या है? much, and व्हाट इज द will he आईडी? be able to get a full lick down? कौन सी आईडी है? Actually, yes. Comes out with the body slam, ready to maybe go into either this Gliscor or this Shadow Gligar. A Now- shiny Shadow Gligar, might I add. Double resisted licks into the opposing Lickitung, and now we get Gligar with neutral wing attacks. ये shiny है ना? Shadow shiny Gligar. Gligar, oh Really भाई। fast. Here comes a body slam from the shiny Lickitung from Lyle Jeffs. मेरे पास- Also, his switch timer is also expired. आपके so पास he's है able to क्या? send another I round don't if he have wants that। to, but he does get that इस body बैटल के slam बाद आपको still. ड्रैग करता हूँ भाई। आप बस ट्रेनर नहीं बता दो कौन से नेम से हो, Very आपकी आईडी interesting कौन to सी see है? here, actually, as well, because you don't really want to bring in your Gliscor with the double resisted Shadow Claw. So Gligar. understand the justification for Cannonballs to start shielding. We actually have a quick swap here at combo play. Lyle Jeffs bringing in the Gligar and had that stored energy. Here comes the Aerial Ace. Not enough Cuts to blue knock for out it, the Gligar, but- but brings it dangerously low. This is going to force the swap now into this Gliscor. That bug typing really betraying the Gliscor here. भाई ये Super कैनन ब्रो effective जो wing है attacks, थोड़ा सा just स्पाइसी raining यूज down कर रहे हैं, these है कि नहीं Aerial गाइस? Aces, trying to apply pressure, take away तो that लिस्ट bug सपोर्ट और protection. पाचीरीसु लेके आए भाई ये। Cannonballs looks like he's going to gear up here for a Shadow Claw down, and that's great. But at what cost, Jim? You have no protect shields. Your Gliscor दोनों is shield half down। health, and now there's a Shadow Sableye with 2 protect shields. सन एंड मून खेला है क्या यहाँ पे I किसी ने? could even see Lyle Jeffs potentially हाँ, coming in with the मैंने Lickitung, complete किया था absorbing that Sun and energy. You're हाँ knocking वो the Shadow Claw हाँ down, वहाँ but पे no, we have the ग्लाइसर Shadow पॉट के पास Sableye एक coming in एबिलिटी है instead. ना, At this क्या point, you have to इमरजेंसी shield एग्जिट। something. These are neutral X scissors. Again, X scissors Ability get के लिए buffed a couple जिससे वो- seasons ago, and actually lets it go. Speed Okay, run जिससे वो- so the Shadow Sableye dangerously low. 50% हेल्थ होने में He वो knows he रिटर्न हो needs जाता X है scissors no matter what, so I think he's deciding to shield one of them. Automatic. He needs that protection on the second ये X गज़मा scissor, के पास होगा and ना look ना for probably a Gliscor। Shadow Claw down. We saw the Shadow हाँ, Claw down हाँ, in हाँ, reverse, हाँ। right? Cannonballs versus the Gligar. Now Lyle Jeffs is on the better end of that exchange. Goes for the foul play on Arc charge step attack. priority and wins it. Gonna fire that off against the Gligar and I think win this game. I like that play from Lyle. He recognizes there's still a charge attack, wants to retain a protect shield just in case that he needs to use it, but no, had the energy, able to win that भाई charge attack 2 सील्स priority. पहले डाउन हो गया था ना भाई सामने वाले Remaining के? Pokemon for Cannonballs and take a They were 1-0 already 2 seals series down. lead. This is definitely an uphill matchup for Cannonballs, given that he's facing off against a former regional champion. And you can tell by Lyle Jeff's body language at the end of that matchup, that was a lot closer than he had hoped, right? He hoped to just have a solid, easy win in his first round, but no wins come easy against these trainers in Vancouver. Well, let's take a look at this replay. We saw that catch again, just like we said, get a lot of damage out from your Shadow Gligar, get that catch on the Lickitung, actually gets a lick down as well. Later on in the matchup, has a great matchup with the Gliscor, the Flyer up against the Bug. Despite the मेरे को farm तो लग down, रहा है he जेफ gets ही a जीतेगा, Pokemon राइट? कैसे है ग्लाइसर just use one protect shield, get some पोकेमॉन energy, गो and में then अल्ट्रा follow लीग में up अच्छा है, with that नॉट इन Shadow ग्रेट लीग। अभी Sableye. ग्रेट लीग में Shadow थोड़ा बहुत Sableye यूज has कर रहे हैं definitely गाइस, been a पर European phenomenon. अल्ट्रा लीग में We've वो seen सही है, 3 नॉट इन top ग्रेट 10 this लीग। season, all Shiny 3 are from release the हो रहा है। EU region. So it's क्या? gonna be interesting to see if Lyle Jeffs can Shiny battle release भी हो Pokemon रहा है। all हाँ the हाँ, way शाइनी through the रिलीज bracket हो here तो in रहा है। North America. Cannonballs needs to find a way to fight back. ग्लाइसर Well, पॉट what's का gonna be difficult is Yep, how do you Wimpod, break that Wimpod Lickitung शाइनी रिलीज Shadow Gligar पूरी off, फैमिली, retaining the Gallade, मतलब and दो ही that's तो just है, not gonna be the विम्पॉड answer. और You're गोली taking सपोर्ट। super effective fast attack damage, both from the wing attacks as well as from the licks. उसी इवेंट में ना जिधर हमने को कटाना आ रहा है, सेम इवेंट में, राइट? A different matchup to gain हाँ, energy and then same. unleash it अप्रैल into फर्स्ट those वीक में जो Pokemon इवेंट हो रहा rather than है। getting हाँ, stuck in those matchups. Now, one interesting Pokemon here could be that Pachirisu. It's not going to perform very अमित भाई को nicely ड्रैग into करता that हूँ। ओनली किरी तो Gligar. बोला ना I अमित mean, भाई? it does resist the नेक्स्ट wing बैटल attacks, स्टार्ट होने right? से So that's हाँ really ओनली great. किरी But तो versus यार the 3 Lickitung, है it आपकी, actually कौन has सी a हो आप very इसमें? कौन से हो comparable बताओ? form, so may be able to ये वाली withstand क्या? some of those body slams with दिया just एक्सेस, such a देखो nice रूम 1, attack that it has. I think रूम it's 1 में आ so जाओ। pathetic that we get Pachirisu वो in कैट the वाला first कैट वाला round of our Vancouver हाँ, region कैट वाला ही because ऐड it किया हूँ is मैं, a कैट वाला regional ही। Pokemon, those Pachirisu appearing in northern अब Canada. आपको दिख जाएगा, It's वीसी रूम 1 right देखो, now my
trying again. आपको दिख जाएगा मेरे पे. The first round in Vancouver, I believe 2 Canadian trainers as well. But that being said, we're going to see what happens here because both trainers are locking in here for game number 2. If Wild Jeffs wins this, he moves on to winners round 3 and Cannonballs falls to the losers bracket. But just like you pointed out, Jim, we see that Pachirisu Pachi into Gligar, ये तो भाई GG है भाई. Obviously, we're
we're going to be having तो a negative matchup for the Pachirisu, but it does resist the wing फिर attacks से as well. लिकिटिंग We से see a स्वॉप pivot into the Lickitung though by Cannonballs. Here comes the aerial ace by Lyle Jeffs. Wants to actually throw a charge attack before this Lickitung is able to reach the body यार उसका slam. I think that अगर we might देखा see जाए a तो net positive पाचेरीसू which will तो bring सिर्फ in the पॉली Lickitung रैथ पे to ही the लाइक इफेक्टिव होगा राइट बाकी सारे तो कहीं नहीं काम का है उसका पाचेरीसू राइट इसके सामने तो He knows this is a very consistent team, and if you look at the rest of his Pokemon, for example, Poliwrath, totally outmatched by a lot of these picks. Gligar, Sableye, Lickitung, कोई फायदा का It नहीं makes sense to kind of go with a ओनली consistency, पॉलीरैथ के incorporate an सामने aggressive पाचेरीसू power इज up here गुड from Cannonballs. At this HP range, at this juncture in the matchup, नहीं you kind of बल्कि throw है whatever charge पाच attacks you want to, but on क्या the efficiency side, Body Slam is usually the pick बल्कि that है most लेकिन trainers पाचरीस elect for. थोड़ा I would have liked to पर have उसके seen मूव body slams सेट्स there. तो Yeah, उतना maybe डैमेज it देने would- वाले it's हैं really नहीं gonna राइट get क्या that मूव सेट्स bad उसके for थंडर Lickitung. बोल्ट और वाइल्ड चार्ज है You know, क्या body slam's not going to knock out, but a power whip ये either puts अगर it वाइल्ड down चार्ज or है puts तो it in a lick down range is really when you it want to can start hurt doing that. But Speedy, here we go. some of Body them slam after body slam firing out from both of these trainers. And वाइल्ड चार्ज actually नहीं a है catch वाइल्ड चार्ज नहीं है coming क्या back in the Pachirisu is Cannonballs here going to catch this neutral power whip. So we're seeing a lot of power whips actually. I have to say, Cannonballs has an unconventional team, but his mechanics are very. थंडर पंच और थंडर बोल्ट लो भाई ये तो फिर कुछ नहीं है थंडर पंच तो कुछ भी नहीं है यार नॉर्मल पावर रेट कितना कम किया है इस पर न्यूट्रल है ना वो तो ग्रास टाइप ग्रास अटैक अरे उसका सीपी तो देखो कितना कम है कम नहीं है वो हंडो है वो एक्सेल पोकेमॉन है और अमित भाई स्वागत है क्या हाल चाल हाँ भाई हेलो संस्कार भाई आई जॉइन यू आफ्टर 12:30 पीएम चले 12:30 पीएम मतलब कल दिन में आ रहे हो क्या संस्कार भाई कल दिन में आओगे क्या कल दिन में तो अपन रहेंगे नहीं मतलब एएम राइट He's just 2 wing attacks away from the second dig, and he wins the charge attack priority tie. What's really curious is to see how can Cannonballs maybe get energy on this Shadow Gallade in the back. It does not want to match up versus these Shadow Claw users. भाई Gallade he switched to Gallade he changed Gallade right Gallade support उन्हें हटाया और Shadow Gligar हटाया ग्लेड भी तो हारता ही है इसके साथ Recognizing that the Gligar was on the 5 wing attack cycle, Cannonballs executes a perfect lick down there, but he's gonna get Bro Shadow Sableye Gallade को तो जीजी कर देगा भाई and it will pick up the knockout. He's down to his last Pokemon, which is Shadow. सॉरी ये हम गलती से टाइपो हो गया आओ आओ बोला तो जीजी है भाई Shadow Sableye into Gallade वो भी समझ रहा है भाई हमारा जीजी हो गया जीजी वेल प्लेड यार वेल प्लेड हार्ड काउंटर हो गया भाई कैनन भाई थोड़ा स्पाइसी टीम लेके आए थे समझ रहे हैं क्या जेफ भाई जीत गए हैं हमारे जेफ भाई जीते हैं फर्स्ट मैच के विनर और अमित भाई क्या सीन क्या चल रहा है कल छुट्टी है क्या सीन वर्क है नहीं कल तो वर्क है सर उधर तो ये नहीं है आपका वर्क इज आल्सो लाइक छुट्टी ओनली राइट क्या 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 आपका वर्क भी तो इज लाइक छुट्टी ओनली विच रूम आर यू इन संस्कार भाई आप जब आओगे तो बताना मैं आपको एक्सेस दे दूंगा वीसी में रूम 1 है अभी वो प्राइवेट रूम है तो आपको मैं एक्सेस दे दूंगा चैट में बताना व्हेन यू आर लाइव ऑन डिस्कॉर्ड सो आई विल ड्रैग यू इन अरे पोकेमॉन प्रो आप भी तो एक कर सकते हो ना क्या आपके सब्सक्राइबर मैं टूर्नामेंट कहाँ से करूँ भाई टूर्नामेंट भाई वो बहुत हेडेक का काम है ब्रदर नॉट पॉसिबल अरे मतलब कोई कॉम डे नहीं होगा नॉर्मल जो जिस दिन कुछ नहीं होगा उस दिन कर देना भाई वो पूरा मैनेज करना पड़ता है अमित भाई ऐसे नहीं होगा बहुत बेटी होगी टूर्नामेंट तो तभी भी नहीं होगा यार टूर्नामेंट यार उसको बहुत वो करना पड़ता है भाई थोड़ा हेडेक का सीन है समझ रहे हो क्या पूरा उसको मॉनिटर करना पड़ेगा क्या जॉब करते हैं अमित भाई क्या जॉब करते हो संस्कार भाई पूछ रहे हैं चैट में मैं तो मतलब आईटी में काम करता हूँ आईटी कंपनी में संस्कार भाई
appreciation for हाँ, Ghost Squad, एनालिस्ट for में हूँ। Cannonballs. I think that was a great pick. एनालिस्ट आवाज आ रही है ना संस्कार भाई? सबकी आवाज आ रही है राइट? अमित भाई की, टीम की, शिवांश भाई की और अल्ट्रा भाई की। What's the key difference, right? Because most trainers संस्कार भाई used to see कंफर्म Purified करें, उनकी Sableye, साउंड तो and आ if रही है you राइट only watch ऑन this स्ट्रीम? season, this might be the first Sableye you've seen in संस्कार general. भाई What's the है difference कौन? between the Shadow कौन सा? Sableye and the Purified in terms of how it plays? संस्कार भाई जो हमारे रेगुलर चैट में रहते हैं, मॉड है हमारे, मॉड साहब। नहीं, यहाँ पर कहाँ पर कौन सा है? मतलब दो है, एक नहीं, है इधर अभी नहीं आए हैं संस्कार भाई, अभी नहीं है इधर। टीन भाई हैं, अल्ट्रा भाई हैं, शिवांश भाई हैं और आप हो। संस्कार भाई हमारे ओजी में साढ़े 12 बजे आएंगे संस्कार भाई, 12:30 के बाद आएंगे। संस्कार भाई स्कूल में है ना? आपकी लाउड है, बाकी सबकी लो है, तो हमारा चैनल है, हमारा लाउड ही रहेगा। मजाक करे भाई, रुको यार, सेट करने दो। Or a pure Shadow Claw down. Yeah, exactly. Right? With that increased damage output. I look at Shadow Sableye as a Pokemon that a आप lot ठीक of है, trainers 70 use to कर take देते हैं। control switch advantage, just like Purified Sableye, but they tend to use both Protect Shields in those situations and just try to brute force their way through the matchups with the Shadow Claws. So, again, very interesting to see Lyle choose that here for Vancouver. 600 MB बचा है, अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ तो डरना नहीं। अरे क्यों डरेंगे, मजे से डिस्कनेक्ट हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप तो चारों तरफ 5G अनलिमिटेड नेट है ना सब पे। किधर 5G अनलिमिटेड हो गया भाई? हेलो, चारों तरफ जियो जियो जो दे रहा है, जियो 5G नहीं, एयरटेल भी दे रहा है ना। एयरटेल अभी कहाँ दे रहा है यार, नहीं दे रहा, लिमिटेड ही है भाई वो। फ्री में दे रहा है क्या? मेरे घर के पास दे रहा है, मेरे घर पे दे रहा है। ओ भाई, टेस्टिंग चल रही होगी, हो सकता है। अमित भाई मैरिड है क्या? अरे कभी का संस्कार भाई, अगले साल हो रही है अमित भाई की शादी। पहले आपका देखना है। नहीं अमित भाई, आपने बताया था, मैं आप कॉलेज में गर्लफ्रेंड देख रहे हो अमित भाई। क्या? अरे नहीं, मजाक कर रहे गए, मजाक। भाई सबसे पहले तो सौरभ भाई का शादी का खाना खाना है। सही बात, सही बात, सही बात। सही बात। हाँ, एक प्लेन का टिकट भी भेज देना। ठीक, जरूर जरूर जरूर। फ्लाइट को फ्लाइट बुक करा देंगे, क्या बोलते हो, चलेगा? हाँ, बिजनेस क्लास में चल जाएगा। बिजनेस क्लास, ठीक है। एक फ्लाइट की एक कंपनी खोल देंगे भाई, क्या बोलते हो? जो बचेंगे उनको ऊपर फ्लाइट के ऊपर टॉप पे बैठा के ले आएंगे, क्या बोलते हो? वो भी चलेगा। नेक्स्ट शैडो रेज में कौन सा आने वाला है 5 स्टार में? एंटी outside of Gligar, how did you try to make room on your team for Yeah, he also had a Galissapod, which I thought was interesting. Again, all ब्रो of पाल his वर्ल्ड में picks कोई नहीं है were क्या? सच losing matchups to Gligar. पाल वर्ल्ड में अभी So तो just कोई नहीं है helped यार। me kind of deal with that. My main concern was dropping shields early. हम तो भाई Did have गरीब the Shadow Gallade in the back पाल because वर्ल्ड I का knew कुछ its नहीं है charge यहाँ moves पे, could कुछ output a दिन में lot of मे भी, damage. अभी तो So पता that नहीं। was my only real हाइप चला concern गया सारा with, उसका। with the lines that I had ran, and I did make a वो nice catch. हाँ, जब being रिलीज हुआ wanted to था उस preserve टाइम वो my, नेक्स्ट लेवल हाइप पे था यार, अभी तो Gligar, which उसका I thought क्रेज would थोड़ा be useful and ended up being डाउन very हो गया है useful. ना। Alright, well, great insights from the man himself. Good luck on the rest of your run. I know यार you शिवान want to भाई, take आपकी home आवाज़ a भी थोड़ी धीरे आ रही है, बढ़ाने दो। Canadian regional आप कहीं for दूर your बैठे हो home क्या country. ईयरफोन वगैरह Let's से? go ahead and send it back to the casters. नहीं मैं कौन? लगा के बैठा As well as Lyle Jeffs, चलो थोड़ा आपकी congratulations आवाज़ to हमने Lyle बढ़ा Jeffs दी to है, gain 2-0 अब जोड़ा है। victory. I want to go back to some of the comments he made about Gligar actually. आप लोग में से have कोई to say खेलता है it's क्या one of अमित the भाई के most अलावा? consistent, पाल वर्ल्ड, flexible, एनीबडी एल्स? and impressive Pokemon that we're seeing in this नहीं। current meta. If we look at the roughly 20 various regional and special event tournaments हाँ that मैं we have खेलूंगा throughout the अगर season, आप खरीद के दोगे तो। actually out of the last 14, बस 10 जा रहा हूँ Gligar or कल ही Shadow ऑर्डर कर रहा हूँ, Gligars ठीक on है? those winning teams. Speedy, what makes it so flexible? अरे I मतलब feel like नया it's also important to नया point नहीं, out that मतलब Gligar बहुत सारे लोग is पायरेटेड भी definitely a खेलते हैं। North American ट्राई phenomenon कर as सकते well. हैं। If you look at पायरेटेड नहीं है, the लेंगे तो previous खरीद top eight but परचेस at the करके खेलेंगे। last हाँ, four खरीदना अच्छा regional है। championships in the NA region, and वो you लोग
भी बना रहे हैं। पायरेटेड में तो दोस्तों के साथ नहीं खेल सकते ना। नहीं खेल सकते हैं ना, पता नहीं। शायद देख लो, देखना पड़ेगा। It's only weak to ice, and then if you look at, or not only weak to ice, but its most, I guess, egregious matchup is against ice types. And if you look at ice type Pokemon in the current meta, Dugong, Shadow Alolan Sandslash, maybe the occasional Frostlass we see from time to time, they just aren't as prominent as they used to be. So Gligar, while not quite as safe as Lickitung, I do think it has. आज शायद इनिशियल क्वालिफायर्स जो है ना, इतना मतलब पता नहीं यार कितने मैचेस हैं उन्होंने वो तो डिस्क्लोज नहीं किया है, पर 3-4 घंटे तो चलेगा ये कम से कम। Mostly Shadow Gligars, like he said, rather than the standard non-Shadow variants. So just like he 3-4 said, घंटे मान Hydro Cannon be such a powerful move, having that Shadow bonus from the Shadow for Alligator. I hope to see that matchup at some point. Now we saw a ब्रो lot of संडो the क्राउड Lickitung अभी भी Gligar core खराब there लग रहा from है। both teams क्या? there, from Cannonballs as well as Lyle कुछ Jeffs. नहीं, To me, that screams, भाई where is संडो Skarmory? क्राउड Is there some opportunity for Skarmory to shine here? And कुछ this Vancouver बोल रहे थे tournament? अमित भाई आप जब मेरे को सेंडो ग्राउडन मिला था तो बोला था। अरे 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 देखो देखो उससे पहले वाले में जो रेट था ना उसमें मैं गया था और उसमें आप नहीं थे, उसके नेक्स्ट रेट में आप चले गए थे, मैं नहीं था, इसलिए आपको मिल गया, नहीं तो वो मेरे मतलब मेरे पास ही आने वाला था। ऐसा क्या? एक किसी और बच्चे को मिला था पर कोई नहीं, अगली बार बेटर लक नेक्स्ट टाइम अमित भाई, कोई बात नहीं। एक और बंदे को मिला था ना, शंडो आज चैट में लिख रहा था। हाँ संतोष भाई बोले हैं उन्हें भी संडो मिला है भाई, इंटरेस्टिंग। अब उसको बेस्ट बडी बना लो। बिल्कुल बनाएंगे यार, आज मैंने ऑफलाइन भी लाइक 5-6 रेड्स किए हैं घर आने के बाद भी, ताकि एक्सेल कलेक्ट कर पाऊँ, पर फिर भी अभी भी 130 एक्सेल चाहिए भाई अपने को। पोकीपीट वर्सेस मंकी बग, मेडिचैम, हेलो ओ भाई, गैलेरियन वीजिंग, ओ भाई, विगली भाई, टीम तो यार नेक्स्ट लेवल आ रही है गाइस, नेक्स्ट लेवल टीम यूज कर रहे हैं बे। ट्रोपियस वैसे अच्छा पोकेमॉन है यार, ट्रोपियस इज गुड। बस विंग अटैक मिल जाए, एयर स्लैश किया। हाँ ये है, विंग अटैक मिलेगा तो और इफेक्टिव हो जाएगा। अब सबके पास 4 का डेट है क्या? मेरे पास तो है बस 3। वाह ब्रो, ट्रोपियस पे है तो एयर स्लैश, ही इज रनिंग एयर स्लैश। अच्छा विंग अटैक बोल रहे हो, माय बट हाँ विंग अटैक 3 टर्न है, हाँ विंग अटैक 2 टर्न। वैसे वो मिलता कहाँ पे, कौन से एक से? क्या अभी तो 10k में मिल रहा है। 4 का डेट मेरा जितना चार्टेड हुआ सब 2k x से मिला मेरे को। वो जब इवेंट था तो 2 किलोमीटर एक्स में था, पर अभी सिर्फ ओनली 10 किलोमीटर एक्स में है वो, ओनली 10 किलोमीटर। भाई ये मंकी बग का टीम देखो भाई, विगली, अबोमा, अल्टारिया, वीजिंग, केसलेस, टैलेंट, गैलेरियन वीजिंग, चार्म, हेवी चार्म यूजर व्हाट, लेट्स सी क्या होता है। वो अभी स्प्रिंग कप का टीम लेकर आ गई अब। कोई नहीं भाई, इट कैन वर्क, कुछ नहीं कह सकते यार, देखते हैं, मैचअप से डिपेंड करता है ब्रो, क्या मैचअप होता है। पहले मैच शायद बंदा भी जीत जाएगा। कौन जीतेगा? ये अरे वो जो लेफ्ट साइड में लड़का है कैप वाला, पूरे साइड पे, हाँ हाँ वो जीत जाएगा। कुछ ये सारे मतलब थोड़ा स्पाइसी टीम है इधर, राइट, थोड़ा इधर स्पाइसी टीम। हाँ चीफ इज किंटू अबोमा, ये देखो भाई, गुड लीड खत्म। आईसी विंड, सी इज रनिंग आईसी विंड ना, वेदर बॉल नहीं रन कर रहे, आईसी विंड रन कर रहे, बट ट्रेड ग्रास नॉट, नो सॉरी एनर्जी बॉल, नो वेट भाई, स्टील नहीं किया, ठीक है भाई यार, एक रॉक स्लाइड तो एनीवेज ही कैन टैंक, एक रॉक स्लाइड तो को टैंक कर सकती है। क्या
the Altaria don't want to take those rock slides. You look at क्या खेल रहा है? दोनों से Wigglytuff दे and दिया all भाई the उसने। charge sorry, डबल all ना the ओबे charms are डबल going क्यों to नहीं be लिया यार? resisted. So I'm very Icy surprised, Wind but let's also see very क्या pleasantly सीन। surprised to see that energy इसके ball बाद land भी right टैंक away कर and getting लेगी अब significant तो हाँ meaningful डिबफ के damage. बाद तो Now you have to shield these icy winds. टैंक I think Pokepete is recognizing too that his Galarian उसके बाद Sunfisk is और going to be icy very wind से valuable, so he नॉकआउट does he get might his first catch Protect Shield next of the move. game, going for the rock slide. Next rock After the slide Icy might Wind catch. debuff though, this is not going to be enough to knock out the grass and ice type Abomasnow, dropping it down to the yellow, but it's not कौन that सा weak. सन Going to see है another charge second गेल fire या off any नॉर्मल? moment here. No, Here comes G-Fisk another only. Icy Wind Gym. Question for Pokepete is, does he want to invest 2 Protect Shields to I try don't and go think for switch क्या उसने भी advantage? It डबल looks से ले like दिया he भाई। does. Out comes the second Protect Shield, has a rock slide स्विच चाहिए almost शायद ready इन to go लोग। here. A little bit of an सबको overfarm lead and is चाहिए। able to now unleash this rock slide. This should be enough damage to knock out this Abomasnow. Will it provide a nice farm वैसे down देखा perhaps for जाए this तो Altaria, perhaps for this लीड जीफिस ने Wigglytuff? लीड No, विन he की है comes ना। into हाँ it. तो अब हो Will he गया be able to भाई। get to another rock slide? वॉलरेन Trying to इंटू go for the अल्टारिया farm. Does जीजी not हो get जाएगा it. भाई। Flashbacks to World एंड Championship लैंटन इंटू 2022, विगली। unable to वाह get the भाई full जीजी हो गया। हाँ unable to जी get the जी rock slide there, बोला trying था to ना। get the full ड्रैगन farm पल्स आ down. रही For है। a Sky Tech against the ड्रैगन Walrein, पल्स। in my mind, the question is, when is Interesting move. Pokeball going to switch out? Because you're taking double super effective damage from the Powder Snows and eventually the Icicle Spear as well. Okay, well, almost an immediate swap out. You did get some meaningful ये damage कैसे there with that match? Sky Attack, and now this Wigglytuff in a no-shield matchup. पर ये मैचअप is gonna लैंटन raise जीतती the है। odds, trying to लैंटन get to विन this दिस मैचअप disarming राइट place, एनीवे। and not before this Even Lantern with the is debuff, really Lantern good. can win this Very matchup, however, right? Very quick pacing, very consistent Pokemon here, and this is a relatively neutral matchup. I like the scenario for Pokepete, but how can Monkey चार्म भी fight उतना back? डैमेज नहीं होगा। Yeah, the Lantern is not a Pokemon that we talk about too much here in कि our वो तो team नहीं करेगा। previews, but it's ये definitely a मूनब्लास्ट solid वाले डार्लिंग ग्लीम backdrop that सर्वाइव so many करेगा trainers क्या? rely on. Like you हाँ pointed out, सर Jim, going इजी here for कर the देगा। disarming voice, डिसार्मिंग trying to वॉइस shut है मेरे down को the Lantern, डार्लिंग। trying to knock out with a couple more charms, Disarming. but it डिसार्मिंग won't वॉइस quite तो get the इजी job done as न्यूक another है ही surf नहीं। does come through. The question is, if you're ये Monkey Bug, can लैंटर्न you कौन से bring जेन से है? down this Lantern and then कौन Sky से? Tech the Walrein to win the game? Let's see here. Gen- We already saw Gen- this Walrein generation. go down below 50% Second HP. Gen. Here comes Gen the 2 farm down. That's step number 1. Gen Can 2 you है। get to Gen another 2। charge attack? जी No, जी। the Icicle Spear is loaded and ready to go. Just like you mentioned, this is चलो double 1-0 का super लीड है effective पीट भाई के damage पास। into this देखते हैं if flying she can come dragon back. type. Here comes the Icicle Spear and it takes हेलो down the विवेक भाई, Altaria. वेलकम टू द Game number स्ट्रीम। 1 अरे going ये to सब नूबे Pokepete कोई and मेरे his साथ नहीं Walrein. खेला ना। अरे That's a ऐसा ना lot बोले of यार damage विवेक भाई, there from सारे the बैटर्स Icicle थे यार। Spear into the Altaria. That's a matchup that we used to थोड़ा see जीजी in हो गया। previous seasons लाइक of play Pokemon. लीड विन Matchup करके that ना Walrein अलाइनमेंट is बहुत always जरूरी हो going गया to भाई। win. इजी हो गया Or I भाई। guess 99% आइसिकल of the time Walrein's going to walk out वॉलरेन there इंटू flat out अल्टारिया there with the win. You're जीजी going हो to गया need वही a भाई। lot of energy advantage on that Altaria to try and take down that Walrein. I think even 2 Sky Attacks without Dragon Breath aren't going to do it. But let's take a look at this replay here. I tried to go for that farm down, I think, was Monkey Bug, पहले but no, मतलब Pokepete एनर्जी was बॉल able to get to ये that करके last rock slide गलती and कर दिया find था। the switch advantage pacing पहले ये for the करना game. चाहिए था। Able to then get his Walrein lined up versus that Altaria. Wigglytuff did its very best to try and take PvPIV out the rest of कैसे the roster, होते but not हैं? able to get through the PvPIVs bulky water विवेक electric भाई type वो Lantern. लो अटैक और हाई I guess डिफेंस I'll और be एचपी right वाले into होते game हैं। number 2 here. Our trainers are locked अटैक in, ready उसके to go. लो होने Galarian चाहिए। Sunfisk जितना and कम Charger. अटैक Actually, होगा Pokepete running the exact same डिफेंस team. एचपी We're जितना ready to हाई game होगा number उतना 1. बल्क Monkey आपको Bug makes मिलेगा the adjustment पोकेमॉन to go के। for the Alolan Sand Slash with Shadow Claw. Okay, here comes the Ice Punch. This is ए not a स्लैश super इंटू effective G-Fist। drill run, but actually ये able to get to the तो charge attack at the same pace. क्या आइस बेट तो पंच कर सी दिया था। बेट? Coming यार from the बेट Galarian गलत कर दिया Sunfisk, क्या who उसने? actually has a charge attack priority. पहले The थ्रो कर higher दिया। attack ड्रिल अच्छा ड्रिल रन तक हाँ बिल्ड the ड्रिलर किया। तक बिल्ड नहीं किया था क्या Although the उसने? Alolan Sand ओह Slash, thank you, Speedy नहीं। G, नहीं able to किया। actually win that and go for कैसे win खेल versus रहे हैं charge लोग? attack. किसी को दे Now, देते हैं। Monkey Bug did something very interesting in game number वही 1. ना। I think recognizing that Galarian इससे Sunfisk अच्छे तो was कोई going to मैं be दिक्कत very नहीं है, खेलूंगा। एक्सपीरियंस के लिए गए होंगे Blodge यार। and ऐसे हम able भी to, जाएंगे गाइस, kind of अपन भी force the जाएंगे matchup एक्सपीरियंस के लिए ऐसे, down टेंशन into ना a लो। critical mass where then she's able to farm down जज ना Altaria. करो यार, It's पता चला अपन very भी ऐसे ही similar खेल रहे here. हैं। We already see the double protect shield क्या? on the Alolan अरे Sand भाई। Slash. She शील्ड कर recognizes that she's chipping away at her क्या? opposing Galarian Sunfisk. Maybe and she does see that they are chip just there trying in to game gain number 1. experience, So maybe ऐसा भी हो Sand सकता Slash है। might actually be a They really good just pick want to here. gain Yeah, I think she
है। actually been building her team ये रैंक मेरे को 10 तो आए लोग वही खेल लग रहा है कि Pokemon in the हाँ back लाइक that has some he strength from just in Altaria for as experience well as purpose। that Wigglytuff. Now that said, there's going to be a lot of pressure on this अब Shadow इतना Lord बोल रहे हैं Sandslash, गाइस, not पता only to चला take out सी this वोन Galarian दिस Stunfisk, मैचअप तो but also ठीक for ही that भाई। Lantern in the back as well. भाई It does have lots of इम्पॉसिबल है positive सर। matchups, and नहीं नहीं thankfully यार, we're कुछ also देखो भी ना seeing कुछ भी बैक some एंड rock इम्पॉसिबल नहीं slides है here, भाई। not building up to that earthquake. Bringing क्या a उस पे बैक relatively लेना है low अल्टारिया वो damage देखिए but इनटू shooting Shadow Claw अल्टारिया down, और will we विगली। potentially see a catch this time? No, now forcing a decision for Pokepete. Do ये you shield शील्ड up करके this भी Ice कर Punch देगा ना, and इजी win होगा। switch like last time? No, a different change, a नहीं इस change पे in क्यों direction सील this करेगा, time. वो Change in 5 direction. HP I है भाई DPS anticipate तेरे जाने पे। Lantern coming in here because the powder snows अच्छा are हम so लोगों को heavily पता है बैक एंड resisted में क्या है, by हाँ वो that तो नहीं Alolan पता। उनको Sand थोड़ी Slash पता है style. यार। Looking वी at the नो Lantern कि trying व्हाट to दे push आर some रनिंग इन sparks द here. बैक। Monkey trying to reach for the drone अरे but ड्रिल misses. She रन can't तक तो quite get जाना there. चाहिए Goes for था। the Ice Punch अच्छा नहीं जा instead. सकते। This is resisted नहीं damage, नेक्स्ट right? We've साथ got नेक्स्ट the बार water क्यों type कर देता। Lantern versus an Ice Punch coming from Alolan Sand Slash.
However, it does give Monkeybug the control of the situation. Does she decide to come in with the Wigglytuff or the Altaria? Comes in with the Wigglytuff. This could be भाई फिर से जीजी हो गया बैकलाइन इसके साथ फिर से अल्टारिया into वॉल्वरिन हो गया भाई into the Altaria matchup, which we saw how disastrous that was for Monkeybug in game number 1. So here comes दोनों सील्स डाउन है क्या नहीं वन सील्ड है ना दोनों पे अभी एक एक सील्ड ये तो सेम टीम लेकर आ गया ना फिर बस आगे हाँ पीछे इसका कर सेम टीम है अब टीम इसमें बस लीड वगैरह स्विच कर Now Pokepete is predicting the same team as game number 1. He knows that it's Altaria in the back. Comes in with the Walrein, and just like you pointed out at the end of game number 1, Jim. पर इसमें ये सिस्टम सही है यार लाइक सपोज अगर आप लूज करते हो ना मैचेस तो यू गो इनटू लोअर ब्रैकेट आप टूर्नामेंट से एलिमिनेट नहीं होते हो इनका लाइक ये अलग लाइक ये फॉर्मेट सही है वैसे है ना कैसा नहीं रैंक डाउन होता है मतलब नहीं ये है कि विनर्स ब्रैकेट और लूजर्स ब्रैकेट वैसा चलता है समझ रहे हो क्या जैसे जो जीता वो नेक्स्ट स्टेज जाएगा विनर्स में जो हारा वो लीजिए लूजर्स ब्रैकेट में शिफ्ट हो जाएगा ऐसे करके जैसे 4 मैचेस में तो 4 विनर्स निकलेंगे 4 लूजर्स निकलेंगे राइट तो वो 4 विनर्स नेक्स्ट राउंड में चल जाएंगे और जो 4 लूजर्स है वो नीचे लोअर ब्रैकेट में शिफ्ट हो जाएंगे वो फिर नेक्स्ट राउंड के लूजर से बैटल करेंगे वो ऐसा लाइक है वो सिस्टम है उनमें से जो जीतेगा वो फिर से आएगा नहीं वो फिर लोअर ब्रैकेट चलता रहेगा जैसे ऊपर से विनर्स में भी तो लूजर होते जाएंगे हर एक राउंड में राइट जैसे राउंड 1 के लूजर्स एक साथ बैटल कर रहे हैं फिर राउंड 2 के लूजर्स जो राउंड 1 का लूजर के विनर है उससे बैटल करेगा इट्स लाइक दैट तो सिस्टम है पूरा भाई ये सही है मतलब सबको 2-2 चांस मिलेंगे ये मान के चलो अगर आप कहीं पे भी मान लो अगर थोड़ा लेफ्ट राइट कर देते हो तो आपके पास एक मौका है कि आप लूजर्स ब्रैकेट में आके भी ऊपर आ सकते हो अभी तो स्टार्टिंग मैचेस है आज तो डे 1 है वो थोड़ी पता चलेगा अमित भाई यार वो थोड़ी पता चलेगा यार जैसे खेल रहा था मुझे लगा कि कम ही लोग का बंदा मे बी न्यू प्लेयर होंगे हो सकते हैं न्यू प्लेयर है कोई मेरे को उसके रिएक्शन से ही लगा कि लाइक ही वाज हियर जस्ट फॉर यू नो एक्सपीरियंस पर्पस से ठीक है ही वाज लुकिंग टू समवन जैसे ही उसने अटैक वगैरह किया वो कुछ ना किसी को तो देख रहे थे वो जब भी कुछ अटैक वगैरह हो रहा है तो मे कुछ सीन होगा क्या होता है यार अभी हो सकता है फर्स्ट टाइम आया होगा फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट हो रहा होगा कोई बड़ी बात नहीं है भाई ऊपर से टेलीकास्ट हो रहा है भाई तो सब नर्वस होता है भाई उधर लाइव ऑडियंस भी अलग होगी भाई ऑनलाइन अलग ऑडियंस देख रही है लाइव ऑडियंस अलग होगी लाइव एक्सपीरियंस लेने गए वो हो सकता है बिल्कुल कोई बड़ी बात ये हो कहाँ पर रहा है वैनकूवर में हो रहा है एक रीजनल चैंपियन इसके बाद और बचा है उसके बाद शायद इंडिया में होगा एशिया क्वालिफायर होगा उसके बाद फिर चैंपियनशिप होनोलुलु में है वर्ल्ड चैंपियनशिप होनोलुलु इंडिया में हो तो जा सकते हैं ना इंडिया में ऑनलाइन ही होता है अमित भाई आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है डिस्कॉर्ड में देखो चैट सेक्शन जो है ना जनरल चैट उसमें टीम भाई ने लिंक पोस्ट कर दिया है वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हो अप्रैल 6 से स्टार्ट है राउंड 1 हाँ ये रहा आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है तो पूरा रजिस्टर कर लो इसके लिए ये चाहिए अच्छा से एक मतलब टीम चाहिए होगा तो इधर से आइडिया लो ना जो टीम्स वगैरह यूज हो रही है जो अभी ये बताएंगे ना पूरा स्टैट्स को डिस्क्लोज करते हैं कि कौन सा पोकेमॉन ज्यादा यूज हुए हैं रीजनल्स वगैरह में नहीं उस नहीं मेरे पास तो आधा ही मतलब ये पोकेमॉन नहीं है जो पीवीपी वाला पोकेमॉन नहीं है मतलब उसका अच्छा वाला आईवी जैसे हाँ पीवीपी आईवी तो चाहिए होंगे वही ना मेरे पास हंडो भरा पड़ा है बट पीवीपी आईवी नहीं है एक्सपीरियंस लेना हो तो ले सकते हो कोई बड़ी बात नहीं ये कर सकते can give you a good confidence boost going अरे into ना the बाकी लोग ही rest of जीत the जाएंगे tournament. क्या A little bit more about your team that बाकी you लोग क्या today. बाकी You लोग said क्या you have Tropius on your team, but didn't bring it to this हाँ first चलेगा एक फ्री विन हमें दे देना अमित भाई हमारे से मैचअप होके नहीं उस समय में जीत जाएंगे कोई इशू नहीं हाँ भाई हल्का में ले रहे हो क्या अमित भाई हल्के में ले रहे हो क्या Alright, what about some of the other Pokemon on your team? What kind of led to some of those decisions? Just all things that kind of go around Tropius and like what kind of
यार दोनों मैचेस अभी जो हुए उसमें इन्होंने लाइक टीम चेंज नहीं की, राइट? जो विनर्स है उसने टीम चेंज ही नहीं किया, उन्होंने दोनों मैचेस में सेम टीम रखे थे। हाँ हाँ सेम टीम रखा था, और पहले भी जो मतलब ये सीक्वेंस वाइज भी सेम ही रखा था। इसने सेकंड मैच में चेंज किया था, लीड जीसिस कर दिया था। मेरे को वो देखना है लास्ट ईयर का विनर आएगा कि नहीं आएगा। आना तो चाहिए गई था ना, लास्ट ईयर का जो विनर था। This would also come again, right? लास्ट ईयर का विनर ये था एडी गुआन फ्रॉम कनाडा। इसमें ये ब्रैंडन टन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते क्या? ब्रैंडन टन नहीं करता, वो पीवीपी नहीं है, राइट? वो तो ग्राइंडर है, ही ग्राइंड। कलमन टोस्ट और ये लोग हेलो सैम भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। करके 4 रन से हार गए सारे। क्या सिर्फ 4 रन से हारी? अबे मेरे को लगा 200 मारा है केकेआर, 20-30 रन से जीतेगी भाई। केकेआर हार गया? केकेआर जीता भाई, हेलो 4 रन से जीता तो। सैम भाई आप किसको सपोर्ट कर रहे थे, हैदराबाद को क्या? हम तो केकेआर सपोर्टर हैं भाई। मैं तो हैदराबाद। हैदराबाद घर गया आज, घर। केकेआर जाएगी होटल में पार्टी करेगी आज। भाई रासेल ने बहुत मारा। रासेल मैं बैटिंग देखने, मैं कल हाईलाइट देखूंगा, कल इजी हाईलाइट देखेंगे मजे से। इस तरफ क्लासन ने भी बहुत मारा। हाँ मैं देखा था अभी स्कोरबोर्ड, क्लासन ही तो एंड तक टिका हुआ था, राइट? उसने ही मारा होगा भाई, तभी ये मैच इतना क्लोज गया है, वरना नहीं होता। भाई 25 में 64 रासेल। क्या क्या क्या? 25 में 64 रासेल। रासेल इस सीजन कमाल करेगा क्या, देखते हैं यार। पर उसकी वो है यार, रासेल इज लाइक वो, मतलब उसका वो गारंटी नहीं है भाई, वो किस मैच में चलेगा किस मैच में नहीं चलेगा, गारंटी नहीं है भाई उसका। दिक्कत वो है भाई। अगर चलता है भाई तो बहुत चलता है, नहीं चलता है तो भाई खुशी हो जाता है फिर तो भाई। और आपका फेवरेट उसका नाम क्या है? दादा सौरव गांगुली। वो तो थोड़ी आज जाते आते उसका घर भी पहुंच पड़ता है। इसको जानते हो क्या आप लोग, ये जो लेफ्ट में है? डू यू नो दिस गाय? लेफ्ट में जो है, लेफ्ट में किसका लेफ्ट मतलब ओरिजिनल जो बैठा है हमारे उसका लिए लेफ्ट ही या नहीं, हमारा ही जो अपन देख रहे हैं लेफ्ट में। ये नहीं, अभी तो कास्टर्स चले गए। किंग लुकिया वर्सेस रोशा बेबी फेस। मैंडिबस आ गया। टीन भाई आपका मैंडिबस आ गया है। वैसे आप लोगों का फेवरेट पोकेमॉन कौन सा है? फेवरेट किस सेंस में पूछ रहे हो, उस पर डिपेंड करता है किस सेंस में पूछ रहे हो आप। मतलब ओवरऑल ऑलराउंडर। हाँ ओवरऑल सब में। हमारा तो सभी को पता है यार, रेक वाज और ये भाई। हेलो कुबेर भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। ये बल अपन उसको ये वाइट नॉर्मल पोकेमॉन है। नॉर्मल पोकेमॉन में लैंटर्न हमारा फेवरेट है भाई। लैंटर्न एज ग्रेनिंजा सबसे अच्छा एस ग्रेनिंजा भाई। ये देखो ये पूरी मेटा टीम लेके आए हैं ये ब्रदर। रेजी, लिकी, शैडो विस्कस, विस्कस छोड़ के सब रेस और मैंडिबस। भाई हैवी मेटा भाई, हैवी बल्कि टीम और व्हाट बल्कि है विस्कस को छोड़ के सब बल्कि। ये भाई पूरा एकदम टूर्नामेंट जीतने के मूड से है। ये मैच अच्छा होगा हमें लग रहा है, देखते हैं। इधर भी कम पोकेमॉन चैंपियंस वर्ल्ड और कॉन्टिनेंटल कौन सा? ये रीजनल्स है कुबेर भाई, रीजनल्स है ये, वर्ल्ड अभी नहीं है। अभी रीजनल्स हो रहे हैं, जब सारे रीजनल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो जो क्वालिफाई करेंगे वो वर्ल्ड्स में जाएंगे। शारजा, एजू, टैलन, लिकी, इसके पास भी अच्छी टीम तो अच्छी है भाई, दोनों टीम सही टीम है। आइडियाज ले लो गाइस, टीम आइडियाज और व्हाट। हाँ ये अच्छा मैच होगा, मेरे को फीलिंग आ रही है ये मैच थोड़ा अच्छा होगा यार। बढ़िया खेला भाई कला से। कोई नहीं सैम भाई, एक टीम जीतती है एक टीम हारती है, कोई बात। केकेआर विन टुडे मैच इन आईपीएल। हाँ कुबेर भाई, सैम भाई ने बताया हमें।
resists all of its fast and charge attacks would be a devastating matchup there. We're going to move into these battles here, guys. We've got Rocha Babyface versus King Lugia. Here we go, game number 1. Oh, tough lead here for Rocha Babyface on the left. ओ भाई बैड लीड मिल गई भाई से स्वैप करना पड़ेगा इंस्टेंट लेकिन इनटू लिकी मैचअप अब देखो क्या होता है बहुत बोरिंग मैचअप होता है भाई अग्री ब्रो आई अग्री Azu bastard on to bastard भाई सच्ची बोला यार आई अग्री अच्छा रीजंस है वैंकूवर है ये वैंकूवर चल रहा है अभी he needs to maintain switch इसको switch जितना पड़ेगा ना रोचा बेबी भाई को वरना तो फिर जीजी हो जाएगा and this could be challenging to maintain switch advantage. I'm going to caveat your caveat, right? Because Rocha Babyface switched so quickly that the volt switch इसके बाद इसके ऐसा ना so in that sense King Lugia has a damage advantage नहीं on पर the opposing Mandiver maybe a into couple licks down but that Charger volt switch could be a big जीजी हो difference जाएगा maker. Let's see what's going to be more impactful. Will it be that volt switch damage, the HP advantage, or will it be the energy advantage in getting to that last body slam? देखा जाए तो उसको Shadow Viscas he is the main Pokemon now for him, right? This body slam from King Lugia's Lickitung, there may be some room but वो Shadow है ना डैमेज भी देगा ना heavy damage from Rocha Babyface. Important distinction to note as well is that Rocha Babyface's Lickitung did win the charge attack priority tie. So if these two Lickitungs align their body slams again, his will go first no matter what. We're going to see a body slam from King Lugia connect and almost equalize out the situation here for the two Lickitungs. But the switch and the pivot, here comes Shiny Gligar into the Lickitung matchup. Yeah, you know that Rocha Babyface really wants to realign this Whiscash into that charge bug rather than that Mandibuzz. So actually, in comes the Mandibuzz right now. Since King Lugia is hard locked, Rocha Babyface has no problem also hard locking his Mandibuzz. उसने क्यों pivot दे दी इसको? Get some good value here. Those digs are going to do absolutely nothing into this Mandibuzz, so you have to rely on these aerial aces, which are a little bit of a less efficient move when it comes to damage per energy. रोज जीत जाएगा ये वाला Snarl बहुत underrated अबे नहीं कह सकते ये क्लोज मैचअप होगा तो गमुट लगता है क्योंकि चार्जर के अगेंस्ट ये लेकर आ जाएगा विस्कस एक्स इधर भी करता है थोड़ा डैमेज हाँ वो शैडो भी है ना शैडो भी है वो KKR है तैयार KKR fans be like I am KKR fans like King will lose देखते हैं कुबेर भाई क्या होता है ये मैच अच्छा मैच है एक किंग गैम्बिट आने वाला है क्या फ्यूचर में रिसेंटली क्या है किंग गैम्बिट क्या है वो I have no idea पोनियार्ड का इवोल्यूशन मतलब बिशार्ड का इवोल्यूशन अच्छा वो पता नहीं कह सकते अभी मैं मैगी खा रहा हूँ खाओगे भेजो सैम भाई पार्सल करो मैगी अरे कौन खा रहा है मैगी अल्ट्रा भाई के सामने मैगी क्यों बोला आपने यार नहीं मिला यार सही अटैक डिबा यार वैसा सीन है ना कि जब नीड होती है ना तब नहीं मिलता है भाई नहीं शील्ड का एडवांटेज है इसके पास कर सकता है King has one shield right हाँ तो they can still win they have one shield though रोज के पास अभी भी एक है इजी हो सकता है पर दोनों बहुत लो HP हैं भाई लिकी और ग्लाइगर दोनों के King has shield King के पास अच्छा रोज के पास शील्ड है किंग पे नो शील्ड है सब तो डिफिकल्ट मेरे को लगा किंग पे शील्ड था माय बैड and then you're only having to take these aerial aces. In fact, you only need to get to your own aerial ace as Rocha Babyface, and it's going to be very challenging for that Lickitung on King Lugia's side to lick all the way down and try and sweep this matchup. Rocha throws immediately because the neutral wing attacks are going to do more damage than the resisted licks, and that's very clever because that allows him to gear up for another aerial ace. King Lugia recognizes that, so he throws the body slam to try to interrupt that cycle and get the knockout, which
which he will, but Rocha Babyface is just kind of playing this out, right? He's being very patient, comes in with the Whiscash to tie this up. That's right. Timer You just आ need गया one भाई charge attack. GG. Anything will do at this point. Don't need to go for the skull. Here comes the mud bomb, and Rocha Babyface, despite a आप लोगों के पास शाइनी ग्लाइगर है क्या? into the charge bug, able to actually नहीं मेरे पे win तो a नहीं switch है। हाँ साइनी है नॉर्मल साइनी है शैडो नहीं है। game number 1. Mandibuzz looked very नॉर्मल strong शाइनी there मेरे पास despite भी a है tough lead. भाई बैड लीड किसे थी? उसे ही थी ना, किंग बाई कोई थी ना बैड लीड? चार्जा इनटू मैंडी। रोज बेबी को था। नहीं रोज बेबी को थोड़ी था। अच्छा रोज बेबी को था क्या? हाँ मैंडी इनटू चार्जा, करेक्ट। ओ भाई अरे बट ही लाइक मिड गेम में उसने पिवट कर लिया राइट, उसने इसको वापस अलाइनमेंट खुद ही दे दी उसने ग्लाइगर स्विच किया और फिर इसने अपना वो ले आया मैंडी बज। If we see just maybe like a if we see that same matchups in अल्ट्रा कौन है? अल्ट्रा भाई चैनल के हमारे हैं भाई, चैनल सपोर्ट अल्ट्रा गुस्सा करते हैं। Lickitung from Rocha Babyface gets to its own body slam. चैट में है तो श्याम भाई हमारे हैवी मॉडरेटर। आई टोल्ड यू कोई नहीं, अभी तो एक ही मैच हुआ यार, बेस्ट ऑफ 3 है कुबेर भाई, ही कैन स्टिल कम बैक ब्रो। क्या पता नेक्स्ट 2 मैच किंग जीत जाए, यू नेवर नो। अभी तो सिर्फ एक ही मैच हुआ है। Really just needs to avoid that Lickitung, which it was able to do. We're not going to wait around here though. We're going to move right into game number 2. We're seeing the return of the Mandibuzz, this time versus the Whiscash on King Lugia's team. क्या न्यूट्रल मैचअप क्या सीन है? ऐसे खराब लीड नहीं है वैसे। न्यूट्रल मैचअप मुझे ये इंसान या एलियन पूछ रहा है ये। अरे इंसान ही है सायम भाई, एलियन कैसे आएगा यहाँ पे? अरे एलियन जैसे आप इंसान हो वैसे हम इंसान हैं भाई। उसने कौन सा पोकेमॉन स्विच किया? ग्लाइगर के बदले ही चेंज इट टू विस्कैश। विस्कस और इस तरफ चर्चा और लिकिटंग भाई ये देखने वाला मैच होगा। इसने फिर पिवट किया क्या? है ना? Despite having your Mandibuzz a bit weakened from its attack, this is really the best matchup you're going to have versus Lickitung. In a lot of situations, when your opponent stays in an unfavorable matchup, it means they have a double or even triple weakness to your lead Pokemon. But I didn't get that sense in this lead situation, right? Whiscash versus Mandibuzz is very neutral. King Lugia making the pivot into Lickitung, maybe trying to lure something out, but he doesn't get anything. Instead, he just gets continued to be hard-walled by the Mandibuzz. Fast energy generate करता है वैसे इसमें। Well, I debuffed your attack. You don't want to stay in this matchup anymore now, do you? So maybe forcing a swap out to then realign that charge दोनों ही versus the Mandibuzz. बहुत ज़्यादा बल्की है। दोनों टीम बल्की है यार। Recognizing a good matchup is a good matchup, and I am going to leverage that good matchup, getting tons of value here from this Mandibuzz, already taking the Whiscash. बैंडी लोग यूज करते हैं वैसे अल्ट्रा लीग में भी है ना? And now is going to be bringing down this Lickitung very नहीं देखा अल्ट्रा लीग में तो नहीं देखा। मैं देख रहा हूँ लोग लैंटर्न यूज कर रहे हैं भाई अल्ट्रा लीग में। लैंटर्न भाई, एवरीबॉडी इज यूजिंग लैंटर्न इन अल्ट्रा लीग, क्या सीन चल रहा है भाई? मैंने बिल्ड किया है। सही है यार। नहीं मेरे को लगा था एलियन हो, कुछ भी था यार भाई। नाइस जोक। हेलो राकेश भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, व्हाट्स अप? Feels like it may be another timeout game brewing right here in Vancouver. But yeah, we have the Lickitung versus Lickitung. I think for our 6th consecutive game now at this point, we're seeing this mirror match. यार लिकिटंग ऑलमोस्ट सभी में था ना? क्यों की टीम में लिकिटंग था ना? Now you mentioned switch. सब में लिकिटंग। एवरीबॉडी हैज लिकिटंग। मैं बोला ना लिकिटंग क्रिसिलिया भाई होंगे ही होंगे भाई, मान के चलो। इंडियन रिजल्ट में भी भाई भाड़े पड़ेंगे भाई ये। करो बनाओ बिल्ड करो। Now seeing all 3 of the Pokemon here available for King Lugia, this actually gives Roach Babyface an additional degree of control because he can throw his body slams, he can play this matchup out, but he can just. मेरे पास एक लिकिटंग था जो जिसका अटैक था 2, 10, 15। मैंने उसका फुल ये किया, मतलब उसको मैक्स आउट किया, देखा कि 1300 तक भी नहीं जा रहा। नहीं उसका शायद 5 से ऊपर अटैक है कुछ। शिवान भाई ने बताया था 8 वगैरह कुछ है ना? हाँ 8 14 15 हाँ वैसा कुछ है। मतलब
5 से ऊपर मान के If we चलो, swap अगर out आपको this ग्रेट matchup लीग here as well, आईवीज no में जानी है protections तो remaining for 5 से ऊपर ही Team अटैक Lugia. Do चाहिए we होगा। see this Lickitung go down? Yes, it does. मेरे 7 So it पास is now रैंक 3 to नहीं 2 है ना। Pokemon for रैंक Team 1 Lugia. Is Switch Clock लेवल right up? 51 पे Oh, होता we है वो, actually have a catch Oh. here, रैंक 1 catching the Bro, he X-Seed caught nice catch. nice Roach catch पे। Babyface needs to keep in mind though the timer on this game. He's now let 2 of his Pokemon faint. He only has 1 remaining. While he can sweep, there may be a Catch सही था बे, situation where sexy he's catch actually able to win 2-1. Yeah, exactly. Roach Babyface needs to go bowling here and knock some of these pins down. He gets the knockout onto Lickitung, but he's got 2 more to pace through. Oh, doesn't even wait the switch timer. Could have waited the switch timer there to play for that timeout. GG हो गया I think यार। Goes for the mud bomb Cannot win now, immediately right? into the opposing Whiscash. There King were by 8 seconds still on the clock that he could रोज have जीत waited. They जाएगा were या closer and कौन closer to जीतेगा? that timeout. He does have Shadow energy to किसके continue पास? stalling the switch अच्छा। clock रोज here, भाई but पे there are still Shadow है। protect shields on the side हाँ, of रोज Roach जीत जाएगा Babyface. सर। Used one, Ox used another here as well. दो He shield needs है। desperately to remove this Whiscash catch in the field. Timer's coming भाई out. अटैक Will डिवाइड this ओ mud bomb भाई be enough? यहाँ I don't think we saw टाइमर a भी tag है। fall there, so I'm hoping that from this Shadow Whiscash, this पर will ये be तो enough दिसल to do it. KO दिस Whiscash Whiscash, Jet- ये तो We KO may कर run into देगा। the timer for a second consecutive हाँ। game. In तो comes the easy। charge by Whiscash Scott. Gen 2 से या He 3 से? does get अरे knocked down 1 with सेकंड 1 लास्ट second सेकंड तक गया। left on the clock. Roach Babyface plays for the timeout advantage. Whiscash but he कौन से takes the जन से lead यार in मेरा कौन से नहीं जन of that. नहीं पता I mean, भाई, most किसी को players पता है तो direct that बताओ game who यार। chose the ladder. Yeah, क्या? absolutely. Roach दूसरा Babyface होगा। getting a 2-0 Whiscash victory. कौन से It's जनरेशन Roach से है? कौन से जन है वो? Babyface. You're running that team of 6. All of your Whiscash games दूसरा are होगा। going to be पता close नहीं। थर्ड जन है, to that time थर्ड there. जनरेशन So, से। congratulations to Roach King will lose, Babyface I again, think world so. traveler Yeah, here in 2-0 Vancouver, कोई showed बात a नहीं। very dominant बट 2-0 मैचेस victory. अच्छे थे, You gotta अच्छा love what मैच you're था ये। seeing here. Despite having a rough lead in game लास्ट number में 1, मुझे able कैच to वो चाहिए। कैच out सही and था भाई, take क्या good कैच lead in किया game number 2. Recognize when a good matchup is a good matchup. कैचेस विन मैचेस इसलिए कहा गया है ना। I don't know about you, Jim, but it's the reason I Whiscash don't अच्छा है क्या? Umbreon if I do a cup भाई challenge. विस्कैस I don't गॉड play है अभी Pokemon, I ग्रेट don't लीग में play भाई, those Pokemon, अच्छा है they're पूछ so रहे हो आप। bulky. I just don't have the बहुत patience. अच्छा, I get बहुत so अच्छा। antsy. कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया है। That's right. Well, let's take a look Dash at our type सामने replay ला रहे हैं from तो सही है। game 1. Shadow We'll Whiscash start is off with- much we took a look better. at that Shadow Whiscash up अभी against क्रिसलिया that आ रही है ना। मैंने कभी क्या नहीं है ना। केकेआर हार गई, झूठ बोल रहे हो राका भाई, हमें पता है केकेआर जीत चुकी है। बेबी हार गया, बेबी जीता भाई, 2-0 बेबी वोन। I tell you again, कोई क्यों भाई, अभी तो स्टार्टिंग है यार, आज तो डे 1 है। अभी तो स्टार्टिंग मैचअप से भाई, मैचेस अभी और इंटरेस्टिंग होंगे। ये लोग अल्ट्रा लीग में टूर्नामेंट करते हैं। पता नहीं, अरे क्योंकि वो अल्ट्रा लीग में कुछ एक्सेल वगैरह का सीन हो जाता है ना यार, वो सारे मतलब करना मुश्किल है भाई। क्या करना? शेडो मास्टर कैसा है? एक मिनट, इवान भाई क्या बोले? कह रहा हूँ यूएल के लिए बिल्ड करना मुश्किल है हाँ ना, वही, एक्सेल कुछ वाले। पोकेमॉन एक्सेल वाले हैं ना, तो वही सीन है। एक्सेल उतना इजी एक्सेसिबल नहीं है। आप क्या बोल रहे थे अल्ट्रा भाई? शेडो मास्टर कैसा है? शैडो मास्टॉम नहीं यार, उससे बड़ा तो शैडो स्वॉम्पर्ट है। शैडो स्वॉम्पर्ट एवोल्यूशन है। हाँ भाई, कोई थीम कप में अच्छा है, लाइक नॉट इन ओपन ग्रेट लीग। ओपन ग्रेट लीग में नहीं, ओपन ग्रेट लीग में तो शैडो स्वॉम्पर्ट। when he needs to. You look at Lyle Jeffs being very consistent. You look at Yakobrovich, right, in the APAC region, playing very defensively, bringing the same Pokemon over and over, and just kind of beating his opponent down over time. 3 विकेट से हार गई केकेआर। राका भाई हमें पता है, सैम भाई ने बता दिया कि 4 रन से जीत गई है केकेआर। And even you look at Inadequates, right, over in Europe, bringing his Giratina, but bolstering it with his Wigglytuff and Vigoroth combination. There's so much variety across the world for Pokemon Go. I agree, 100%. And it's interesting, we haven't seen too much of that variety so far here in कोई तो Vancouver. चला ड्रॉप गया। किए क्या? Something that I would like to see more of. We saw a lot of Lickitung there, but one of the Data interesting खत्म Pokemon हो for me गया। was Mandibuzz. Let's actually find out a little bit more from Rocha Team by Babyface. team by We're गए going हैं। to turn it over to Alpha Phoebe with Rocha Babyface. मैं अभी भी जिंदा हूँ। अच्छा, हमको लगा आपका डेटा गया भाई। आजा भाई, देखे बेबी भाई क्या बोल रहे हैं इंटरव्यू में। Along with a bunch of teammates came up from Mexico. Talk to me a little bit about how this journey has been for you up into Vancouver with so many of your friends. Yeah, well, honestly, it's a very long journey, and also it's very, very cold, and I'm not a cold person, but it's a really good city, and the venue and the कुछ energy गिवअवे is वगैरह really करते nice. हैं क्या ये ऑन स्ट्रीम पे? Normal कुछ takes कोड्स have वगैरह been देते हैं क्या the ये? focus of the past few months in Pokemon देना Go. चाहिए You have यार, one on your और team, इंटरेस्टिंग Lickitung. होगा। You have one right here in your hands, Wigglytuff. Talk to ऐसा us about क्या? your choice हाँ of भाई। normal type for your team. ए Yeah, वाटर I was ड्रिंक running बियर, a वाह different भाई। team yesterday at the challenge, आइडिया तो है भाई। I ठीक है got भाई। into some troublesome matches, and I think Lickitung is just the safest mon, honestly. ये Just water take it drink out, beer, Vigoroth nice. out of the way, and it's good to go. And we just saw इसकी in बात पे Europe अपन ने पानी पी लिया है। Inadequates राको भाई, with ठीक है? a
Giratina on his team, even in the face of so many Lickitungs in the meta. Why do you think he was able यार to do so लिकेटिंग तो well with हैवी that, है, given एवरीबॉडी इज that यूजिंग Lickitung लिकेटिंग, is such हर a कोई यूज strong, कर रहा है. powerful Pokemon? Yeah, for sure. Inadequate is a really, really strong player, and I also had a Giratina yesterday at the challenge. But maybe I lack the knowledge of using it. Maybe the shield scenario, the 1-2. कोई And I एनाइलेट क्यों think नहीं यूज Inadequate कर did रहा? great because of वो he भी तो played अच्छा है. really well around it. अरे And the other क्रिसेलिया 5 का राइज हो Pokemon गया ना did वो. really good against Lickitung. So he just फ्लाइगर really भी the बहुत knowledge of ज्यादा है the तो game. एनाइलेट कैसे यूज And करेगा? as we फ्लाइगर wrap इज up, लाइक I know, of course, स्टिल the friends that you traveled with, वेरी you'd like ओपी. to shout them out. Anyone else that back at लैंटन home, भी हाँ, हैवी but है देखा ना, तो maybe some other people in the एनाइलेट crowd का you थोड़ा are सीन हो not जाता है. participating that you'd like to shout out. Yeah, I want to shout out Nico. He's a friend of mine. Poncho. वैसे नहीं, कल नहीं, किसको बैन सपोर्ट कर रहे हो? वो बैन है the क्या? chat that always क्या? gives me company on my streams. Alright, पोकेमोन को great भी to बैन hear. है क्या Good luck in the ग्लाइस्कोर? rest of your journey here. नहीं ऐसा And कुछ नहीं है, पर obviously ग्लाइस्कोर you're a very इज नॉट well-talented यूजफुल. player. ग्लाइगर Let's इज go मोर ahead यूजफुल and listen to some other journey इन ग्रेट लीग. aspects from another talented player, Duma. कल किसका मैच है रखा भाई? मैच ग्लाइगर किसका है ये तो बताओ. आई हैव नो आइडिया कि कल किसका मैच है. आई एम कमिंग इन DC टू, आई एम इन योर सर्वर. कुबेर भाई आ जाओ DC पे, थोड़ा सा बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. VC रूम 1 में आओ, मैं आपको एक्सेस देता हूँ. VC रूम 1 पे आओ. क्या नाम है आपका? नेम क्या है? ग्लाइस्कोर. कुबेर भाई व्हाट इज योर नेम ऑन डिस्कॉर्ड? आपका नेम बताओ. I'll give you permission. I've just gotten to love the game and love the Pokemon series. It's just been a really fun learning experience, and the community is great. It's just fun competition. Who is he? Champion है क्या ये? Champion था क्या? अच्छा डूनबर्ग. ओके. ये I have बहुत a फेमस sports background. I'm a competitive person by heart, so it was pretty easy transition to competitive play. My favorite moment was मैं probably winning पोकेमोन Arlington में last लेके year. गया The था term before that, ग्लाइस्कोर I को, came off being फिर the पता first चला वो selected तो in the बैन है. losers finals, which was very नहीं heartbreaking. इधर बैन वन heading का to a सीन नहीं है, बट tournament, इट इज नॉट and दैट then I was able यूजफुल. to come back and win Arlington. Felt like such a big step for me. ग्लाइस्कोर पोकेमोन हिस्ट्री में सबसे ब्रोकन है ग्लाइस्कोर. He's a really good friend of mine. क्यों ऐसा उसका क्यों? वो एबिलिटी है ना, पॉइजन हील. पॉइजन हील, पॉइजन हील ग्लाइस्कोर को आप मार ही नहीं सकते, वो इमोर्टल है. उसको बस वो टॉक्सिक ऑर्ब दे दो, वो खुद ब खुद पॉइजन हो जाएगा. डैमेज लेगा वापस हील करेगा, डैमेज लेगा वापस हील करेगा. मतलब अनलिमिटेड रीजन, हेल्थ रीजन, और मूव सेट भी सबसे ओपी है उसका. वैसा पोगो में अवेलेबल नहीं है ना इसीलिए. दैट इज व्हाई इट इज ओके इन वो पोगो. बग, फ्लाइंग, फाइटिंग, ग्राउंड, रॉक, बहुत बड़ा. टाइपिंग तो यूनिक है और उसका अब तो वैसे. And I'll be recapping the 2024 अब तो उसका वो Pokemon Go आइस regional का वीकनेस भी खत्म हो गया. championships अब तो in टेरेस्ट्रलाइजिंग आ गया है ना. Over 120 अगर आपके पास trainers ग्लाइस्कोर converged at the gateway to the वाटर है ना, Mountains, वाटर excited टेरेस्ट्रलाइजिंग, weekend of battles, वो वाला, proving that win conditions तो can be found टेरेस्ट्रलाइज कर लो. anywhere, आपका even ग्लाइस्कोर in the आइस deepest से of valleys. वीक ही नहीं रहेगा, The top performing क्योंकि वो team तो for the अब past two वाटर NA टाइप हो regionals गया fell ना. short as Shadow Gligar and Shadow वो Whiscash VGC में made ना, outsized पर यहाँ तो comebacks. ऐसा स्किन नहीं है राइट. On हाँ, Championship Sunday, Rockhaven 703 was sent to इसीलिए the बैन कर losers दिया उसे. bracket by Doonbug and his double boosted आई एम इन योर Annihilator. सर्वर. आई एम नोवा. नोवा. अरे दूसरे इसमें मतलब वॉइस में बैठ गया. वो कॉम्स में. हाँ वो ओपन टू ऑल है. नोवा आपको दे दिया एक्सेस. रूम 1 में आ जाओ कुबेर भाई, आ जाओ रूम 1 में. यार आपको दिया है किसी और को दिया? मैंने किसी और को दे दिया परमिशन पे. ये नोवा कोई और है. डार्क नोवा हो आप? पूरा नाम बताया करो यार. डार्क नोवा. आ जाओ रूम 1 में आ जाओ आप. This set the stage for a rematch between Doombug 97 and Magic Mason in the grand finals. Doombug proved Hello. unstoppable हेलो, as he swept the क्या finals, हालचाल कुबेर finishing भाई? 18-1 and making हेलो भाई, history क्या as the हालचाल? first बस local बढ़िया. एमआई Pokemon वर्सेस champion जीटी, to आरआर achieve वर्सेस एलएसजी. एमआई वर्सेस championships जीटी in एमआई the चाहिए same अपने को. आरआर वर्सेस एलएसजी कोई भी जीते, आई डोंट केयर. आके भाई The road to worlds is paved सबसे बढ़िया with एबिलिटी thrilling कौन से victories पोकेमोन and का है? memorable लेजेंडरी defeats. में. Begin your own championship लेजेंडरी में journey by सबसे बढ़िया visiting एबिलिटी. Pokemon.com/compete. आरसीएस के पास है सारे, मतलब अटैक के को ये कर सकते हैं. आरसीएस तो ब्रोकन पोकेमोन है न्यूट्रलाइज कर भाई. सकते हैं. आरसीएस तो ब्रोकन है. ये अभिनव भाई ये इंडिया से हैं क्या? अभिनव भाई इंडिया से हैं क्या?
I'd been into Pokemon my whole life, but I never actually picked up Pokemon Go. I picked it up 2 years after everyone else. And of course, we've got Abby enough at वो the top there, एसयू the का सबसे regional तगड़ा वाला जो Starter, I picked in एवोल्यूशन the है first उसके Pokemon game I ऊपर played, जो Pokemon उसका Platinum, जो है वो ड्रैगन Torterra. पल्स Such a cool वो सबसे Pokemon, जल्दी very आता है design, तो वो बढ़िया best होता है grass type, and overlooked Pokemon. ड्रैगन Yeah, I पल्स love Torterra. चार्ज सब तो जल्दी होता है For a बात long time I was hesitant. हाँ Like, उसका should I चार्ज take part जल्दी in होता है उस PvP? पे जो Am I एसयू good का सबसे enough? टॉप Am I वो है cool वर्जन enough? मैं नाम भूल रहा हूँ उसका Going to tournaments with like fellow Chicago ऐसे तो नहीं locals, कह नाम सकते क्या यार था बहुत सारे battling in पोकेमॉन हो person, सकते हैं यार bonding, अरे talking, नहीं having a नहीं good time. मतलब अभी तक जो I मैंने remember ड्रैगन being का इस्तेमाल very किए हैं difficult for उसमें those सबसे tournaments जल्दी back उस पे then. होता है And I will always remember that my first big ऐसे tournament तो win, मुश्किल हो sitting in my dorm room in the middle आरसीएस of COVID, no मिथिकल one है around me. Yeah, I told myself, if मिथिकल I है can win आरसीएस this tournament, बहुत लोगों को नहीं I can पता पर surely do मिथिकल है bigger and better things. He competed in हाँ Indianapolis mythical in the यार North थी American ओह International Championships. तो लेजेंडरी वो पूछ रहे फिर हो An India qualifier as well, getting 9th place in that. या विनय भाई इंडिया से आरसीएस लग वो रहे हैं गाइस ये हमें इंडिया से लग रहे हैं 2024, the year of और मतलब Optimus वहाँ रह रहे देख होंगे वो ये इंडिया के ही लग हाँ रहे हैं मतलब वहाँ पे रह रहे होंगे वो नाम बॉर्न इंडियन इन है इंडिया नाम इंडियन है हाँ नाम तो नाम इंडियन है इंडियन है पूरा Now that I've done it, I बस have तो to kind of recalibrate my goals for the rest of the हिंदुस्तानी season, I है guess. इन्हें क्या रीजनल चैंपियन बने थे क्या ये भी अभिनव Portland भाई definitely किसी is, रीजनल you know, चैंपियन No बने idea. क्या notch in my belt, but बता रहे हैं तो a कुछ lot तो of हैवी box किया होगा checking, इन्होंने you know, ये wanted to एचएसएच चाहिए तो होम हाँ स्लाइस हेनरी था ना Chicago, हाँ वही था wanted to qualify for Worlds. हाँ कौन कौन हाँ I ये feel था like I ना proved होम स्लैश not just to the world but to myself that this is something that I'm really good at and that I should continue doing because I'm one तो of the देखते world's हैं ये best. क्या करता है So it's really all on the line here. क्या Whoever भाई wins this कुबेर भाई series is going मैं to बोलता go है to the चलो World भाई देखते हैं हम क्या Championships. करते हैं ये मैच क्या It's a जीतेंगे very हारेंगे emotionally charged हाँ experience बिल्कुल playing this कोई game दिक्कत because अभी नेक्स्ट things मैच happen in the गॉर्डन fraction द of फ्लैश seconds in a वर्सेस completely मोटिक्स होने वाला है non-Pokemon 30 context. I've सेकंड learned about who I am as a person, किंग ने what क्या makes गलती me की थी happy, बताओ what मैं makes me क्यों sad. समझ गया तो हारेगा क्योंकि उसने जो अपनी स्वाइपिंग थी उसने वही बेकार कर दी थी अपनी स्टार्टिंग में वही बेकार मेरे कर दी को भी थी लगा कि उसने I'm on a स्विच faction or दे like a दिया team पहले we're सामने called वाले the को Chicago बहुत Stars, जल्दी हाँ वो and our स्टार्टिंग में उसने captain for स्विच the जो longest इतनी time was बेकार this करे trainer ना called वो Warren स्टार्टिंग में Bliss, पता लगा था who कि हारेगा sadly passed away recently due to और फिर cancer. उसने And दिया I वो have अपना so many एक great अच्छा memories पोकेमॉन playing लाया in-person tournaments with उसमें him भी for उसने so दिया many years, बेकार कर and दिया one of the biggest reasons बार I've बार grown into स्विचिंग who I में am right now. अरे होम स्लाइस हेनरी भी वो कास्टर का रोल उन्होंने किया हुआ है होम स्लाइस एचएसएच भी अपने रीजन से जब लाइक उसके रीजन में टूर्नामेंट होते हैं ना तो ही डज दैट लाइक इनवाइट करते हैं पोकेमॉन वाले इनवाइट करते हैं भाई उन्हें तो मैं तो आज तक मुझे समझ नहीं आया भी इसमें करते हैं क्या मुझे ये नहीं पता आज तक ये करते कैसे हैं रीजनल पोकेमॉन लीग में ज्वाइन कैसे करते हैं अभी है ना जनरल चैट में देखो लिंक इस इंडिया क्वालिफायर्स एक्टिवेट हो चुका है आप भी ज्वाइन कर सकते हो उसमें क्या है हाँ मैं एक से वैसे भी कम खेलता हूँ आपने पूछा कैसे ज्वाइन करते मैंने वो बताया ये बात भी मैंने पूछा कुछ ये बात है इंडिया क्वालिफायर्स लाइव हो चुका है रजिस्ट्रेशन आर ओपन मैं कल पोस्ट डाल दूंगा जिसको अपना करना होगा कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं फीस है कोई इसकी क्या चीज इसकी कोई फीस है नहीं फ्री रजिस्ट्रेशन है नो फीस ब्रो ये है कि अगर आप टॉप 2 में आते हो लाइक टॉप 2 स्लॉट जो है ना क्वालिफाई होता है वर्ल्ड्स के लिए फिर आपको वर्ल्ड्स जाना होगा पर वर्ल्ड्स के लिए ये है कि सिर्फ आपको ट्रैवल जो है ना वो शायद स्पॉन्सर करती है पोकेमॉन कंपनी बाकी रहने वहने खाने वाने का खुद से रहता है शायद मेरे हिसाब से प्राइमल ग्राउंड या मेगा रेक फाजा अरे यार मैं दोनों में ही 5 नहीं ले पाया जबकि मैं मन था कि जय एक शाइनी लूं कहाँ बिजी थे यार मैं बताया तो मेरे पास 5 ही नहीं है अच्छा रिमोट पास नहीं है आपको रिमोट पास चाहिए होगा मैंने डिऑक्सिस में लगा दिया शायद 5 और डिऑक्सिस एक भी नहीं मिला डिऑक्सिस कब आया था मतलब पिछले पहला आया था ना पिछले वो अच्छा उस टाइम का उसके बाद फिर आपने लगाना ही बंद कर दिए क्या उसके बाद मैं गेम ही बंद कर रखा था उसके बाद लोग सबको अरे हजार के कुछ ऐसे थे 1000 पॉइंट के 2000 पॉइंट थे वो सारे वेस्ट कर दिए उसमें डिऑक्सिस में से क्योंकि मैं मनपसंद है वो डिऑक्सिस सबसे मस्त डिऑक्सिस रेड डे हुआ था उसमें सारे डिऑक्सिस फॉर्म थे सारे फॉर्म अवेलेबल थे एक साथ हुआ था कौन सा फॉर्म फेवरेट मैं वाला उसका जो हुआ है कहते हैं वो वाला नहीं जिसमें वो स्पीड उसकी ज्यादा तेज होती है हां स्पीड फॉर्म हाँ स्पीड फॉर्म वाला तगड़ा बढ़िया लगता है तो मैं उसके लिए मैंने मतलब अपना घर के पास रेड हो रही थी उसमें 3 लोग थे मैंने ज्वाइन कर लिया भाई वो लोग उस पे डिऑक्सिस पे पता नहीं कौन सा फाइटिंग टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं
today and also a काउंटर्स ticket to मैटर करता है। Worlds. डिऑक्सिस तो बल्कि पोकेमॉन भी है भाई। competitors डिऑक्सिस down इज अ on बल्कि the पोकेमॉन। Yeah, on the left साइकिल डिफेंस के फॉर्म इस्तेमाल करे डिएक्टिव। तो on the समझ आया। right side is हाँ Motique, साइकिल as you had इस्तेमाल करे तो mentioned. समझ भी They आया both भाई participated फाइटिंग का in इस्तेमाल करना the उसको पीटने Canadian के लिए regionals. Very interesting teams आ here. गया ये हामिद एक भाई, बात आपका एनाहिलेप आ गया हामिद भाई। Side, of course, एनाहिलेप ढूंढ रहे थे आप, ये लो। हाँ नहीं मुझे आज बताओ, आज जो रेड हुआ था ना उसमें लोग इलेक्ट्रोबस लेकर क्यों आए थे मुझे से क्या अरे मैं भी वही देख रहा था, मैं भी वही देख रहा था भाई ये ग्राउंड टाइप के हमने इलेक्ट्रोबस लेके कौन खड़ा है। पता नहीं यार, होते हैं यार न्यू ट्रेनर्स जो रहते हैं उनके पास पोकेमॉन अवेलेबल नहीं रहते हैं ना, तो क्या कर सकते हैं यार। पर उनको रेड ज्वाइन करनी है, दे वांट टू कैच इट। हाँ मैंने भी वो पता नहीं क्या किया था, वो जैसे रेड कर लिए मैं इसकी थी ग्राउंड ऑन की थी जो मेरे पास शाइनी वाला उसकी रेड थी, मेरा पोकेमॉन का था। मैं पता नहीं वो अपना 500 वाला वो वो नहीं था डिट्टो को लेके लड़ रहा हूँ वहाँ पे पोकेमॉन ही करता। सही बात। Also, I love that Guzzlord. Guzzlord. It was on my calendar. गजलॉर्ड यूज किया है क्या किसी ने ग्रेट लीग में? गजलॉर्ड किसी ने ट्राई किया है क्या? गजलॉर्ड से अच्छा पोकेमॉन है इन ग्रेट लीग। गजलॉर्ड नहीं मेरे पास हाँ वो भी है। मेरे पास 114 वाला है, मेरे पास वो 149 कुछ है, मैं 149 यूज है कर सकते हो आप फिर तो। उसका इस्तेमाल करता हूँ भाई। डबल काउंटर यूजर इंटरेस्टिंग। विगरत प्लस एनाहिलेप। एनाहिलेप बहुत सही लग रहा है, ये नया वाला अभी तो मैंने किया नहीं, मैं करूंगा। जब ये एक ही रीजन है मैंने पोकेमॉन वापस ज्वाइन किया एनाहिलेप को देख के। एनाहिलेप से है लाइक इट इज अ गुड पोकेमॉन। वैसे ये गैलेरियन स्टार्टर स्कीम में आ रहे हाँ तो कौन? गैलेरियन स्टार्टर्स हाँ तो स्कॉर्बनी अच्छा वो रीजन वाले, वो रीजन उन्होंने रिलीज ही नहीं किया अभी यार, उन्होंने जंप कर दिया वो रीजन से। नहीं आए हैं डायरेक्ट नहीं अभी नहीं आए, पोगो में नहीं है वो। स्कॉर्बनी वगैरह नहीं है, जेनेट वाले नहीं है। हाँ स्कॉर्बनी सोबल और क्या नाम ये जो ये अभी है ये लीक ये जो ये ब्लू वाला पोकेमॉन है इसका मुझे तो समझ नहीं आया। नहीं ब्लू वाला पोकेमॉन समझ नहीं आया। हाँ अटेरिया ड्रैगन टाइप कैसे है ये? ड्रैगन जैसा दिखता भी तो कौन सा अल्टारिया भाई। अल्टारिया ओ अल्टारिया वो मुझे एक फ्लाइंग टाइप और वो लगता है तो करता है फेरी, फ्लाइंग और फेरी लगा था मुझे। फेरी हाँ फेरी वो फेरी लगता है भाई, इसको इन्होंने ड्रैगन दे रखा है। कैमोफ्लेज भाई, कैमोफ्लेज। ने उसे ड्रैगन और फेरी कर दिया। मैं ये देख रहा हूँ ये फेरी टाइप लगता है पर पता लगा ड्रैगन टाइप है, बाद में जाके पता लगा। अलोला में जब इसको दिखाएगा तो मुझे लगा फेरी टाइप है, वो है फेरी टाइप है। बाद में जब उसका टाइप देखा तो भाई पता लगा तो वो है ड्रैगन। विगरत ये मैच जीतने वाला है ना, लाइक ये स्विच जीत जाएगा ना विगरत? ध्यान नहीं दिया मैच पे, बताऊं तो मैं ध्यान नहीं दिया। एक शील्ड कमिट करना पड़ेगा तभी होगा। नहीं इन्होंने जाने दिया बस भाइयों मैं मैगी बना के आया। हाँ वाओ पहले बना दो। लीड में क्या था? व्हाट वाज इन द लीड मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मैंने करने में ध्यान ना मेरा। अल्टारिया इनटू लिकिटन था क्या? नहीं अल्टारिया तो अभी यूज कर रहा है। उसकी लीड में है। मुझे लग रहा है अगर इन्हें लिकिटन का ठीक से इस्तेमाल कर लिया तो जीतेगा। अगर लिकिटन का अच्छे से इस्तेमाल कर लिया तो इसने, क्योंकि लिकी बहुत जल्दी एक तो रिकवर करता वो करता है, फास्ट अटैक करता है। अगर इन्हें सेट कर रखा होगा वैसा। उसकी हेल्थ देखो, लिकिटन तो ऑलरेडी 50% हो चुका है। क्रिसेलिया भी ऑलमोस्ट रेड जोन में ही है उसके गॉर्डन भाई के। And that Shadow Gligar is going to get to continue, but now it is defenseless. All the Azumarill needs to do is get to that Ice Beam to knock out अटैक करना चाहिए इसको, क्योंकि अगर अटैक अब नहीं करेगा तो वो हारेगा। ये किसकी आवाज है भाई? कुबेर भाई है सैम भाई। ये तो जीती आइस बीम तो केओ करेगा।
करेगा करेगा। All Gordon is left is with this Lickitung, but it has so much लेकिटंग में बहुत एनर्जी है भाई, बहुत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। down, and it has several body slams of energy. Motique has this protect shield, but has to decide पे लेगा what's the पे most लेगा पे इको किसका हो लेगा। रहा है भाई? किसी का तो इको हो रहा है। Slam not threatening a knockout. We see वो मेरे the तो Dragon मेरे Recon तीन डिवाइस Figure एक साथ चल another रहा है ना यहाँ body पे। slam is being thrown. Moutique's really मेरे great तीन डिवाइस, एक understanding लैपटॉप, what एक आपसे, एक what टैबलेट। attacks his Pokemon वाह can take. A third body slam able अभी to be काम reached काम by कर रहा था Gordon the ऑफिस का, तो Flash. वो So स्क्रीन हटा much नहीं सकता energy और built ये up देखना from भी था farming मैच, down I that तो see, I टैबलेट see. पे खोल लिया मैच। Yes, and all of that energy is so Multitask. impactful here. The Altaria Yep. just not लेकिटंग able to स्वैप कर get दिया to बे। another charged attack, and the first match goes to Gordon. लेकिटंग बहुत ओपी है भाई, अगर काउंटर यूजर से उसको बचा के रखो ना तो लेकिटंग और उससे स्कारमनी से बचा के रखो तो Honestly, I think Motique's आ line गए, up आ the गए। Azumarill on that Shadow Gligar was Bro, he was top 6, Gordon the Flash top 6 था टोरंटो 2023 में। भाई अच्छा प्लेयर है भाई, ये तो प्रो प्लेयर है भाई। The farm down on that Lickitung was probably the biggest thing for Gordon the Flash, but we can see it again here in the replay. Cresselia landed अरे the सुनो ना, blast, उधर knocking स्ट्रीम out को the कम कर दो Vigoroth. ना, मेरी आवाज़ म्यूट कर दो ना, इधर तो आपको मेरी आवाज़ आ ही जाएगी। By हाँ ये बात भी है। Motique, knowing that they dig with बंद कर दिया स्ट्रीम म्यूट आवाज, करके देखा। Ice Beam would मैंने still बंद ही be कर able मैं दिया। भी सेम किया। and then Lickitung, अब तो नहीं आ रही? body slam नहीं after नहीं अभी body नहीं आ रही, slam. आप ठीक। Yes, energy management is such a key aspect. देखो of तो अगला गॉर्डन playing भाई ले जाएंगे Pokemon भाई, ये Go, टॉप प्लेयर है भाई, knowing ये when to टॉप 6 save रैंक पे। those charged attacks कौन for ले जाएगा later. भाई? अगर एक तो देखो उस पे लिकिटन है। आई थिंक अब अभी और वो Pokemon, so Motique's पर Azumarill, नहीं, it लिकिटंग takes so long to get to लिकिटंग Ice देखा Beam. जाता है, हैव That's 2 five आंसर्स टू bubbles, that's लिकिटंग। 15 turns quick. गैज़लॉर्ड वो आएगा लग क्या? रहा है हमने क्या ये गैज़लॉर्ड यूज करेगा? It's very इज slow. ही गोइंग टू यूज वही गैज़लॉर्ड? वाला। मैं देखना चाहता हूँ और ऐसे अल्फा to them in ही 12 यूज प्राइम करो में इसको भाई। इस्तेमाल करेगा, अल्फा प्राइम में वो अल्फा प्राइम में इस्तेमाल करेगा pacing to those charge attacks उसकी and जगह वो the केले वो damage बंडल की output जगह that you get अल्फा प्राइम में from का इस्तेमाल licks करेगा वो। into हो Azumarill सकता है is meaningful, even though Azumarill भाई, ये is फॉर्मेट not- सही है वैसे यार। It's 6 been पोकेमॉन नहीं सेलेक्ट नहीं करो और पिक देखो करो देखो 3, देखो क्या सही है? XLs were introduced. अल्फा It has a प्राइम little में bit more bulk than it वो used to back घोस्ट before और वो हो गया 150 was a फाइटिंग टाइप, thing. इसको It's still फेरी really टाइप impactful. Those चाहिए licks तो do वो इसका वो really है add up. ब्लू वाला Yeah, पोकेमॉन something also that's और just ड्रैगन so टाइप पे वो हो noticeable जाएगा। now is that बहुत bubble क्या सही नहीं कॉम्बो सकते, बैठेगा उसका। helping out देखना पड़ेगा Azumarill. क्या The दिमाग बहुत लगाते हैं। damage that those बहुत bubbles बहुत were सही doing कॉम्बो to the बैठेगा इसका। Shadow Gligar. और Note वहाँ that पे its उसके बाद Shadow एक तो Gligar's वही है, defenses दो are तो उसपे down by वही है लेजेंडरी। 20% and the bubbles are super अगर उसको effective. तीसरा लेना होगा तो वो अपना I वो वाला think लेगा being जिसपे able to शैडो टाइप apply होगा that कोई fast attack pressure, because you don't think of bubble as मे a बी। fast क्या लिकिटंग तो attack लेगा? pressure. लिकिटंग लिकिटंग तो लेगा कंपलसरी Really लेगा, is ही विल so यूज लिकिटंग impactful and कंपलसरी। keeps Azumarill hanging around हाँ in the meta. And Azumarill is a bit of अब a ये tough देखना है वो spot for Motique कौन सा जो वो because लेगा of the Pokemon that I think लेजेंडरी Gordon the और कौन Flash सा is शैडो likely to लेगा, bring. क्योंकि वो Lickitung, बस Cresselia का looking इस्तेमाल very नहीं करेगा solid हमने। here. Going into game number 2, it's a pretty बस more का इस्तेमाल ही नहीं करेगा neutral वो। lead. It's going to be Shadow Gligar into Vigoroth. Shadow Gligar does have the Break benefit of into Shadow resisting the Gligar. counters from Vigoroth. However, body slams do add up. ओ सौरभ भाई भाई आप तुम मैगी भी Same देखते type हैं। attack bonus body बिल्कुल नहीं slams गलत from कर दिया भाई, Vigoroth मैं do बिल्कुल a अलग lot of वो कर damage. दिया। And we're going to see that damage मैं आ apply रहा हूँ। right away to सौरभ हाँ भाई। वाह, that Shadow ठीक ठीक Gligar. ठीक। Motique's देखो decided देखो मैंने this ये तो Vigoroth सही is बोला gonna था, be कोई the शैडो टाइप serve लेगा ये। later on in the matchup. So pulls it away, and now we have the सौरभ भाई Altaria versus हाँ ब्रदर। Cresselia. आप बेचते क्या मैगी? Pokemon that are going to be मैगी battling it मैगी out मैं कहाँ से here, बेचूँ तो भाई? trying to pressure a lot of damage, आपके chip शॉप में? away at the health, अच्छा उसमें and मैगी also नहीं है, अभी तो नहीं है। potentially we're going to start seeing shields be utilized. R29 लिखी को पावर अप कर दूं, रैंक 29 लिखी को पावर अप कर दूं, अभी पकड़ा रैंक 29 है क्या राका भाई आप पे? भाई अच्छा रैंक है यार। यार मैं तो मन कर दिया तुम्हारा, मैं भी मैगी बना रहा हूँ। बना लो यार। A switch out from Motique's, excuse मैं me, मैगी given बना रहा that हूँ। he does have a मैं आउट ऑफ स्टॉक हो गया मैगी in the से। back, and that would मेरे pair पास है worse मैगी, against that Shadow पर मैं लूंगा Gligar नहीं, than the Vigoroth. मेरे पास भी एक ही है। अरे Potentially, what अरे he रे is going for him though is a big मैंने अभी farm शाम run को here. खाई है Actually, no, मैगी with तो भाई। switch भाई advantage सब मैगी against खाते हो the क्या? दिन Cresselia, रात मैगी चलता है क्या गाइस? forced to throw What the energy hell? to देखो मैगी जिला ब्रो, मैगी देखो जिला। देखो 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 मेरा क्या होता है, really starting to add up and देखो putting मेरे को Motique's in जब a great रुक spot. जा रुक जा, पहले मैच खत्म होने दो, उसके बाद अपन Vigoroth डिस्कस करते हैं। रुको saved मैच पे for फोकस later, करो अभी। hoping to use it a ये little मैच bit खत्म later होने दो in पहले the फिर बात मैगी पे करते हैं। matchup. फोकस Is होगा।
होगा। पहले मैच पे पूछो तो भाई। Still not very effective, but that Shadow Gligar is very low on health. Moteeks is going to use a Protect Shield, maybe try to विगरथ अगेंस्ट ग्लाइगर, ये शैडो नहीं, मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ। अगर नॉर्मल ग्लाइगर होगा तो उस पे रॉक स्लाइड थ्रो करना इज बेटर कि बॉडी स्लैम स्पैम इज बेटर? क्या सीन है? बॉडी नॉर्मल पे भी नॉर्मल में बॉडी अच्छा ज्यादा जाएगा। स्टोन वाला बताओ क्या, वो स्टोन वाले पे क्या होगा, फ्लाइंग टैप पे ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, बॉडी इफेक्ट करता है।
charge a bug ये mirror बस तो सब लोग इस्तेमाल करते हैं पर मुझे समझ नहीं आता ये काम का तो है नहीं बस बहुत ये काम का है यार कुबेर भाई, क्या बात कर रहे हो? बस बहुत मुझे काम तो का है अच्छा ब्रदर। मुझे अच्छा नहीं लगता मेरा वाला टट्टी है बस इज वेरी गुड ब्रो इन ग्रेट टेक। Figure out. बस चार्जा बग। चार्जा shield मेरे को advantage, बेकार लगता and he has a ton of energy बहुत यूज है on भाई this charger इन bug. ग्रेट टेक। Next Exeter coming through. I think मीका Motek's वोल्ट अच्छा लगता है recognizing this is not enough to threaten a knockout. हाँ वीका वोल्ट तो मुझे भी अरे अच्छा पर वो लगता पीवीपी में इट इज नॉट यूजफुल, दैट इज द In थिंग। order है। अरे बाहर में जाए पीवीपी। हाँ भाई सही बात है, मैगी इज ओपी। that comes down to a मैं charger तो अभी bug. खा रहा हूँ भाई, Actually, a सब switch मैगी into खाते हो Gligar, क्या? going for the farm town. 2-volt switch is not enough to knock out. And the Gligar is able to get to ब्रो 1-1 हो गया, 1-1 हो गया राइट। नेक्स्ट मैच इज डिसाइसिव पे, नेक्स्ट मैच इज ना अभी डिसाइसिव। शील्ड है उस पे बंदे पे किस पे शील्ड है? वही जीत रहा है। A bit of a mistake from हाँ Gordon the Flash doing an शील्ड ही पे लेगी उसको। जिस पे शील्ड है वही जीत रहा है। dig energy, had the aerial ace loaded. Now One throwing the X is or I X's think with is not two enough to loaded. KO The him, right? second one, I think, will be Nope. enough to pick Huh? up a knockout. It's going to be really close. Nope. Actually, accidentally नहीं। going for a volt switch instead of अरे going यहाँ X's से एक्सिजोर फार्म करता क्या पता नहीं। Why did he went for extra volt switch? पता नहीं। So a lot of times Pokemon Go trainers we ये get अच्छा था, ये वाला मैच अच्छा था, मतलब उसने बंदे ने सही इस्तेमाल पता नहीं उसने शायद ओवर फार्म कर दिया क्या, एक वोल्ट स्विच वो एक्स्ट्रा चला गया। ही ऑलरेडी हैड एन एक्सिजोर, एक्सिजोर था उस पे, पर वो क्यों करता कि नहीं, नो आइडिया। उसने ऐसे वो मैच को आगे बढ़ाने के लिए किया हल्का सा। हाँ भाई ऐसा क्या मैच फिक्स किया क्या? मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। And that was such a pivotal moment in this game. Winning the switch. क्या while उसको tearing लगा it होगा into क्या that तो जय मैं counter जीत spot, जाऊंगा। but for नहीं some नहीं reason, मे बी just उसको not quite पर threatening पता नहीं hard यार enough with those क्या weak एक्सिजोर blocks. एनफ था क्या उतना हेल्थ पे विगरत को केओ करने के लिए? The body slam, the क्योंकि overtime. विगरत देखो ऑलमोस्ट कितना 30% एचपी था। एक बात बताइए सेंडो का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जैसे इस लेवल पे सेंडो मिलता है कि नहीं? Unfortunate there. क्या फिर से बोलो, नहीं सुना मैं, इधर देखो। Had that charge attack come out immediately, it would have been really मोस्टली close to सेंडो का मतलब knocking out. I'm परफेक्ट not का sure इस्तेमाल if it करते would क्यों नहीं ये have लोग? been quite नहीं वो enough ग्रेट लीग में नहीं यार, वो damage. सब मास्टर लीग के It लिए looks like परफेक्ट पोकेमॉन। potentially ग्रेट लीग में the हमें judges थोड़ा looking बल्की पोकेमॉन at चाहिए। that play and बल्क maybe के this लिए might be a अटैक match कम under और review. We'll एचपी have और to वो wait ज़्यादा until होना we चाहिए actually जिससे get कि that आप from our ज़्यादा judges. हिट सरवाइव कर Yeah, पाओ, but let's क्योंकि talk a ग्रेट little लीग bit में more फुल सीपी नहीं ना रहता है about अवेलेबल। tapping, because sometimes मतलब आपका that पोकेमॉन is a mistake I अंडर think बिल्ट a lot रहता है of राइट, trainers इट्स who नॉट are फुल्ली new to the बिल्ट, game make, and how वो सीन रहता है impactful ना। that is on something like a charge मुझे bug versus देखो मुझे something सबको नहीं like an पता, मुझे इतना Altaria पता है or a मैगी Lickitung. ओपी है। Because when ठीक है भाई। a volt मैगी switch ओपी is है, an मैगी ओपी है। overturn fast mover, वो तो heaven यूनिवर्सल forbid ट्रूथ है you भाई go ये। tap Talonflame, I'm thinking सामने के Incinerate. लिखा है अमित भाई ने लिखा भाई है मैगी। डिसाइसिव मैच है भाई, क्या हमारे टॉप Yeah, 6 लास्ट ईयर के लोअर ब्रैकेट में जाने वाले हैं क्या? 2.5 second, 2 पता second चलेगा। नहीं जाएगा। animations. It can be really कुछ can नहीं log कह so सकते much ब्रो, stuff. नहीं If कुछ your नहीं opponent's कुछ नहीं कह using सकते Dragon भाई, Breath, सामने able वाले to ने भी carry कमबैक तो one किया है turn उसने fast भी राइट। attack, or even counter a hard-hitting Back 2-turn fixing fast attack. कुछ You भी can end up taking so much additional damage. You can आईपीएल तो नहीं चल रहा है let कुबेर your भाई। opponent get a catch in if भाई they know पता that, नहीं oh, they need to मुझे भी throw लग रहा है this इन one लोगों ने volt पैसे switch. खाए I कितने have a डॉलर्स really वो नहीं great पता। opportunity to catch. You put yourself स्ट्रीम at पैसा ना बोलो, मेरा तो really स्ट्रीम को tough, कॉपीराइट दे दिया भाई। disadvantage if you end up using an कोई additional कुछ बोला बिल्कुल नहीं, long किसी ने turn कुछ बोला duration बिल्कुल नहीं। fast attack when you don't need to. Yeah, you can let your मेरे opponent get 60 आवर्स होने additional, वाले। like 2 ओ counters भाई in 100 ओ करो, भाई। सेंचुरी करने वाले हो क्या अल्ट्रा भाई? सेंचुरी इनकमिंग अवार्ड। So, Nick, if these long, slow, heavy, fast पॉइंट्स attacks, कितने भाई, there's पॉइंट्स such a कितने? risk with यार them. मेरा तो नाम भी नहीं आया यार। Moves like अरे Dragon तो आप Breath. अभी भी आए कुबेर Well, भाई। we have seen that. हाँ मैं तो अभी आया हूँ fair और मैं good आधा ही amount of करता हूँ। times in the Go meta तो वही देखना that the पड़ेगा, Go meta तब तो बढ़ेगा centralizes ऐसे थोड़ी। around 1 and 2 turn बिल्कुल fast बढ़ेगा। attacks. We've had पॉइंट्स में recent शिवांश अरे, भाई, अरे, ओ इसमें भाई, which is ओ why we've kind भाई, of seen a कितने- गैम्बल कितने- कर करके गैम्बल कर करके शिवांश भाई पॉइंट देख रहे हो भाई? introduced to ओ the game as भाई। well. अब दोनों के दोनों एक शैडो का इस्तेमाल करेंगे मुझे लग रहा है। अब दोनों के दोनों एक शैडो का इस्तेमाल करेंगे। कुछ तो चेंज करने वाले हैं, लेट्स सी, देखते हैं क्या करते हैं। वीजा बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो जो भी है वीजो का नाम बोल रहा हूँ। चार्जा बस का बोल रहे हो क्या? हाँ वो जब वो बग टाइप बग लगते हैं। बस वाला ना, बस की बात अरे कर जब रहे हो वो आप। चार्जा बग हाँ चार बग वो वाला उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इनको भी थोड़ा वो चाहिए little bit more damage. It provides you a little more
farm down opportunity. वो And that's why मुझे वो जो वो Volt अलोला का Switch जो as वो है ना well as वो बेकार Incinerator लगता are है typically used a little क्या more चीज frequently अलोला का? than वो लेजेंडरी जो होता है वो sword बड़ा type सा जो है attacks such काला as काला confusion. So kind of a high risk, अलोला high की reward Necrozma. लेजेंडरी नेक्रोजमा हाँ Definitely. If you're in a ग्रोथमा bad वही matchup, you don't have भाई as अब many Necrozma. opportunities क्या to बात कर रहे हो? अभी maneuver फेस्ट हाँ पर बहुत बेकार नेक्रोजमा है आने वाला है, There's हैवी actually a क्रेज thing होने वाला है seen ब्रो. some अगर truck नेक्रोजमा drivers रिलीज call हो गया, faster in the past, but हैवी it is क्रेज, definitely हैवी the, क्रेज. not as favored fast attack मुझे compared to Volt बेकार Switch. लगता है वो सबसे ज्यादा बताऊँ Alright, क्यों and we do see मतलब वो Chargebugs क्या है on मैं जब both किया था होता है, वो सबकी अपनी अपनी 10,000 चॉइसेस हैं, talking कोई out नहीं. a little bit, but Gideon, I हाँ think सबके we are अलग अलग still getting चॉइसेस वही हैं है, for किसी को you. कुछ पसंद है, मेरे किसी वाला को कुछ. बेकार है ना Gordon the Flash has मेरे वाला left this बेकार है discount वो and बेकार ही है Guzzlord on कोई the बात. bench so far. Motiques, that Azumarill you नॉर्मल mentioned, निक्रोजमा nowhere to बेकार be है, seen, doesn't really वो तो have लिख के ले लो, a lot नॉर्मल of वाला places बेकार to है. go. जो मतलब फ्यूज्ड है ना विजुअल वाइज, वो वाला अच्छे विजुअली हैं. क्या हाँ वो अलग है वो also बढ़िया on है the bench for Motiques. Yeah, I mean, अल्ट्रा Shadow नेक्रोजमा Gligar भाई definitely फार has a देखा lot of ड्रैगन great टाइप. neutral play अल्ट्रा into the नेक्रोजमा आएगा matchup. तब तो रखा भाई, I want सीन to वो है focus ना, back in क्या on पता. a Pokemon you mentioned. वी डोंट नो Pokémon कि Sword. I feel like नेक्रोजमा it's लाइक super कैसे hard रिलीज for कर Gordon रहे the हैं, क्या Flash to रिलीज bring कर it. रहे हैं, अभी That's कोई why we इन्फो नहीं haven't है. seen him bring it ये either the इन first लोगों two ने एक games. चीज गलत We कर have रखी है two ऐसा counter ऐसे users. क्यों We कर have रखा है इन लोगों ने दो Azumarill. मतलब Both दो are so वो good. पोकेमॉन सेम Chargebugs, इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग it's more दोनों neutral. लीग You में have a lot of great अलग मतलब अलग players इस्तेमाल as करें कि Guzzlord because you मतलब do क्या है ना neutral जैसे back मैं ये with बोल the रहा हूँ कि ये Dragon लोग Tails ऐसे and the इस्तेमाल करें Dragon कि वो अलग Claws, वो or even पोकेमॉन you could रिपीट opt कर for सकते हैं Crunch or रिपीट ना करके दूसरे पोकेमॉन इस्तेमाल करे नहीं or तो वो Brutal तो है Swing, ना, आपने depending 6 on पोकेमॉन की which टीम charge बनाई type है, you अब आप opted 6 for में से on कोई भी your टीम Guzzlord 3 to यूज hit करो, for बस वही pretty है. meaningful neutral अब damage. वो आपका But मिरर because मैचअप हो X जा रहा है, Scissor वो तो is यूज super पे है. effective and बाकी the आप Chargebugs gets to it टीम so तो 6 की quickly, बना रहे हो, अब it's 6 में pretty से आप कोई भी threatening. टीम It यूज कर doesn't सकते हो threaten a टीम. one-hit knockout, but it threatens to do अब वो भाई क्या कर क्या यूज रहे कर हैं रहे हो वो 80% of तो the total कुछ health हो of रहा that होगा, Guzzlord. Maybe टेक्निकल a little bit less, कुछ maybe वगैरह. 60 to 70. And if you do that on an already chipped Guzzlord, फ्रेंडली or you मैच नहीं हो switch रहा it इनका to a charm user, and one charm does टाइम ले रहे हैं 40% क्या, of Guzzlord's थोड़ा health. हैवी It doesn't थिंकिंग actually चल do रही है that गाइस. much, but you know, you can threaten भैया a भैया मैं बताऊं potential ये switch आपकी and तरह fast ही है, ये attack down if आपके you do डिवाइस की land तरह a ही है. hard-hitting X scissor. क्या फ्रेंडली Yeah, मैच नहीं होता Chargebug, it's not something you आपका ही necessarily फ्रेंडली think मैच of a अटक जाता है, high-damage इनका भी Pokemon, अटक but गया. it's so versatile. It's something वो थोड़ा one बहुत of my ग्लिचेस personal होते हैं favorites, यार. especially to use in the Go Battle League. It's a इनके personal सामने favorite इनके of बॉल mine. It's इनका just रीजनल मैच में as दिक्कत आ रही है. well. Definitely a fun Pokemon to use, but again, we have that high risk, high reward of using those slow, heavy, fast attacks like Volt Switch. It looks like our trainers are now विथ लेगेसी getting चाहिए. ready. Just to recap अब again, वो तो we जब are आएगा तब 1 पता and चलेगा 1. यार. This is going to determine स्टार्ट the होने वाला है, winner लेट्स सी गाइस of क्या होता winners है. round 2 Group D. Heading down to the field, we have Yeah, Cresselia versus Rest into Vigoroth. And this Vigoroth. is a great matchup for Gordon. That's why we see Motiques immediately switch out. And I like this from Motiques that Shadow Gligar is very safe. भाई Going अरे भाई in अपने for that safe swap into that डिलीट Shadow क्यों कर Gligar दिया provides मैसेज? you an उन पे opportunity to शैडो put Gordon the Flash on the back ग्लाइगर foot. का Will Gordon आंसर switch नहीं out है after राइट. this aerial ace? Yes, into लिकिटंग ही है Lickitung. जो This है. is a very safe है matchup for Lickitung. किसने बोला लिख But Lickitung also looks pretty good all around, and also dodging very importantly कर the दिया Vigoroth. बेकार. Yes, here is that first heavy कर दिया hitting बेकार. charged attack going up against the Lickitung, but the Lickitung says, nah, I'm good. I'm gonna stick around. Doesn't even put it under half health. इन्हें Lickitung मैं is दो just मिनट so में आया वापस. bulky, which is why we've seen it time and time Okay, again okay. here in the championship series. Yeah, Already Lickitung is done. the type of Pokemon that you can often take a short rest, कौन आया? look away from the screens a little bit, you look back, आ and नहीं वो आ रहे the 2 मिनट में. Lickitung's still there. It's so Yeah. healthy. It's got so much bulk. You can see that's the third aerial ace landing. It's building up to 1.5 body slams now, actually allowing Motiques to switch out. And this body slam, although it's still neutral against the Vigoroth, it would have been much better if it landed against that Shadow Gligar. Yes, but that Shadow Gligar is now going to be able to lurk in the back and perhaps get some additional damage on one of Gordon's other Pokemon. Vigoroth wants to put that energy somewhere, so going to send it into the Vigoroth, taking it down to half health. Gordon has a couple of different options here, bringing in the Cresselia to bring in that opening matchup once again. Altaria, Or because the the Crest है ना. Gligar could potentially would have worked well as well.
well. Here we're going to see the grass knot thrown first. सारे बैटल ग्रेट लीग में ही होंगे क्या? हाँ टूर्नामेंट्स ग्रेट लीग में ही होते हैं सर। Motiks, it was a good idea from Gordon to flash because maybe I can threaten a shield with this. TP टूर्नामेंट इसमें सिर्फ ओनली ग्रेट लीग होता है। Maybe Motiks thinks ग्रेट that लीग I'm going to be able to get a knockout and he wants to try to get a body slam off. Actually, going for the fast attack down, Motiks able to reach another body slam here. This is क्या ये going to do KO करेगा? so much extra chip damage to the Cresselia. नहीं KO तो नहीं करेगा, right? Deep into He the will red. survive. Yeah, but Gordon is saving those two protect shields
for the Shadow Gligar, recognizing that it's a fairly bulky Pokemon, but a lot of charge attacks could knock it out. Motique's getting to the Aerial Ace. अरे And भाई here को I think we are रेड going इनविटेशन to चाहिए start to have to see Gordon. You've got to use those protect shields आरएम at भाई को some रेड इनविटेशन point, चाहिए and he spends the first one सोच रहा हूँ here, लगी and पार then अब कर going लूँ into the देख लो यार Altaria. आपकी मर्जी Motique's with two Yo Rynamo protect will shields invite remaining Rynamo to Rynamo Gordon's we were singular live in the I think afternoon question brother for doing Gordon the here is, raids can he strip you away didn't both join of the those stream protect brother shields from sadly the Altaria? we are not doing raids now raid is You over want to be man able it to was in land the a afternoon 2 hard-hitting, to 5 super effective Moonblast, but Altaria very comfortable. No shielding the first aerial ace, second aerial ace coming through, pulling the force मास्टर shield, लीग and I होना think चाहिए फिर Motique's और has to be मजा doing आता some मास्टर लीग mental भाई math हेवी here, टाइम लगता है recognizing भाई I need मास्टर a लीग shield भाई for that Cresselia. That's going to be the hardest hitting charge attack. Yes, but that Dragon Breath is just melting that Shadow Gligar away. It's going to be वैसे trying मेगा to यूज get कर to सकते हैं क्या another मास्टर लीग में aerial ace, nope and nope it nope will it is get locked there. But Motique's again has to think, can I survive this and get the Shadow Gligar off the field? I need this protect shield. Can it get तो भाई rid फायदा of क्या the है Shadow Gligar? It gets मेगा to करने the sky attack, but there's only one बोनसेस के लिए रहते HP हैं मेगा तो it is for remaining. bonuses and How all healthy is that Cresselia? That Altaria has done so much damage. She got to that final sky attack and she's done so much Dragon Breath damage. In comes the does he shield to have 2 protect grass the note grass इस पे 2 top. grass Will note the है क्या Cresselia be able to reach a second one in time? It's one psycho cut away, but ooh 1 HP bhai that was a full oh bro 1 HP win be let's go but Motique's takes the victory here. I am gonna have to see that end of play again. very That close was be so tight throughout that entire matchup, and we gotta give credit to both of the players there at the Motic end. भाई There ने were a lot हरा of दिया aerials भाई going on there, a lot of Interesting. energy on the Pokemon in the back, a little bit of health, not much time remaining in that end 98 game, and लाइगर मिला भाई they GBL both played it to the best of ओ their abilities. That भाई was जीबीएल definitely खेल रहे हो well क्या played साथ by में Motique's there हैवी to हैवी हाँ to prevent that final charge attack from being reached. आप क्या अभी बोलते लेके हो पावर अप किया ना तो मैंने Lots of Pokemon that are just hanging देखो आपके पास on रिसोर्सेज रखा भाई तो रैंक 29 लिकिटंग है तो कर सकते हो आप यू कैन बिल्ड इट क्योंकि लिकिटंग इज अ बीस्ट इन ग्रेट लीग एनीवे देख ही रहे हो आप एवरीबॉडी इज हैविंग लिकिटंग भाई देख ही रहे हो lot of that Gligar on the side of Gordon, but that Vigoroth and Altaria combo just ended up working out really well for Motique's. And speaking of threads, let's go ahead and draw a thread through that previous matchup and see if we can weave a लिकिटंग का फास्ट story मूव of कौन सा how है it played लिक out. लिक लिक Game है हाँ number 1, Lickitung into Altaria, not quite able to pick up the knockout, but able to pick up the lick down. And here we have the Sky Attack in the second game, knocking the Cresselia out, but the Shadow Gligar in turn fainting the Altaria. पोकेमोन को वो वेंडिलाइट है क्या वो आइसक्रीम पोकेमोन दोसर वाला क्या हाँ है वेंडिलाइट वेंडिलाइट वैनिलाइट हाँ है उसका साइनी रिलीज भी हुआ था कुछ शायद 1-2 महीने पहले आई गेस है ना लिकिटंग को बोलो उसको यूज करने को Body slam being so impactful. पर वो वैसा नहीं वाले मतलब पीवी के लिए दैट इज नॉट यूजफुल एनीवे We really see exactly how impactful भाई each कितना small क्लोज था भाई 1 एचपी भाई एचपी दिख भी नहीं रही भाई उसकी ओ भाई body slam wasn't reached by एक नंबर गेम था बे that would have meant that that Cresselia Voice reached the cut grass गया। knot. The Gligar would not have been able हाँ, to वो threaten a knockout. And क्या हुआ that would have been game कोई for ड्रॉप Golden हुआ क्या Flash as opposed to Motique's. हेलो But Motique's हेलो goes हेलो ahead हेलो and moves on, but it is not मेरी over yet for Gordon the Flash because this is a हेलो double भाई आपका elimination डेटा style गया tournament, होगा अल्ट्रा and भाई we just watched a match from हेलो the winner's side of the bracket, so he still has a हेलो chance, although the road is difficult Hello, down hello. on the loser's side of the शिवान भाई bracket. मेरी साउंड आ रही है राइट Tournament run is done for today. You have all that extra pressure, and you also very वापस ज्वाइन frequently करेंगे हम have लोग significantly more matches as well because you करो have करो to करो push through all those losers rounds. But we've seen it before, and अभी आ रही है I क्या have मेरी to आवाज imagine हेलो we'll be able to see it again. There's always हाँ, going to हाँ, be ठीक हो someone गई, coming ठीक है। from अब the सही है, losers अब सही है। bracket बीच में लगता है कुछ into फ्लक्चुएट हो रहा था grand मेरे finals, right? हाँ That's the देख way रहा था the double डिस्कॉर्ड तो फिर elimination डिस्कॉर्ड का works. इशू हो गया The question is it someone who maybe just got knocked down from the winners finals, or is it someone who's really fought their way tooth and nail, maybe from losers round 1 of day 1 and not day 2?
Speaking of tooth and nail, there is a Pokemon with some very impressive teeth that we are not seeing in the tournament right now, and I want to look at ये this देखो टॉप 12 Pokemon guys. Gligar 50. ओ भाई Gligar, Lickitung, Whiscash. भाई Annihilate का भी हेवी यूजेस है, पर अभी वो ट्रेनर्स आए नहीं हैं जिन्होंने Annihilate का हेवी यूज किया हो. Cresselia, Charjabug. It's Oh just not bye. quite cold enough for it up here. We do see Skarmory, Registeel Lantern. and Skarmory in the top 12. Two steel types. We've seen steel type kind of really take a hit the past few seasons, and अब भाई it's really Gligar, coming back Lickitung, to try to answer Whiscash that भाई Cresselia अभी भी Pokemon यही that, लीड पे we हैं were भाई. predicting to be rising up. You know what answers Cresselia with Grassnot and Moonblast and or Future Sight? Steel types. Steel types resist all three of those typings, both Grass, Fairy, and Psychic. That they do, but I am not done talking Gligar, about Lickitung, Feraligatr. Shadow Whiscash ये तो ऑलमोस्ट 30 में दिख ही जा रहे हैं हमें एक एक. out there that Shadow Feraligatr or regular रेजी नहीं है, रेजी का यूजेस बहुत कम यूज है. meta is an option. Again, let's take a look at that spotlight. Shadow Feraligatr here, recommended with Shadow Claw, Hydro Cannon, or Ice Beam. We mentioned at the top of the show. Is Feraligatr meta? But nobody is using Shadow Feraligatr though. Because it gives you a इधर little तो bit कोई of नहीं different यूज कर रहा coverage है. depending Nobody on is your using team in regional. composition, in a show 6 pick 3, or if you're even if you're just in the Go Battle League, what other charge decks you have on your team. वो भी हो सकता है, पर मेरे को लग रहा है लैंटर्न मेटा में नहीं आएगा. ये नहीं आएगा, जगह ही नहीं बना पाएगा भाई ये Shadow Feraligatr. क्योंकि लैंटर्न हार्ड काउंटर कर देता है, ऊपर आरपीएस हो जाता है. रेजी नहीं है, बर्फ वाला. बर्फ वाला? बर्फ वाला मतलब? रेजाइस? रेजाइस कहाँ? ग्रेट लीग में कहाँ रेजाइस यार आका भाई? रेजी बॉयज में से ओनली रेजी स्टिल इज यूजफुल, वो भी पीवीपी के लिए ग्रेट लीग और अल्ट्रा लीग में. बाकी रेजीज आर यूजलेस. Tomorrow there was one last night that I on a bit of a whim I competed in and was able to face trainers like Gordon the Flash as well as SS Thorn yesterday who were out there trying to earn additional championship points. And we talk so much about earning championship points from these regional level tournaments. इस बार इन्होंने पॉइंट सिस्टम लाया, लास्ट ईयर तक नहीं था. इस बार इन्होंने पॉइंट सिस्टम कर दिया अगर वर्ल्ड्स के लिए क्वालिफाई करना है तो. हर रीजन वाइज अलग अलग पॉइंट सिस्टम रखा है भाई इन्होंने. I've been to a number of cups and challenges myself in the local area. One of our good friends, Enhoff, we often she often draws me as an opponent. We don't like facing off, but in a small tournament, Boston, depending on the location of the tournament, doesn't have the largest turnout, so we often face each other, and it's always a good time, but it's not always what you want to see at the beginning of a local tournament. What I do want to see is these two trainers who are ready to go over on the stage. We have Shadow Brady versus T. Wastel, bringing that Shadow Charizard Bombsley on the as a plush. I believe that's one of the newer ones. भाई 3 Shadow Pokemon है इसके Shadow भाई के. भाई नाम ही है उनका Shadow Brady, तो Shadow Pokemon तो होंगे यार. 6 में से 3 Pokemon Shadow यूज कर रहे हैं भाई वो. ठीक है भाई. Polyrath that people have been sleeping on. I am excited to see that from Shadow Brady. Shadow Charizard feels like a blast from the past, as well as Shadow Obama Snow. Really interesting in the meta coming from Shadow Brady. Bonsly कौन लेके आया? Shadow Charizard has been absent for so long. Maybe Shadow Brady thinking Bonsly लाए भाई, उनका लकी चार्म होगा ब्रदर. लकी चार्म लेके आते हैं यार गाइस सब. I think it has some play against Wastel's team. It's taking resisted damage from the Steel Wings from the Skarmory. It's a bit of a more neutral matchup against Charge. पहला Skarmory दिखाया आज है ना? अभी तक जितने मैचेस उसमें एक भी Skarmory नहीं था. Won't necessarily threaten a knockout, and Dragon Tails will add up against Shadow Charizard. Yeah, let's really take a look at Shadow Brady's team, because again, really interesting picks. The Shadow Obama Snow looks like he's choosing the Weather Ball rather than the more recent ये edition देखो of अल्ट्रा भाई है, राइट साइड वाला. वाह क्या? ये देखो अल्ट्रा भाई है राइट साइड. अल्ट्रा भाई तो अभी हमारे साथ है, तो वहाँ कैसे जाएंगे यार? That is such a powerful pick. And then the Polyrath that people has been trending downwards like we talked about in the forecast, but I'd like to see it have its chance. And then on the other side of the table, it is T. Wastel
with the Shadow एनाइले पे Gligar क्या मूव रन कर रहे हो? नाइट Guzzlord, क्लास Shadow Whisk, Hash, यार सब Skarmory, नाइट क्लास and क्यों रन Sharp करते हैं Attack. इंस्टेड ऑफ आइस पंच? ये क्या सीन अटैक है? बूस्ट मिलेगा ना, अटैक बूस्ट के लिए क्या? नहीं, पर वो attack गारंटीड boost नहीं है राइट? इट इज लाइक चांसेस रहते हैं उसके यार। अगर मिल जाएगा तो जीत जाएगा। वो तो है, अगर बूस्ट मिल जाता तो काउंटर डैमेज ही हेवी हो जाता है भाई। Obsessed, like I need to talk about this Pokemon every time I see it. Bringing in Crunch as opposed to that other dark type charge attack. Crunch having the क्या option चीज? to शाइनी? potentially debuff over Shiny Brutal Clubby पे, Swing. नहीं Both मैं तो very हंट ही नहीं similar कर in रहा terms अभी of तो। नहीं energy and damage, मैं तो so हंट ही you, नहीं कर रहा। you आप see कर रहे हो क्या? both being brought very frequently. I think people will typically opt for Crunch अपन तो more किए नहीं अभी, often बाहर निकल के because वाइल्ड of लैंड that किया ही नहीं है। मे potential बी कल debuff करे chance. तो It करें provides a little bit more ऑफलाइन। flexibility to the Pokemon. It does, and these trainers दो शाइनी उन्होंने रिलीज किया है, शाइनी कॉटनी कॉस्ट्यूम्ड और शाइनी फ्लवेबे राइट? हाँ कॉटनी न्यू है, कॉस्ट्यूम शाइनी। कॉस्ट्यूम शाइनी, नॉर्मल कॉटनी नहीं, कॉस्ट्यूम वाला। ऊपर में को 2 फ्लावर लगे हैं भाई उसके। न्यू है डेब्यू है वो। क्राउन वाला ना? हाँ डेब्यू है वो। क्राउन नहीं, कुछ फ्लावर लगाया है, क्राउन नहीं कुछ और है वो। फ्लावर क्राउन ही कह रहे हैं ना ये लोग। हाँ करेक्ट। लो भाई गुड मैचअप फॉर भाई। स्कारमरी तो उसके 2 पोकेमॉन को बीट करता है भाई। इवन गजलॉर्ड आल्सो राइट? भाई स्कारमरी अच्छा इधर सॉरी माय बैड। इसकी टीम तो लेकिटंग पॉली और शैडो ग्लाइगर। लेकिटंग और शैडो ग्लाइगर फिर भी ठीक है, लाइक स्कारमरी 2 को तो बीट कर ही सकता है। आ गया हमारा गजलॉर्ड। वी वांटेड टू सी गजलॉर्ड। भाई ड्रैगन क्लॉ का डैमेज देखो भाई। ड्रैगन टेल क्या है वो? ड्रैगन टेल फास्ट मूव है ना? डैमेज देखो भाई। फास्ट मूवी भाई, वो तो पूरा फार्म डाउन करेगा भाई। हैवी एनर्जी गेन भाई। गजलॉर्ड पोकेमॉन गो में शाइनी रिलीज हुआ है क्या? हाँ हुआ है, हो चुका है। हाँ हो गया। बहुत प्यारा। एक नंबर शाइनी यार। वाइट इज बेस्ट। मैंने इसका शाइनी एंड किया था अल्ट्रासन में, मिला नहीं। उन सब गेम में तो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं राइट? I like this from Shadow Brady, recognizing I don't think a Crunch quite knocks me out. It's actually just the Dragon Claw, which will do a little bit less damage and provide him the opportunity to reach for the... भाई गजलॉर्ड को देख रहे हो बे? ड्रैगन क्लॉ भाई, ड्रैगन टेल भाई, जीजी भाई। 2 पोकेमॉन को ले गया भाई वो ड्रैगन टेल डैमेज से भाई सिर्फ। व्हाट द हेल। जीजी हो गया भाई ये। शैडो ब्रेडी भाई के लिए जीजी हो गया ये गेम। charge attack pressure here for the Shadow Gligar. However, Shadow Brady, I think, recognizing that with 2 shields remaining on the side of T-Wastel. भाई गजलॉर्ड ओपी बे। गजलॉर्ड ने अकेले मैच उधर जिता दिया भाई इनको। अपन भी गजलॉर्ड ट्राई करें क्या ग्रेट लीग में? क्या शिवान भाई? आईवी कहां मिलेगी यार? अगले वाले में भी लाए भाई। गजलॉर्ड तो रहने वाली है भाई उसकी टीम में 100%। या मे बी फिर ये Shadow Bombers नो ही कैन यूज एज अ गजलॉर्ड आंसर। क्या इस पे है नहीं? अल्टारिया कहाँ है? चार्जर्ड शैडो चार्जर्ड है तो वैसे, बट डेफिनेटली गजलॉर्ड आंसर ही विल ब्रिंग, वरना जीती होगा। पोर्टलैंड में ये भाई टॉप 16 थे। क्या ब्रदर? शाइनी गजलॉर्ड है क्या आपके पास? हाँ है। शाइनी गजलॉर्ड है क्या आपके पास? आई हैव। हाँ ट्रांसफर कर दो। क्यों भाई? हेलो, एक शाइनी है, ट्रांसफर कर दो भाई। ट्रांसफर से क्या कनेक्शन है यार सबको, यही मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। रजाइस भी अच्छा है एज एन आइस टाइप, नहीं रखा भाई। रजाइस नहीं है भाई, उससे बेटर आइस टाइप से गेम में। रजाइस इज नॉट गुड एनीवे। मेरे पास हंडो रजाइस है राका भाई, पर मैं उसको बिल्ड करने की सोच भी नहीं रहा हूँ, तो समझ सकते हो। बस पड़ा हुआ है भाई वो। आई एम नॉट इवन बिल्डिंग इट। Aerial Ace through, and that really just kind of sealed the deal there in that matchup in that end game.
It did. So again, T-Wastel here with 1-2 versus Shadow Brady 0. If he wins again, he gets to move on in Group C here in winners round 3. Shadow Brady looking to make a comeback here and looking शैडो भाई थोड़े टेंशन में लग रहे हैं गाइस अगर ये मैच हारे तो लूजर्स में जा रहे हैं। ये देखो सब शैडो वुमन लाया भाई उसने, शैडो चार्जिजार्ड भी ले आया भाई उसने। डबल आंसर फॉर गजलॉर्ड और व्हाट। to watch out for those X scissors coming from T-Wastel's charger bug. Yeah, taking 20% more damage from the X scissors is going to be painful. However, I think the Obama इस बार ये भाई गजलॉर्ड के हेवी प्रेप में आए हैं शैडो भाई हमारे। What the hell? Oh भाई। But it's still able to reach this, win the zero shield matchup. The question is, will T-Wastel invest a shield here to win switch? No, opting for foregoing switch, which is actually very good for him because he's got energy advantage going into this matchup. The question is, opting for mirror the matchup. Gligar mirror matchup. I think Shadow Brady should have potentially gone in with the Charizard here because Charizard's going to be paper thin to the Dragon Tails coming from T-Wastel's Guzzlord. That is going to be a rough matchup, but it looks like both of these trainers willing to stay in the matchup. However, they do both यार प्रॉब्लम है ड्रैगन टेल का डैमेज इतना ज्यादा है ना भाई, ऊपर से वो शैडो पोकेमॉन है चार्जर। चार्जर वैसे ड्रैगन ही है राइट? फ्लाइंग और क्या? चार्जर की टाइपिंग क्या है भाई? फ्लाइंग एंड ड्रैगन एंड फायर है क्या? ड्रैगन है फ्लाइंग ना, वही तो फ्लाइंग एंड फायर। हाँ हाँ वही। पर ड्रैगन टेल का डैमेज भाई, ड्रैगन टेल का डैमेज देखो अभी भाई, डैमेज देखो भाई, बस डैमेज देखो, टाइपिंग मैटर नहीं करती भाई। भाई जी है भाई, ड्रैगन टेल वो कोई मतलब नहीं भाई, वो फास्ट मूव डाउन कर देगा भाई उसको डबल शील्ड करके। बोला ना यार, कोई चांस ही नहीं भाई। गजलॉर्ड नेक्स्ट लेवल भाई। Shadow Brady recognizing that he was not able to win that game, and that is going to be a 2-0 victory for T-Wastel. कौन? क्या मतलब रखा भाई? समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो? Team composition and a bit of a celebration from the Whalmers and the Whalelords that are so known here in Vancouver. भाई गजलॉर्ड में उस पूरा गेम भाई। First time visiting this beautiful city, so I've heard the call of the Whalmer before on these broadcasts, but I've never been here to witness it myself. So my very first Whalmer call here in Vancouver. That matchup though was so solid, and I was going to pivot back into that, but I want to talk more about Whalmers. We've seen one of drop our good somebody friends, drop, PvP right? Steve over from Australia. He loves that Pokemon. Ultra भाई का so data क्या many solid runs with it. It's a Pokemon that I think maybe I don't know for certain, but I would put some money on him being the only person to ever have run Whalelord in the Pokemon Championship Series. Maybe someone else has run it. हाँ ये हो सकता है। Maybe not done मैगी की quite बातें well बहुत enough ज़्यादा for हो it रही to be in थी my वैसे। memory. I could be wrong. I'm sure you all at home can type it in chat and be like, oh no, I used Whalmer and Whalelord as well. So always happy to be proven wrong here. All right, let's take a look back at the matchup we just had with Shadow Brady and T-Wastel. Shadow Brady just could not get a foot in the door in either one. गजलॉर्ड ने सेटल ही नहीं होने दिया भाई उसको, गजलॉर्ड ने अकेले ही जीती कर दिया। Still with 2 shields in his pocket. Yeah, God is the goat. वही भाई ड्रैगन टेल का हेवी डैमेज है ब्रो, हेवी डैमेज। ऊपर से ही वाज यूजिंग शैडो पोकेमॉन, तो डैमेज और पड़ रहा था यार उनको। ज्यादा हो गया भाई। Wanted to shield there, gets that energy advantage, but the pretty quick switch from T-Wastel allowing him to go for the Dragon Tail down. Could have maybe gone for a crunch debuff as an opportunity there, but क्या? Guzzlord's so great. It's why I love talking about it. It's so bulky. Great League में, Open Great League, हाँ Great League में यार, it is a good Pokemon in Great League. Those League. Dragon Tails really do add up. Yeah, we were hoping for Guzztober back in Toronto, but Hello Ultra भाई, welcome back. Data recharge हो गया क्या? नहीं मैगी बन गया क्या? 200 MB पे चल रहा हूँ मैं। अरे भाई, मे बी उसका आइस बॉडी आएगा तब यूजफुल होगा। आइस बॉडी मतलब लाइक कुछ लेगेसी में बोल रहे हो क्या उसका? हो सकता है मे बी, अभी तो वो यूजलेस है, रजाई से यूजलेस अभी तो।
मे बी फ्यूचर में कोई मूव अपग्रेड मिल जाए अगर उसका कुछ लेगेसी मूव वगैरह होता है तो अभी तो नॉट यूजफुल You gotta filter out some of the bad ideas so that we keep it a little. I like being silly, but we gotta keep it a little serious here sometimes. All right, let's go ahead and get serious about the next couple of trainers. One of them is definitely one to watch, and that is going to be Rubik's Master. ब्रो ये रूबिक्स मास्टर बहुत ओपी बैटलर है भाई, बहुत बढ़िया बैटलर है ये। फाइनलिस्ट था ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का, एक्शन से ही लॉस। Axon just proved to be the stronger trainer. However, it's Axon nowhere to be found today. So that is just a little. I think chances है रूबिक्स मास्टर ये रीजनल जीत सकता है। Yeah, someone else who might be happy that it's Axon isn't here could be Tiwastel. Let's hear from him about how he thinks Guzzlord played for him in that. एबिलिटीज वगैरह अगर आए ना गेम बहुत बदल जाएगा। एबिलिटीज देखो यार, अभी तो एक ही लाए हैं वो, राइट, लाइक 2 लाए हैं और ओरिजिन डियालिया एंड ओरिजिन पाल किया, बाकी क्या एबिलिटीज लाते हैं वी नेवर नो। Yeah, so I drove up from Seattle yesterday, got in like around 3 p.m. and I actually attended the challenge that they held here yesterday. That was at 5. I was मेरा बैटरी भी 20% है। and it didn't go so hot. I went चार्ज में लगा लो भाई। and so decided, okay, it's time to बेड में हूँ। बहुत आलसी अल्ट्रा भाई आप क्या? figure something else out. So I think the only two अभी मैगी Pokemon खाने की भाग that were अल्ट्रा on भाई yesterday that I'm still हैवी ले जियो क्या? otherwise इस रूम में वो नहीं है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ कहाँ से लाओ? हाँ फिर तो दिक्कत की बात। बैटल में क्या बता रखा भाई? ये मैच तो रूबिक्स मास्टर ही जीतेगा भाई। I support रूबिक्स मास्टर in this match. जो ओपोनेंट होगा भाई वो सोच रहा होगा मेरे को ये बैटल क्यों मिला यार, वर्ल्ड चैंपियन फाइनलिस्ट मेरे को दिया है भाई बैटल करने के लिए। Tell me about Guzzlord and also about Obama Snow. You have Obama Snow on your team? अगर रूबिक्स मास्टर हारा ना भाई ये मैच, Brady had Obama Snow. I'm sorry. तो अपसेट होगा भाई, बहुत बड़ा अपसेट। Maybe that's where my brain If was. it goes into losers bracket. Yeah, the Obama Snow. Luckily, that second game, I was a little worried because my line was a little weak to it, so I was happy to catch it in the lead with that Charger Bug. And I know that matchup can be a little tricky for the Charger Bug if the Obama Snow spends shields, so I was pretty thankful that he opted to not let that X Scissor go, because that meant I was able to take it out in the back with my Gligar and then set up the Guzzlord to be a lot safer. Awesome, Twastel. You said this was your 5th appearance on stream. Is this your first stream win? Tell us about that. It is. Yeah, I've had a tough time on stream so far. You know, my first stream match was against Lemon Lime, who's a very talented player. He beat me. इसका पहला स्ट्रीम विन है भाई। इससे पहले 4 बैटल स्ट्रीम हुए थे पर ही लॉस्ट। सबका स्ट्रीम नहीं करते हैं पर वो चुन लाइक हाउ दे पिक अप कि किसका बैटल हमें शो करना है, ऐसा करते कैसे बे? हाउ डू दे पिक अप? Awesome. Well, congratulations, Tiwastel. Best of luck on the rest of the tournament. Everybody, if you're rooting for Tiwastel or other trainers here at the regionals, let us know on social media. That's all from us for now. Back to you, casters. Alrighty, thank you for those insights, and I definitely agree. We both have a little bit of क्या है वो? experience in the वो Pokemon क्या है? Championship नहीं circuit, पता मेरे and we को। both have experience playing on stage. It definitely adds a नहीं lot मैं तो more नहीं करता tension कुछ, to the battle. मैं तो It's a lot अप्रेजी more करके stress, बाकी and फिर I पोकीज ही also नहीं don't यूज have करता the हूँ और best कोई ऐप तो record नहीं यूज करता। on stage as well, so I can definitely sympathize a little bit there. Yeah, I am 0 for 2 on my on-stage But fast performances. also, Both were gritty battles, but I had two ओह very उसमें भी क्या फोटो वगैरह लाइक स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करना पड़ता है क्या? is one of the स्क्रीनशॉट लेके अपलोड नहीं, वो आपके साथ ओवरले पे चलता है। ओह Yeah, so we'll have to see if she is going to have a long run here and maybe come back for the title. Our other champion, क्या बोले? आपका नाम क्या बोला आपने? वो रियल टाइम आईवी बताता है कि क्या सीन है कि मतलब कैच करने के बाद ही आईवी बताता है? रियल टाइम आईवी बताता है आफ्टर कैचिंग, कैच करके उसमें आफ्टर कैच ही बताएगा वो। में जाके ना But here he has this opportunity because its Axon is nowhere to be seen.
can Rubik's Master win his own championship title here tonight? That's definitely got to be on his mind. But let's go ahead and go to the stage. The players are ready. They're looking at their teams. They're trying to figure out what their best lines of three The are. Viper is Speaking Snape. of the man himself, Rubik's Master on the left, Viper Snipe on the right, and we have some really unique Shadow Dragonair. teams here. Interesting. Celia, a Pokemon that we as casters predicted was on the downfall in Alolan Sandslash, Chargebug, Shadow, Poliwrath, Talonflame, and Altaria. Another one of these double flyer teams, maybe a combination that we haven't seen as much before. I think we typically see Gligar as one of the two Pokemon paired up, but Altaria kind of taking its place as the flyer that has a better matchup against Lantern. All right, let's take a closer look at Rubik's Master's team here over on the left-hand side. So talking about the Cresselia, there is that. Yeah, everybody Talonflame, like they are keeping it in the team, पर वो use नहीं कर रहे हो. They are not using it. But Talonflame अच्छी खासी टीम में है अभी तो. इतने इलेक्ट्रिक टाइप होके Talonflame कैसे आ रहा है मेरे को नहीं समझ. Because of Chargebug इसलिए क्या? Also, Talonflame, very interesting. It's missing something. Alpha Phoebe. Ray Bird and Fly. भाई इसमें तो क्या? A little bit of different coverage than Flame Charge. इसने flame, like he's not running Flame Charge. वो Brave Bird और Fly run कर रहा है भाई. He's not even running Flame Charge on Talonflame. On the other side of the Annihilate, table, Annihilate take a जैसे look लोगों at को Viper लेके Snipe, जाता है and we'll have to see if this trainer has brought Viper himself, and no, it's not there. We have Purified Sableye, Azumarill, Skarmory, आप क्या बोल रहे थे शिवान भाई? Chargebug, Whiscash, and Shadow Dragonair. So it's a bit of a fight between Shadow Talonflame के बारे में Dragonair कुछ बोल रहे थे क्या? Altaria. Which ये of भाई the two is going to be the better Dragon? इतने इलेक्ट्रिक टाइप्स होके Talonflame फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा. हाँ, मैं ये कह रहा था कि वाटर टाइप जाता है, वाटर टाइप के लिए ग्रास टाइप जाता है, तो वो उस ग्रास का एंट्री लाया है. ज्यादा ग्रास पर हमें दिखे कहाँ यार? अभी तक तो एक भी ग्रास नहीं दिखा हमें. मतलब अभी तक नहीं दिखा, मे भी आगे दिख जाए वो अलग बात है. So can Viper Snape set up that Shadow Dragonair with that opportunity, or is he going to be aiming पर टैलेंट पहले से to उसमें भी तो have था, a different Pokemon रियल में shine? टॉप में था. हाँ वही पहले था, अभी तो टैलेंट डाउन हो चुका है. वही तो मैं कह रहा हूँ, पर फिर भी टैलेंट इधर रीजनल्स में they are using. मैचअप में नहीं यूज कर रहे, पर टीम में रखा है उन्होंने गाइस. वो सीन है. हाँ टीम में रखा है उन्होंने, भले ही वो 3 में ना लाए, टॉप 3 में, पर टीम में रखा है उन्होंने. No fire type, so it looks so safe. Sableye, neutral matchup. Azumarill, depending on the Azumarill's moveset, and if I look closely, if I peer through my looking glass, it is running Ice Beam Play Rough, so that is a positive matchup for that Sandslash. It is a Shadow Alolan Sandslash. Rubik's भाई चैंपियनशिप जीतना है, ठीक है? रीजनल चैंपियनशिप हमारा फुल सपोर्ट है आप. For that Sandslash. Skarmory, solid matchup, but with Steel Wing being the move of choice, it's a bit more neutral because you're dealing neutral damage as opposed to resisted damage with that fast attack. Chargebug, very neutral. Whiscash, a bit of a losing matchup for that Alolan Sandslash. And then, of course, Shadow Dragonair, another positive matchup for it. It looks so safe. Something else that looks Altaria pretty into safe right now Sableye. is this Altaria being able to do a lot of really good neutral damage here in this opening matchup against this best buddied Purified Sableye on the side of Viper Snape. Viper Snape going for the foul play right away instead of... It didn't even build up to return, right? Yeah, Altaria really showing her love for this matchup here. So solid. Sky Attack coming through, doing a lot of damage. I think actually pivoting out. Rubik's Master going into that Chargebug, pulling out the Whiscash. I love this. It's a solid ABB line from Rubik's Master. Pulling out the Whiscash with the Chargebug, making sure that Altaria could potentially get a farm down later. Great team composition from Rubik's Master. Yes, and we have here the Whiscash going for the scald damage. Like you mentioned earlier, Alpha Phoebe, this we mentioned the Shadow Alolan Sandslash on the side of Rubik's Master looks really good, but this Chargebug also looks really good here into Viper Snape's team. There's a lot of neutral or just really positive matchups for it. Yeah.
Mud Bomb coming through, great timing from Survivor Snape. This is going to threaten a knockout into the Charger Bug. I would expect to see a no shield for Rubik's Master, saving those shields for that Alolan Sand Slash in the back. Altaria coming in, going to get Altaria a farm big down farm करेगा, down, easy reaching for farm. the Scald for a potential debuff. This will be a nice debuff if it lands. That 50% chance will potentially force Rubik's Master to switch out before throwing a Sky Attack, and it does not look like the debuff. नहीं मिला ना attack debuff? No, and नहीं here मिला. we have Charger Bug भाई, needs जब जरूरत होती है नहीं मिलता यार. switches in order to get to its charged attack. वो bug अभी fix नहीं हुआ है ना? Getting अरे as यार much विनर को damage as possible, and विनर को क्या मिलेगा? विनर को ट्रॉफी मिलेगी और क्या मिलेगा? वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए पॉइंट्स मिलेंगे और फिर पता चलेगा कि if he qualifies or not, और क्या मिलेगा? Yeah, with two shields on his side, I was a bit surprised to see Survivor Snape going for the discharge there. I think that would have been a pretty safe X-Scissor bait, but if the bait was called, it would have really just not done any damage whatsoever. Going for the next discharge here, Rubik's Master needs This will hurt. अगर ये shield नहीं, oh भाई. no shielding this time. This is going to be a neutral discharge. It does a decent amount of damage. Will Rubik's Master be able to make it to a drill run here, doing 2 Shadow Calls, allowing that full volt switch through? However, I don't think it's going to apply because I think this drill run will knock out. And it does. The Charger Bug goes down, so some very good timing, and we're going to see a simultaneous knockout. भाई, what the hell? आप लोग ये नज़लॉक वगैरह देखते हो क्या? क्या चीज़? नज़लॉक? नहीं, वो होता क्या नज़लॉक? मेरे को समझ नहीं आता है. What does it mean? अरे वो एक्चुअली क्या होता है, जो गेम्स नहीं होते पुराने फायर रेड और ये सब में, उसमें अलग अलग चीजें ऐड कर देते हैं. ऐड मतलब चाइनीज डाल देंगे, खुद से ऐड करते हैं. देखो ये होता है इसमें, मतलब रूल्स ऐड कर देते हैं. हाँ रूल्स है एक्चुअली. ये होता है जैसे कि आपका एक पोकेमॉन अगर फेंट हो गया तो फिर वो आपका हमेशा के लिए यूज नहीं कर सकते. हाँ वो मर गया. तो मतलब जो खेल रहा है रूल वही बनाता होगा, राइट? है ना? नहीं वही बनाता है. तो कौन बनाता है? नहीं वो नहीं बनाता. मतलब ये रूल है, वो सेट है. अच्छा, रूल सेट पहले से डिफाइंड है क्या? ऐसा क्या? हाँ वो चाहे तो कुछ ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी. अच्छा, मतलब प्री डिफाइंड है पहले से, ऐसा है क्या? फॉलो करना पड़ता है. हाँ. अच्छा, ओ नहीं पता था. नो आइडिया भाई, मैं कभी नहीं खेला. Playing so many top tier battlers here, so if you're above 50%, you're honestly doing great. I would tend to agree. I think in schooling, 60% isn't as great of a grade. However, here in Pokemon Go PvP, 60% is pretty भाई fantastic. 80% win rate है भाई Rubik's भाई की this season. What the hell? This season. However, he hasn't played in 80%? Yeah, भाई 80% है भाई इसका win percentage. What the hell भाई? and we only have a Hero battler or what? regionals in this area. सामने वाले बंदे का भी 60% था भाई. Hero battler भाई. And also, I think we've had some a little bit closer. I mean, आज सबको संडो मिला है क्या? सबको मतलब और किसने मिला? सबने यार मिल ही जाता है. सबने संडो को ओवरऑल देखोगे तो यार बहुत लोगों को मिलेगा ही, राइट? ऑल ओवर भाई ये तो भाई ड्रैगन ब्रेथ ओपी है भाई. ड्रैगन ब्रेथ स्पैम इज ओपी भाई. Rubik's Master making a beautiful catch onto a Charger Bug where that damage is going to be resisted. नलिफाइड हो गया भाई And I पूरा. would say almost a bit of an unnecessary catch. However, he's playing the same game as game number 1, pulling out that Whiz Cash, making sure that Altaria has play. Later on, can farm down the Whiscash, come out with charge attacks. X's are still neutral damage into Whiscash, able to put in some pressure. I think able to get off another X. सेम टीम ही है ना? इनकी टीम चेंज नहीं किया ना इन्होंने, ऑर्डर चेंज किया बस, राइट? Yeah, not only making sure the Altaria has play later, but that Shadow Alolan Sandslash in the back is going to just be able to tear through the rest of these teams, especially if Rubik's Master employs that same strategy of game 1 by saving Protect Shields for the end of the game.
So Viper Snape forced to throw another mud bomb here before Still Rubik's kill Master him reached anyway. a third and threatening X Scissor, knocking out. He will farm down again with Altaria. Why scene by? Immediately switch, and I love that from Rubik's Master, knowing that if I wait too long, so Viper Snake could potentially switch out, and this time not even able to reach for the Scald, going for the mud bomb. This is double resisted by the flying type. It's going to do no damage. I think Rubik's Master would have still no shielded if it was a Scald, but not even being threatened by the debuff chance is so good for Rubik's Master here. Yeah, Rubik's Master just looks so solid here in game 2. Like we mentioned earlier, these electric type charge attacks are only going to be doing नहीं पता यार, मेरे को भी नहीं समझ रहा है, वो डबल टैप कर रहा है भाई वो। डबल टैप कर रहा है। क्या पता? डबल टैप से होता क्या? वही तो अपन भी वही सोच रहे हैं कि उससे कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? मे बी जल्दी टैपिंग होती होगी compared to one tap. So much for Rubik's Master. She don't know where to draw the रेड में line तो in अफेक्ट terms of करता how है तो much मैं जानता potential she has, avoiding a zoom roll every game. So Viper Snake really feeling uncomfortable. इधर पता नहीं ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंस तो नहीं होता होगा। वो प्ले स्टाइल पे अब जिसको जो जैसा Rubik's पसंद Master feeling very comfortable with his ability to get to these charge attacks. I don't even need to bait an ice punch. I have अल्टीमेटली एक टैप से बस एनर्जी मिलता है तो वही है, एनर्जी मिलेगा वही है। टाइमिंग का थोड़ा डिफरेंस हो तो थोड़ा फास्ट या स्लो वैसा। And it is definitely going to knock out. So Viper Snape does not have his switch timer available to even attempt a catch. So is forced to throw a charged attack here. The switch timers are coming up quickly, but not enough time. So this drill run is going to clear the Sableye away from the field of play. I think GG Rubik's is gonna win, right? Knocked out. Chargebug coming back in with just a little bit of health, but Shadow Claw. 3 Shadow Claws from that Shadow alone. By Rubik's Master को हराना is a bit difficult, man. Out that Sableye, or excuse me, that Chargebug. Game number 2 goes भाई to 80% win rate देख के ही भाई दिमाग हिल गया भाई। क्या कैसे बैटल करता है भाई? 80% win rate बात है। लेजेंड तो कुछ नहीं है भाई इसके लिए। Because of the way that Rubik's Master had formatted his team, the Shadow Alolan Sandslash with Shadow Claw, आपका win rate कितना है? Chargebug able to push it away. Cresselia. मेरा win rate अभी क्या? अभी तो मैं रैंक 20 भी नहीं पहुंचा, रैंक 18 पे हूँ भाई। Is obviously not a great matchup, but we talk देखना पड़ेगा, मेरे को पता नहीं है, कल चेक करूंगा क्या है हमारा विन परसेंटेज। Even a Zoomerl, water fairy typing, resists इस बार का पता है क्या है? every कितना है? single typing that Poliwrath has in terms of its own typing and its charge attacks and fast attacks, minus mud shot, but you don't typically अभी तो see मैंने mud shot. 100 बैटल्स 100 मतलब फर्स्ट पेज मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे को 5 बैटल्स और विन करने हैं। 95 पे हूँ मैं, पर पाके कितने मैचेस खेले वो मेरे को याद नहीं है। पीपी स्निप पे चेक करेंगे हमारा क्या है विन रेट, पता नहीं है अभी तो, मंडे चेक And करेंगे। what we saw was Rubik's Master employing the same strategy twice, saving that Shadow Alolan Sandslash in the back of the matchup with shields and was able to just tear through Survivor Snape's team. So but what is Shadow Alolan Sandslash weak to? It's weak to counter users, it's weak to fire. Survivor Snape had neither. Yeah, it's so good in the right teams. It's contentious because बस भी बहुत कॉमन है यार, है ना? Everybody is using bus also. Lickitung bus, ये Pokemon is like they are very common. Really solid neutral damage with either 2 of your charge attacks, but fighters don't typically take super effective damage from Ice Punch or Drill Run. So stats में दिखाया था, पर लैंडन से ज़्यादा बस यूजेस था। Those Pokemon that are able to knock you out in 6, maybe 7 seconds. Feraligatr तो यूज ही नहीं, अभी तक तो किसी भी टीम में नहीं आया है। वो नहीं आएगा, कोई चांस ही नहीं है। इतने वाटर टाइप, इतने इलेक्ट्रिक टाइप्स हैं फेरालिगेटर, मेरे को तो ही नहीं लगता भाई कि आएगा। एनीबॉडी विल डेयर टू यूज इट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जीजी हो जाएगा। Why he thinks this is the meta for that Shadow Alolan Sandslash. Take it away, Jim. All right, thank you, Nick and Stephanie. I appreciate both you guys taking us through the matchups. I am Wholesome _ aka Jim, here with Rubik's Master. We want to just take a quick minute to get some of your thoughts and reflections on your most recent match.
Well, I thought Altaria was pretty good in this matchup, so I really liked it. And I built the team of Altaria, Chargebug, and Alone Sandslash. And I built that team with safe swap Chargebug to pull out the Whiscash, and then Alone Sandslash would be able to sweep whatever's in the back line. Okay, a lot of great strategy here from Rubik's Master. No stranger to success, though. We've seen you perform significantly well in previous tournaments here. How are you feeling about the meta, though, in our current tournament here in Vancouver versus some of the metas that you've played in the past? Do you feel more or less comfortable? I think the meta is pretty balanced. I spent a lot of time team building. I feel like my team still might have a couple holes, but I do like this meta. It's probably not the worst meta we've had, so I've been having fun team building, and I really like the team that I've brought here today, so hopefully I can do well with it. All right, I want to ask you maybe a little bit of a tough question here, but what's your motivation at this point? Obviously, you've had success at the regional level, at the world's level as well, but what is motivating you now, and what's that next challenge for you? I mean, it would be amazing to win an entire regional, but I still don't have my world's qualification. Last season he was not playing क्या? Last season इसने नहीं win किया था. Interesting. Somebody else won the championship. So I'm trying to go for that. I think you're at 322 championship points currently. Trying to work your way closer to that 500. Hopefully you can do that. Before we wrap up इसको here, any other 170 shout-outs points that you और want to चाहिए. have, or any other last comments? Well, To qualify for the world. Back in Washington State. 322 पे ही है भैया. Everyone who came up here with me. अगर आज like if he wins this regional तो उसको 200 पॉइंट मिल जाएंगे. He will qualify then. Scrimmed and played against. If he wins this region. All right. Well, thank you, Rubik's Master. That's all we're going to have time for here. Thank you so much. Wishing you all the success. We're going to take a quick break here. Yo Vivek bhai, welcome back live अब. Watchparty चल रही है. 1 घंटे अभी और देखेंगे. Competitive Pokemon Go, I got into. कल तो और ओपी बैटल्स होंगे. अभी तो ये चलेगा 5-6 घंटा चलेगा आई गेस. दिक्कत वो कि इन्होंने वो स्केड्यूल नहीं दिया यार कि मतलब कितने मैचेस हैं आज के. वो स्केड्यूल इन्होंने बताया नहीं यार, जिससे अपने को आइडिया लगता है. हम अभी 1 घंटा और देखेंगे, उसके बाद अपन आज ज़्यादा नहीं देखेंगे, कल पूरा देखेंगे. क्योंकि कल फाइनल्स होगा ना पूरा हैवी. कल चैंपियनशिप तक देखेंगे कल, till the end. Who wins the regionals? Milestone for me to really feel like it paid off. My favorite Pokemon, that's easy. That is Mawile, the Steel Fairy type. I think it's a really, really cool design, and it's just an awesome typing. I think one that just comes to mind immediately is Defai, one of the casters in Pokemon Go PvP. थोड़ा अच्छा ऑडियंस वगैरह का. यार आप लोग प्लसीज रखते हो क्या? Like, do you guys buy प्लसीज? Pokemon प्लसीज रखते हो क्या? मेरे पास है तो. कौन से आप लोग? मेरे पास ग्लाइगर का है. ग्लाइगर का है मेरे पास. ओ भाई. हाँ. शिवांश भाई आप पे? Because he beats me every time, and I would love to finally beat him. अच्छा, अपन भी नहीं रखते हैं, बस पूछ रहे हैं. हाँ, रखने का मन है पर अभी रखते नहीं हैं. यार पर ये बहुत एक्सपेंसिव आते हैं ना यार, अल्ट्रा वाइड. There are many amazing Pokemon regions. I think Kalos is one that Hello? I क्या really बोलूं like भाई just because that's when the fairy type was क्या introduced बोलूं in the मैं game. मतलब? And there's just a lot of really cute Pokemon मतलब like the Denet. अरे मतलब प्राइसेस वगैरह आउटसाइड रीजन वाइज वैसा सेट रहता है ना, है ना? No. Pineapple is not supposed to be hot and mushy. It's supposed to be मतलब like ओरिजिनल लोगे तो प्राइस ज्यादा पड़ेगा. अगर सेकंड हैंड नकली लोगे ना तो फिर ओरिजिनल कौन लेगा यार? सेकंड ही लेके यार. So yes, I would call my siblings. ये भाई आ गए हमारे क्वैक्स, लीफ कोको और स्प्रिगेटी को. भाई ये तीनों स्टार्टर्स यूजलेस है भाई, नॉट यूजफुल एनीवेयर. नहीं. अरे सॉरी, स्केलेडर्स को छोड़ के. Skeledars is useful. I take my words back. भाई जेफ भाई यही तो थे हमारे पहले मैचअप में. जेफ भाई जो जीते हैं, फर्स्ट मैच जो हुआ था आज का, जेफ भाई थे. चैंपियन है भाई. He has already become one-time champion. क्या? What? आपको तो स्प्रिगेटी तो पसंद था ना? अरे मतलब यूजफुल बोला कि यूजफुल नहीं है. मैं वो क्या? यूजफुल भाई. स्केलेडर्स को छोड़ के बाकी दोनों यूजलेस हैं, वो कह रहा हूँ मैं.
My favorite moment from क्वेकली का फाइनल इवोल्यूशन का नाम क्या था? was actually the very first वाकावाल है ना शायद कुछ? Pokemon Go on that big stage. वाकावाल It's ऐसे just कुछ sort of है। like eye-opening to me and really inspired me to start my own play Pokemon journey. बहुत फनी है पर यार वो प्लसीज विवेक भाई वो जो मतलब टेडीज टाइप नहीं आते पोकेमॉन के प्लसीज वो कह रहा हूँ वो मतलब हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं वो विवेक भाई पूछ रहे थे वो हाँ सॉरी It feels amazing to win a regional, especially after Pittsburgh. फ्यूको का सेकंड इवोल्यूशन का नाम क्या था? किसका? फ्यूको का बीच के इवोल्यूशन का नाम क्रॉकलर हाँ क्रॉकलर के हेड जैसा है ना? हाँ ऊपर में हाँ वो असल में बर्ड का एग है। क्या है? बर्ड का एग है ये क्या है भाई? स्केलेटर के नोज में रहता है एक छोटा सा बर्ड। हाँ अच्छा उसका एग है। भाई शाइनी लैटियोस कौन हुआ पता है? शाइनी लैटियोस कहाँ? अरे यार दूर हुआ यार दूर भाई मैं सोचा अभी किधर शाइनी लैटियोस आ रहा भाई ये क्या हो रहा है? मेरे को लगा शिवांश भाई भी जादूगर बन गए क्या चले गए दूसरे जगह। शिवांश भाई का स्ट्रीम डीसी और वो चला रहे एक साथ ओ भाई ओ भाई जीत के भाई क्या खुश हुए भाई ये पॉटमैन। सबके पास प्लशी है भाई वो रखते हैं यार दे हैव सम लकी चार्म एंड ऑल। अरे हगबग भी कर रहे हैं भाईचारा बहुत है भाई फाइनलिस्ट थे जिसमें से ये जीत गए भाई हमारे। I have to be focused. I cannot be sad for this, and let's try to win that 3 matchups in a row. स्पेस मेजर कर रहे हैं भाई 2-0 से ये 3-2 जीत के गया चैंपियनशिप बंदा भाई एक नंबर भाई। Tonton is a great player. He has so much level. He's the UAC champion of 2023. It was a complicated. जरूर आपने लिया क्या? You bought it? I will try to go to more regionals. Also, UAC. 3 भाई बोल तो रहे थे कि 3 भाई लेने वाले थे पता नहीं 3 भाई ने लिया कि नहीं I have no idea. Great points. And then if I can get maybe that 29 travel award, will be nice. And then मेरे नॉलेज में तो सिर्फ 3 भाई हैं कि लाइक he told कि वो लेने वाले हैं बाकी उन्होंने लिया कि नहीं पता नहीं। क्या है बीच में ले? Did you complete the research? कंप्लीट कर दिया क्या आपने? अभी वही कंप्लीट कर रहा हूँ ना इसलिए पूछा। बहुत टाइम टेकिंग है क्या सीन है? टाइम वैसा तो नहीं है ना सेम ही जैसा तो नहीं है ना टास्क वगैरह मतलब सेम ही जैसा तो नहीं है। सेम ही तो बहुत हैवी वाला था। अच्छा मतलब ये है 25 ग्रास से कैच करने अच्छा वो सब तो हाँ वो नहीं तो फिर हाँ नहीं मतलब मैं वही टास्क का आइडिया ले रहा था। मेगा भी आ सकता है ना? मेगा जरूर है पता नहीं मेगा जरूर एग्जिस्ट मेगा जरूर आने वाला है मेगा जरूर है पर पोकेमॉन एग्जिस्ट करता है क्या मेगा जरूर पता नहीं मेरे को। ये जो नया गेम आ रहा है ना 2025 में उसमें मेगा है क्या? पोकेमॉन एजी हाँ उसमें आ सकता है अभी तो नहीं है। तो वो एक न्यू होगा राइट? दैट विल बी अ न्यू पोकेमॉन इटसेल्फ है ना? मेगा इवोल्यूशन हाँ तो मतलब न्यू ही होगा राइट? न्यू क्रिएशन ही होगा ना मैं वो कह रहा। अभी तक तो इट डज नॉट एग्जिस्ट इटसेल्फ राइट? तो वो न्यू क्रिएट करेंगे ना वही कह रहा। अभी नहीं हाँ तो फिर और भी आएंगे सिर्फ एक ही नहीं आएगा ना 2-3-4 आएंगे राइट? We're going to kick things off here with Andrew Manyaras versus Dapper Disc. This is a Andrew versus sneaky Dapper high-level matchup, right? These aren't two trainers we mentioned before, but Andrew Manyaras मुझे तो साइक्लोजन का मेगा इवोल्यूशन चाहिए। in our first season of Pokemon Go. एग्जिस्ट करता है क्या? Versus Dapper Disc. नहीं आएगा ना आने वाला है ऐसा क्या? वैसे सही है लाइक दे हैव टू ब्रिंग न्यू मेगास क्योंकि मेगास भी अब अल्टीमेटली खत्म ही हो गए हैं राइट? कोई न्यू मेगास तो आया नहीं। और
So I'm very न्यू curious to टाइपिंग भी see आ how he's सकती going है to be matching up here. Let's हाँ, actually तो they take a have look to at think this कि team वो build specifically. करें, right? We're seeing the Registeel, Purified वीडियोस में Sableye देखा है plus न्यू टाइपिंग भी आ Sableye, सकती है, जैसे कि अभी met with फेरी the सुपर इफेक्टिव Vigoroth, चल रहा है ना the सब पे, Shadow हाई Whiscash, सेविंग Shadow मूव्स, Gligar, and Cresselia. स्पैमिंग सब है फेरी में। पहले ड्रैगन में था, पहले ड्रैगन में था, अब फेरी कर दिया, और फ्यूचर में और भी आएंगे ना। पहले जैसे टोगेकिस को कोई यूज नहीं करता था क्योंकि वो फ्लाइंग और नॉर्मल टाइप था, फिर जब फेरी आया तो उसे फेरी टाइपिंग मिली है, सब यूज करने लगे, चार्म स्पैम करने लगे। वही फेरी तो यार अभी भी ओपी है भाई। I think it was one of the most dominant Pokemon, and maybe fell away for a little bit. We're seeing it again here, without a doubt. And in fact, you can see Shadow Whiscash represented. Shadow Whiscash, Shadow Gligar, Lickitung, ये तीन तो उन्होंने बताया था कि like heavy use होता है। Skarmory, Lantern। भाई मेरा तो favorite Lantern है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। कोई भी कप हो, Lantern will not disappoint guys। Lantern disappoint नहीं करेगा आपको। बस ग्रास से दूर रखो, Lantern is good। वो इलेक्ट्रोस कौन सा टाइपिंग का है? इलेक्ट्रिको? कौन सा? इलेक्ट्रोस, वो इन जैसा पोकेमॉन। वो भी इलेक्ट्रिक ही है ना शायद? इलेक्ट्रिको? इलेक्ट्रोस ना, हाँ इलेक्ट्रिक टाइप ही है शायद वो। डुअल टाइपिंग नहीं है, आई थिंक वो सिंगल टाइपिंग है। प्योर नहीं हूँ मैं, प्योर नहीं हूँ मैं शायद। ये भाई देखो, ये भाई पॉलीगॉन और उसके प्लस ही वो भाई वेग इनटू स्कारमरी, ठीक है भाई। Keep in mind, these are not same type attack bonus. So in the one shield matchup, you have to give a little bit of an advantage to the Skarmory. We actually see a charged attack priority. What the team? Big, Shadow Whiscash, and Cresselia. Shadow Whiscash, Skarmory, and Lantern. भाई इनको थोड़ा अलाइन करना पड़ेगा। पता चला Whiscash अगर Lantern पे गया ना तो ओ भाई हेवी ब्रेव बर्ड, heavy brave bird. Mud shots are so heavily resisted. The Skarmory can actually afford to stay in. Maybe try to catch charge stack. Goes for the sky attack, and the 9% charge because of the switch in allows Dapper लगा लो ultra भाई। Yeah, and Andrew knows this isn't a brave bird, but still this is a Shadow Whiscash. You don't really. Yo संस्कार भाई, welcome back. I can join now. इस मैच के बाद आपको मैं ड्रैग करता हूँ, ठीक है? ये बैटल ये मैच ओवर होने दो, I will drag you. मैं चार्जिंग में लगा देता हूँ, 20 मिनट बाद आता हूँ। लगा दो, लगा दो। Now actually here comes the Mud Bomb, which will threaten to knock out Dapper Disc Whiscash as well. I really like Andrew Minyaras with the counter punch here, the 1-2 Scald Mud Bomb combo to take away that Protect Shield and try to force his opponent back, because it definitely feels like Andrew's on the back foot in this matchup. Scald gonna get fired off here by Dapper Disc, recognizing the Shadow Whiscash takes so much damage, does use Protect Shield. Oh, debuff हो गया। But he's gonna go for the Mud Bomb. I expect Andrew to want to protect his Whiscash here because he doesn't have a great answer for that Skarmory in the back. That Skarmory is still relatively healthy. He has a Cresselia which only does resisted damage. So आपका थोड़ा पीछे चल रहा है क्या? How am I going to neutralize that Skarmory? My Vigoroth has almost been completely मेरा भी removed live from ही the है। field. My थोड़ा सा सी ओ भाई that Whiscash almost goes down there, but finally able to get to one move, and this does give him switch advantage. The only thing I'm worried about is, does this just give energy to the Skarmory to be even more devastating? Dapper Disc looking for the undercharge there, but ends up resulting in the Mud Bomb knockout. Tapping for the Cresselia will sweep, right? Cresselia तो sweep कर देगा भाई। Now, at this point, you have to be cognizant of a grass knot catch, right? If you throw it at the wrong moment, your opponent could decide to switch. होगा, obviously होगा। ग्रास नॉट तो वो नहीं हटाएंगे। मे बी मून ब्लास्ट के बदले दे कैन यूज फ्यूचर साइड पर ग्रास नॉट तो कंपलसरी रहेगा। Any damage that he can from his Lantern, bringing the Skarmory to absorb all of this energy. I don't even think the Skarmory is in range that one future sight is going to knock out. I think it's going to be able to tank this, still get to a move, and therefore force Andrew to actually throw some additional energy. Perhaps a double resisted Grass Knot. It's so close, but the Cycle Cuts can't get the job done, and Andrew can't close the door on the Skarmory in time. Here comes a flying type charge attack from the Skarmory. This is going to be the Brave Bird. Oh, second Brave Bird to connect in this game alone. Yeah, now we're भाई ये भाई सिर्फ ब्रेव बर्ड थ्रो कर रहे हैं यार।
but you've got almost a full HP Lantern at this point, GG able हो to गया भाई। spark down, no problem. There's a Whiscash still hanging out here. It's GG हो not going to गया hang on for long, though. And game number 1 going to Dapper Discs and his भाई अगर विस यार ये अलाइनमेंट कैसे बिगड़ गई? इंटरेस्टिंग भाई। Even if that future sight would have knocked out the Skarmory because एक Lantern ब्रेव is such कर a ले पूरा bulky गेम Pokemon. भाई वही जो इनिशियल ब्रेव बर्ड उन्होंने थ्रू किया ना भाई, जीजी हो गया उधर ही भाई। हैवी एडवांटेज हो गया वहाँ। संस्कार भाई आपको ड्रैग कर रहा हूँ मैं, ठीक है? रूम 1 में आ जाना, ठीक है? वॉइस में। That Skarmory landing that Brave Bird early on, taking out that Vigoroth was so impactful. Looking at this replay, you can already see the scenario. This Cresselia has just too much work to do. Has to take out a Skarmory, but परमिशन दे दिया आपको। रूम 1 आ जाओ वॉइस में। रूम 1 and just wipes the field of that Cresselia. At that point, you have a huge HP disadvantage. एक्सपर्ट बैटलर आ रहे हैं गाइस, ओपिनियन शेयर करेंगे संस्कार भाई के साथ, मस्त चिल करेंगे। Into that Vigoroth and the no shield, I think really set the pace for that entire game and put Dapper Disc so far ahead it was hard to come back for Andrew. I'd call it a finesse play, right? That was very high finesse to throw Hello that sir, Brave Bird unmute in the कर middle लो of sir। those 2 protect shields, just totally disregarding the resources that Andrew had available to him. Speaking of Andrew, favorite Pokemon includes the Porygon family. I never would have guessed that with the plushie there on the on the Shot to Sableye, it was not enough. Vigoroth just डबल डिबफ मिल गया क्या? What the hell? all of its HP. My questions here in this Oh game भाई। 3 will be, do we see the return of Cresselia? Do we see Crest the को वो भी return बैठा भी of दिया था the यार, Skarmory? I think that those are 2 of the most impactful, albeit kind of divisive Pokemon here that we could bring between these 2 trainers. Battle I तो think miss that हो गया Andrew वाली wants to हमारी। play things safe, just like you said. So I I think think we are that he back। really likes that Vigoroth. As long as he's able to avoid that matchup लाइट with आ that जाए वरना Annihilate, जीजी हो it जाएगा, looks हमें एंड pretty करना good पड़ across जाएगा the board. Now, the one exception to that is taking a Brave Bird on the chin from that Skarmory. That's one thing you want to avoid as well. But other than that, I think it's got pretty solid matchups. More like on the Whiskers, Jim. But That's स्ट्रीम right. तो आया पर I लाइट think नहीं for आई है, Dapper अभी Disc, प्रॉब्लम ये the हो kind गई। of gravity of this matchup kind of hinges on the core of Annihilate and Skarmory, 2 pivot Pokemon. ये बैटल देखते हैं, ये Skarmory बैटल is तक much क्या more होता है, effective in game उसके बाद number एंड 1, करने but वाला if he नहीं brings आया तो both of those कल ज्वाइन Pokemon, करते it हैं। really limits the options here for Andrew. I mean, Annihilate versus the Registeel or the Vigoroth is really tough. Skarmory versus the Cresselia or the Gligar is very difficult. So maybe संस्कार भाई reach म्यूट for पे a ही है third क्या? option हेलो if you're संस्कार Andrew. भाई, Maybe the शर्मा रहे हो Sableye क्या? makes another appearance यार here भाई कुछ yet बोल again in नहीं game रहे। number 3. अरे We're gonna भाई find नहीं out. शर्मा He नहीं hasn't रहे। brought Registeel at all. बोले I यार। don't anticipate him bringing that here. स्वागत है I आपका। think the only reason he would be bringing that Registeel if he's trying to make a hard read on that Skarmory yet again. True. He does have pretty neutral matchups into that Skarmory though. If you look at his lineup, yes, he's got the Gligar, yes, he's got the Cresselia, but other than that, he's got pretty neutral to positive matchups. So I think that he has enough balance that he doesn't necessarily be forced to bring it. Let's find out though. Game number 3, decisive game number 3. Here we go. This is a very tough lead for Oh Andrew Munoz, भाई, but Dapper Disc Sableye had into the Lickitung, courage to lead his safe Lickitung after encountering that Vigoroth in game number 2. We see the same swap into Shadow Whiscash. This doesn't get much better, Jim. There's still so many ways that Lickitung can hit back. That's right. Well, here comes the first body slam and actually baiting that power whip. So this But does force the shield from Andrew. He does not want to see his Whiscash off the He field. cannot Desperately switch needs though. to try and flip switch at this point. Actually goes for the Mud Bomb. A little bit surprising here. You would have thought that we would have seen a Scald maybe go for a debuff potential. Knowing that there's the opportunity to still swap out though, maybe just wants to go for the consistent damage. Maybe consistent damage, maybe trying to bait away a गलत है, यहाँ protect पर shield spur from the मारना Lickitung, but he doesn't get either of those. We're going to see the body slam come through. The second protect shield from Andrew, and this is looking really tough. Yeah, all things going the way of Dapper Discs right now. And if you think about this, realistically, he's got 2 great answers to that Registeel that Andrew wants to get aligned versus his Lickitung here. Here comes another no-shield. No shield. Oh my. I guess my PC Second will mud die, bomb guys. rattling So off here from the Whiscash. Anticipate the or back-to-back because Andrew power really आएगा likes तो I'll this kind of retry, 1-2 okay. punch with this Whiscash. He did it in game number 1. He's coming back to that in game number 3. Mud bomb after mud bomb, just trying to shovel the dirt onto this Lickitung. Okay, well, he's letting this one go as well. This Whiscash does still have some additional energy, but going straight for this Annihilate, going for the हाँ full देख counter सकते हो, मैं भी down मतलब ऑफलाइन देखते ही रहूंगा, स्ट्रीम में एंड नहीं करूंगा, राइट बैक आएगी तो आई विल वापस से रीच go at that point. First protect shield at the gate for Dapper Disc does get deployed on the Scald. Debuff does not come through, and Annihilate is just raining havoc on the Sableye here. Well, you're thinking to get yourself, the all one right, shot. well, this Sableye has got to get some value here, but again, no protect shields. This Shadow Ball is neutral damage, so it's going to hit quite hard. These are resisted counters, but no, we have a swap out. This is going to bring in the Gligar. You might even be in range where this Gligar can farm all the Whiscash way ने debuff down. किया था क्या? Andrew called the Skarmory in the back. Jim, you were right. He tried to call it out. He brought the Registeel. Now that he sees the Gligar and the Annihilate, he knows there's nowhere for Registeel to go.
And you have to give it to Dapper Discs for making a huge play early on. It's so tempting to swap out of that matchup when you say, hey, you know what, I can bring in my Annihilate here into this Whiscash. No, he just stayed in, and then that Registeel has no target, so it played exactly into what Dapper Discs wanted, that swap that Andrew did early on. And you see there the expression. I mean, he knows it. Annihilate in the field. He is able to take away that final protect shield. So as we look at this matchup on paper, it's going to look closer, right? Both Yo, Amit bhai, good night, brother. Good night. See you tomorrow. It wasn't really that close. I think the Shadow Glider. Good night, सभी को Amit bhai, सभी को good night बोल रहे हैं. Just a really tough team read there for Andrew. Yeah, I mean, Registeel, let's be honest. Good morning, बोला. Good morning. Dapper Discs team. Annihilate, the Gligar, the Whiscash. He brought it all basically here versus that Registeel. There was not that Skarmory, and that is going to be a tough spot for Andrew Manharas' Registeel. So congratulations to Dapper Discs. Maybe a little bit of an underdog in that scenario. We have a world's qualified Andrew Manharas here, unable to get the victory there. Congratulations again to Dapper Discs. But that was winners round 3, so no longer